Good morning, ma'am. Good morning, Madam Manjula Chaudhary, one of our keynote speaker. Good morning. Good morning. Ma'am, you are muted. Good morning. Ma'am, we welcome you. Thank you. Thank you. And an inspiration to our seminar being inaugurated by you, ma'am. Thank you. Thank you. My pleasure. Good morning, ma'am. Good morning to everyone present here. I hope my voice is clear to you. I hope my voice is audible. Yes, ma'am, it's audible. Thank you, Dimple ma'am. Good morning to everyone present here. It gives me immense pleasure and joy to welcome eminent personalities on such a beautiful day. Today, we are organizing national seminar on the topic Role and Responsibilities of Higher Education Institutions in Implementation of National Education Policy 2020, approved by Department of Higher Education Haryana for academicians of India who wants to explore myriad layers of national education policy with an innovative lens. I welcome our distinguished dignitaries, Dr. Manjula Chaudhary, our keynote speaker of day, Dr. Krishan Khan, Dr. Pawan Sharma, and Dr. Anita Dua, my principal, Dr. Kiran Angra, my friends and colleagues of our college, as well as other friends of various colleges and universities of our nation. My dear friend Aanchal, co-convener, and Dr. Monica, organizing secretary of this seminar, and everyone else from my institution who have helped me to make this day possible. Dear friends, we have joined together under the aegis of Department of Higher Education, Haryana, and IQAC cell of M.D.S.D College to reflect the most important feature of today's education policy, that is National Education Policy 2020. I feel overjoyed and my gratitude goes to Dr. Kiran Angra for giving all of us this wonderful opportunity to organize such an important seminar. Before proceeding further, I would like to make this morning a blessed one, and I, on behalf of MDST College, invoke Goddess Saraswati by kindling the lamp of knowledge and wisdom for seeking her choicest blessings. For the same, I invite our admirable Principal Ma'am and Dr. Manjula Ma'am to kindle the lamp. I also invite all the dignitaries for the same. I invite Dr. Ujjwal from Department of Music for Saraswati Vandana. Thank you, Om Anuradha Shubham ma'am. Karoti Kalyanam Arogyam Dhan Sampada Shatru Buddhi Vinashaye Deep Jyoti Namostute. Over to you, Ujjwal ma'am. जी, आप सभी को मेरा सुप्रभात और माँ सरस्वती, आप सभी को मेरा सुप्रभात, माँ सरस्वती का वंदन करते हुए आज के हम इस सेमिनार की शुरुआत करेंगे। जी। हे देवी माँ सरस्वती, हम महिमा तेरी गाते हैं, वंदन तेरा करते हैं माँ, चरणों में शीश झुकाते हैं। हे देवी माँ सरस्वती, ऋषि मुनि और संतों ने माँ गाथा तेरी गाई है, वेदों पुराणों में माता तू गायत्री कहलाई है, ब्रह्मा विष्णु और महेश भी तेरा ध्यान लगाते हैं। हे देवी
माँ सरस्वती, हम महिमा तेरी गाते हैं, वंदन तेरा करते हैं माँ, चरणों में शीश झुकाते हैं। हे देवी माँ, हे देवी माँ, देवी माँ सरस्वती। जय माँ सरस्वती। Thank you, ma'am. Thank you for such a beautiful invocation to Goddess Saraswati. And it is both an honor and privilege to stand before you and invite my dear principal, ma'am, to present concept note and formal welcome of our respected dignitaries. Over to you, ma'am. Good morning to all of you. We have gathered on this virtual platform for this one-day seminar, which has been approved and by the Director Higher Education, aiming on the National Education Policy, NEP-2020. We all know this policy is based on the 4 pillars, which are assess, equity, quality, and accountability. We all know that this policy has the concept of 5 + 3 + 3 + 4 structure, and this policy aims at creating, as far as the higher education institutions are concerned, this policy aims at creating an inclusive and equitable education system that aids holistic education, multidisciplinary learning with flexible curriculum, creative combination of subjects, integration of vocational education, and multiple entries and exit points with appropriate certification. My dear friends, this proposed seminar is an attempt to share and discuss the applicability and implementation of NEP 2020 effectively in the educational institutions across India. This seminar strives to explore critical issues faced by education policy with a focus on different aspects and the challenges to implement this policy in the future prospects. Today, I am proud to share with you that we have our stalwarts who have joined with us during this seminar. We have Professor Manjula Chaudhary ji, who is presently Director, Distance Education, Kurukshetra University, Kurukshetra. Dr. Anita Dua, Professor and Director, WSRC, Kurukshetra. Dr. Krishan Kant, an eminent principal, an energetic man who drove the NAC accreditation across the Haryana. He's a principal of PG College, Balabgarh. Dr. Pavan K. Sharma, Dean, Research and Development, Kurukshetra University, Kurukshetra. Dear friends, I like to tell Dr. Manjula that this platform is being shared today, not only from our university, ma'am. There are a number of universities across the country who are joining us. This program is also streamlined with the YouTube. So because our Zoom capacity is of 100 participants, so I hope they will all be benefited through this live streaming with the YouTube. So dear friends, Professor Manjula Chaudhary specializes in tourism marketing, tourist behavior, and business communication. Her research work includes books, articles in academic journals, industry knowledge papers, reports, and projects for Government of India and different states of government. She is academic member in tourism of Strategic Communication Laboratories and the Behavioral Dynamics Institutes, United Kingdom. She has been the member of National Tourism Advisory Committee of Ministry of Tourism, Government of India. She was also associated with the Working Group on Tourism during the 12th plan when it was planned out.
and she's a member of advisory committee on the preparation of the second tourism satellite accounts for India, though in the century. She is on the board of a member of universities and other academic institutions. She is on the editorial board of many national international journals. She has been director of Indian Institute of Tourism and Travel Management for the 4 years in the Ministry of Tourism, Government of India. Under her leadership, IITTM got the award for the best tourism institute in the country from FICCI in 2014. I feel proud to share with you, she is honored by the tourist industry for her contribution to the travel and tourism education throughout in the leadership meet Anand. But above all, this is a very, very brief introduction to our loving Professor Manjula ji. But as I knew her, she is the pioneer. She is the dynamics behind the first phase to be startup in Kurukshetra University. She is a leader who, along with her team, under the banner of our learned Vice Chancellor, has steered the university to start this national education. She is the person who drafted the framework along with her team. She made us understand how the colleges which are affiliated to the university will have to go for the next year. She had been preparing us from the last year. So really, I welcome such a dynamic woman of our university who will surely guide us, because this is really a dilemma for our colleges, that how to start this program right at such a in this year, though we are not much equipped. Or ma'am, the problem is the colleges are being asked to start the new courses, but till we are clear how to go about, whether we have to start the honors in different subjects or not, whether this honors, starting of the honors will be valuable or not, will the degree will be given like a BSc, BA and BCom, or it will be given by the different subjects. And in that condition, what the institutions should think and how they should execute. This is, we want to execute, because you had surely steered us last year that by starting the program in the university in the first phase, and we are in the second phase now. So, but we are not clear, ma'am. So many of us from because our university is one of the leading universities to start this policy. So many of the people who are from the different university will surely will be advantaged by your thoughts, by your ideas, and by your experience. So I really love to welcome our leading professor of our university, Madam Manjula Chaudhary. We really welcome you with a big clap, madam, with lot of applaud that we welcome you from this digital platform. Thank you very much, ma'am. Thank you, Dr. Angre, and many congratulations to the college to have organized this workshop cum seminar. In fact, this is very thoughtful of you and your college, because you have chosen a very right topic, role of higher educational institutions as far as implementation of NEP is concerned. And you said in your talk also, like you are still not clear, colleges are still not clear how to go about it, what steps have to be taken. And the reason being, in the university, in the first stage, we have tested a system. So we were also thinking about कि जो भी इसके irritants हैं अगर दूर हो जाएं तो उसके बाद आपको colleges को बताया जा सके, because it's very important to test anything rather than go for whole set of launch. So this was planned to be a phased launch. And role of higher educational institutions, especially colleges, is very, very important. Or like yesterday also I was reading in the newspaper, earlier also I have heard कि जो गवर्नमेंट है उसका टारगेट है कि 2025 तक सारे स्टेट में ये लागू हो जाए. और इनफैक्ट बहुत सारे करेंट्स हैं जो स्टेट में और सारे इंडिया में इस टाइम चल रहे हैं. एवरी स्टेट इज पासिंग थ्रू द सेम सिचुएशन. एवरी कॉलेज अक्रॉस द कंट्री, चाहे वो यूपी में हो या कर्नाटका में हो या किसी और स्टेट में हो, दे आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम.
कुछ मिसकंसेप्शंस हैं एनईपी के बारे में, जिसके वजह से इससे पहले कि हम इसको इम्प्लीमेंट करने की सोचें कि रेजिस्टेंट शुरू हो जाता है टीचर्स के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में और जो स्टेक होल्डर्स के बीच में। एंड इनफैक्ट एक तो रेजिस्टेंस है जिसको हम कहते हैं चेंज का रेजिस्टेंस है। इज माई वॉइस क्लियर एंड ऑडिबल? अच्छा, जब भी कोई मेरे वॉइस में प्रॉब्लम हो प्लीज गिव ए कॉल ऑन माई मोबाइल बिकॉज आई एम कनेक्टेड थ्रू द टैब। तो जैसे कि बहुत एक तो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम एनईपी के इम्प्लीमेंटेशन है वो है चेंज का है। ह्यूमंस नेचुरली चेंज को बहुत ज्यादा फेवर नहीं करते हैं। तो एक इतना बड़ा चेंज आ रहा है एजुकेशन सिस्टम में जिसको हम यूज टू हैं, हमारी जो पुरानी जनरेशन है वो भी इसी एजुकेशन सिस्टम में पढ़ी है, जो हमारे पेरेंट्स हैं, एंड सडनली ये न्यू सिस्टम इज कमिंग। तो एक तो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस तो उसकी वजह से है। दूसरा इस वजह से है कि एनईपी जब इम्प्लीमेंट की गई, जब इनिशिएट की गई, इट वाज इनिशिएटेड एज ए पॉलिसी। और पॉलिसी डॉक्यूमेंट हमेशा एक वेग और एब्स्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट होता है जिसका बाद में एक्शन प्लान या और ऑपरेशनल प्लान या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनते हैं। तो हमने जब पॉलिसी लॉन्च करी तो उसका इंटेंट ये था कि सभी लोग, गवर्नमेंट जो चाहती थी कि सभी लोग इस पॉलिसी को पढ़ें, इसके ऊपर डिबेट्स हों, इसके ऊपर डिस्कशंस हों, ताकि इससे पहले कि एसओपीज बने या ऑपरेशनल प्लान्स आए उससे पहले सब लोग तैयार हों कि भाई इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। दैट इज ऑल्सो बी डन। बहुत सारे लोगों ने एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट भी किया। उसके बाद यूजीसी ने ड्राफ्ट एक्शन प्लान देने शुरू किया और अब उन्होंने फाइनल प्लान भी दिए। इनफैक्ट यूजीसी इटसेल्फ हैज चेंज्ड इट्स ड्राफ्ट प्लान बिफोर कन्वर्टिंग इनटू इट फाइनल प्लान। वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है कि जब भी हम कोई नई चीज शुरू करते हैं तो जब ड्राफ्ट प्लान बनाते हैं उसमें हमें बहुत सारे फीडबैक आते हैं, इनपुट्स भी आते हैं कि इसको ऐसे किया जा सकता है। सो फाइनल प्लान इज अ लिटिल डाइवर्जन फ्रॉम द अर्लियर प्लान। इसमें सबका एग्रीमेंट हो ये कोई जरूरी भी नहीं है, लेकिन एक जो जिसको कहते हैं जो पाथ है, जो मोस्ट कन्वीनियंट पाथ है, जो इम्प्लीमेंटेबल पाथ है, वो चूज कर लिया जाता है। हो सकता है कि आगे इसमें और भी चेंजेस आए, तो ये भी ना सोचिएगा कि यूजीसी ने जो प्लान दिया है वो कोई इतना सेक्रेड है कि चेंज नहीं हो सकता। जैसे जैसे ये इम्प्लीमेंट होगा तो गवर्नमेंट इसमें अपने आप ही चेंजेस इनिशिएट करने की कोशिश करेगी। अब पॉइंट ये है कि अगर ये इतना सब कुछ इतना डायनेमिक है, टॉप के लेवल पे भी, पॉलिसी के लेवल पे भी, एक्शन प्लान के लेवल पे भी, तो सबसे पहले इनिशिएटिव जो है वो यूनिवर्सिटीज की तरफ से आना चाहिए था, ताकि यूनिवर्सिटीज जो है इसको अपने लेवल पे टेस्ट करें, उसके बाद अपने अपने कॉलेजेस में इंप्लीमेंट करें। इट्स नॉट ओनली अबाउट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी विच हैज बीन लिटिल वे अहेड ऑफ अदर्स, इसको इंप्लीमेंट कर सकी टेस्ट फेज पर, लेकिन देयर आर मेनी यूनिवर्सिटीज जिन्होंने इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की और वो ये कह रहे हैं कि हमने किसी ना किसी फॉर्म में तो इंप्लीमेंट कर ही दिया है। और अगर आप गवर्नमेंट का एक्शन प्लान देखें तो गवर्नमेंट भी बड़ा क्लियर है कि शायद इन टोटो इंप्लीमेंट करना इसको पॉसिबल ना हो, तो उन्हें लगता है कि इसके हम पिलर्स उठा लेते हैं और उन पिलर्स के बेसिस पे हम इंप्लीमेंट कर देते हैं। जैसे एक्सेस है, अभी डॉक्टर आंग्रे ने कहा कि भी एक्सेस को हम बढ़ा सकते हैं। उसके बाद है कि हमने स्किलिंग करनी है तो हम स्किलिंग कंपोनेंट को एम्फेसाइज कर सकते हैं। फिर हमने इंटर्नशिप को एम्फेसाइज करना है तो इंटर्नशिप कंपोनेंट को एम्फेसाइज कर देंगे। तो इस तरह से कुछ पिलर्स उठाकर उन पे काम कर रहा है। केजी टू पीजी स्कीम है, उस पे काम करना शुरू कर दिया। और ये है कि अगर ये पिलर्स स्ट्रांग होंगे एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, जो इसका पूरा प्रोसेस फ्लो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, जिस हिसाब से हम सोच रहे हैं कि आगे स्टूडेंट्स हमारे एजुकेट हो, तो उसको वो इम्प्लीमेंट किया जा सके। यहाँ पर सबसे पहले बहुत सारे पार्टिसिपेंट जो मुझे सुन रहे हैं जिन्होंने इस वर्कशॉप को इम्प्लीमेंट किया है, एक तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आप बहुत सारे कॉर्नर से बहुत सारी बातें सुन रहे होंगे एनईपी के बारे में। एक तो आप इसको पढ़िए, एक तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िए जो आपका पॉलिसी है, सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि पॉलिसी में ओवरऑल है क्या। हो क्या रहा है कि मोस्ट ऑफ द टीचर्स हैव नॉट रेड इट एंड दे आर हियरिंग अबाउट इट थ्रू कमेंट्रीज और थ्रू समबडीज इंटरप्रिटेशन। तो बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट नहीं है, इट्स ओनली 60 to 65 पेजेस, और उसमें भी बहुत एक बिग कंपोनेंट जो है, चंक है, दैट इज डिवोटेड टू स्कूल एजुकेशन। सो माय एडवाइस टू ईच वन ऑफ यू इज please go through the document once, twice, thrice, unless you get essence of it, unless you get sense out of it. तो उससे क्या है कि आपको बहुत आसानी रहेगी जब आप इसको खुद पढ़ लेंगे। आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी ऑफ यू हैव रेड इट, लेकिन जितने लोग मुझे मिलते हैं जो इसको बहुत जोरों से अपोज करते हैं या जो इसके ऊपर ओपिनियन देते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि क्या आपने इसको पढ़ा है, उन्होंने इसको पढ़ा नहीं है। तो पहला जो इंपॉर्टेंट रोल है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का, वो ये है
कि वो अपने टीचर्स को एनकरेज करें कि इसको डॉक्यूमेंट को पढ़ें, और उसके बाद कॉलेज के अंदर और इंस्टीट्यूशंस के अंदर इंटरनल इसके ऊपर डिबेट हो, ताकि एक क्लैरिटी बिल्ड करे आफ्टर ऑल एनईपी कहती क्या है। दूसरा चीज ये है कि एनईपी के बाद बहुत सारे डॉक्यूमेंट आ चुके हैं जो इसको सप्लीमेंट करते हैं कि एनईपी को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। उनको हम एक्शन प्लान भी बोल सकते हैं, और बहुत सारे एक्शन प्लान के अंदर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स भी हैं। वैसे तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो है यूनिवर्सिटी को अपने लेवल पे बनाने होंगे, गवर्नमेंट के एक्शन प्लान को या यूजीसी के एक्शन प्लान को देखते हुए। ऐसा नहीं है कि यूजीसी का एक्शन प्लान हमें इन टोटलो ही इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि यूजीसी जो प्लान देती है दैट्स इन द फॉर्म ऑफ एडवाइस एंड दैट्स ए ब्रॉड फ्रेमवर्क। हमें देखना है कि हर यूनिवर्सिटी में, हर स्टेट में हमारी जो इंट्रिकेसीज हैं या हमारी जो रिक्वायरमेंट है, उसमें से कैसे हम उससे बेस्ट ले सकते हैं, और मे बी वी कैन बेटर द प्लान दैट हैज बीन गिवन बाय द यूजीसी। क्योंकि यूजीसी का इंटेंट ये नहीं है कि आप उस प्लान को वर्ड बाय वर्ड फॉलो करो। यूजीसी का इंटेंट ये है कि ब्रॉडली ये एक्शन प्लान है, आप इसको फॉलो कीजिएगा, लेकिन जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है एनईपी के, जिसमें कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाना है, स्टूडेंट की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाना है, स्टूडेंट का एजुकेशन लेवल बढ़ाना है, स्टूडेंट में इंक्विजिटिवनेस बढ़ानी है, वो जरूर अचीव होने चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम प्लान के पीछे रह जाएं और जो बेसिक पर्पस है वो खत्म हो जाए। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इंस्टीट्यूट या कॉलेज अपने लेवल पर कर सकता है, वो ये है कि वो डिबेट और डिस्कशन तो करे पॉलिसी और एक्शन प्लान के बारे में। इसके अलावा जो उनका फैकल्टी मेंबर है, जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनके बारे में भी उन्हें बताए, क्योंकि जो भी आजकल हमारे प्लान चल रहे हैं, जिसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी है, इन सब का टारगेट यही है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव हो। तो जब तक हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में क्लियर नहीं होंगे, तो ये हम रिलेट नहीं कर पाएंगे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी किस तरह जो दुनिया का डेवलपमेंट है या किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट है, उसमें किस तरह से मदद कर सकता है। बिकॉज बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स डेवलपमेंट के पैरामीटर हैं। एक बार हमें वो पता होगा तो हम आसानी से उसको कोलेट कर पाएंगे कि किस तरह से जो हमारी पॉलिसी है ये हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प कर रही है। मे बी उसके बाद वी विल बी मोर ओपन। तो जो पहला कॉलेज जो काम किसी कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी या किसी इंस्टीट्यूट को करना है, वो एक फर्टाइल ग्राउंड क्रिएट करना है, फर्टाइल ग्राउंड विच इज बेस्ड ऑन डिबेट्स, विच इज बेस्ड ऑन डिस्कशंस, ताकि एक एक्सेप्टेबिलिटी आ सके इकोसिस्टम पर, जहां हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार हो। डॉक्टर आंग्रे वुड रिमेम्बर कि हमने एक वर्कशॉप किया था। हमारा इंटेंट तो ये था कि हम 300 कॉलेजेस हैं तो सभी के रिप्रेजेंटेटिव्स को उसमें कवर कर लेंगे, पर अनफॉर्चुनेटली हम सिर्फ एक ही उसका लैब कर पाए, और अराउंड 150 कॉलेजेस को हमने उसमें लिया था, जिसको डॉक्टर अनीता दुआ, जो आजकल रिसोर्स पर्सन भी है, उन्होंने बड़े इफेक्टिवली कोऑर्डिनेट किया था। और उसमें हमें लगा कि बहुत ज्यादा जो कहते हैं ना मिसपरसेप्शंस थी, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स थे, जिसमें प्रिंसिपल्स भी थे, जिसमें टीचर्स भी थे। ऑफ कोर्स दे वर ऑल ईगर, दे वर ऑल इंक्विजिटिव, लेकिन एक डर भी था कि अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो कॉलेज का इकोसिस्टम कहीं इतना चेंज ना हो जाए कि चीजें काबू से बाहर हो जाए। तो सब कोई जानना चाहते थे कि हम इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करें। तो देखिए, जो तरीका है, जैसे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, नेचुरली जो गवर्नमेंट से आता है वही इम्प्लीमेंट होता है। बहुत सारे तरीके होते हैं इस काम को करवाने के। मार्केटिंग क्योंकि मेरा मेन सब्जेक्ट है, तो हम उसमें कहते हैं कि 4 तरीके होते हैं किसी से भी काम करवाने के। टेलिंग, उनको बता दो कि तुम्हें क्या करना है। दूसरा सेलिंग, थोड़ा सा परसुएड करने की कोशिश करो, उनको कन्विंस करने की कोशिश करो इसकी मेरिट के बेसिस पे। तीसरा है परसुएडिंग, जहां पर हम कह रहे हैं डिबेट्स और डिस्कशन। और चौथा होता है पार्टिसिपेटिंग, जो बेस्ट मेथड होता है जिससे इम्प्लीमेंटेशन हो सके। तो जो मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ कि सब लोग इसको पढ़ें, इकट्ठे बैठें, डिस्कशन करें। जरूरी नहीं है एक कॉलेज के अंदर ही करना है, बड़ा कॉलेज है तो अंदर हो सकता है, और छोटे छोटे कॉलेज हैं, दे कैन कम टुगेदर ऑन ए प्लेटफॉर्म एंड दे कैन मीट देयर एंड दे कैन स्टार्ट डिस्कशन अबाउट इट। तो वहां भी कर सकते हैं। सो जो पहला स्टेप है, वो जो भी इन्स एंड आउट्स हैं इसके बारे में जानिए। अभी तो आज की डेट में तो हमारे टीचर्स को ये भी नहीं मालूम कि एनईपी के अंदर क्या है, और एक्शन प्लान उसके बाद यूजीसी ने कितने डॉक्यूमेंट दिए हैं। ईच डॉक्यूमेंट इज ऑफ 100 to 200 पेजेस। नेचुरली वो पढ़ना भी है तो somebody in the college or the university has to read it, और जो उसको दूसरों को ब्रीफ करे। जब तक फर्स्ट हैंड नॉलेज नहीं होगी ये प्रॉब्लम रहेगी। बाकी ऐसा कोई फॉरेन सिस्टम नहीं है कि जो इम्प्लीमेंटेबल ना हो। दिस सिस्टम इज ऑलरेडी टेस्टेड इन ए नंबर ऑफ कंट्रीज, और वहां पर हम इसको बड़े इफेक्टिवली देख रहे हैं कि वो टेस्ट हो रहा है। तो एचईआईज को शुरू यहाँ से करना है। और दूसरा जो ये क्वेश्चन है कि एचईआईज क्या कर सकते हैं, देखिए सारा कुछ एचईआईज को करना है। जितने हमारे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं जो इस
पॉलिसी से इन्फ्लुएंस होने वाले हैं, जिन पर इम्पैक्ट होने वाला है, हमारे स्टूडेंट्स हैं वो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस के अंदर है, हमारी फैकल्टी है वो भी वही है, जो हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है हमारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं वो भी उसी रूट से अप्रोचेबल है। तो जो भी कुछ करना है वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को ही करना है। अगर किसी भी स्टेज पे कोई कॉलेज फॉल्टर करता है या कोई यूनिवर्सिटी फॉल्टर करता है, ये मान के चलिएगा कि इस पॉलिसी कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड एंड दिस इज गोइंग टू फेल। और जो इसका जो फेल्योर का कॉन्सिक्वेंस है वो बहुत डिजास्टरस होगा, बिकॉज देयर इज नो गोइंग बैक। आप पुराने सिस्टम पे तो जा ही नहीं रहे हैं। तो इसलिए पूरे जो कहते हैं हम, जिसको पूरे एंगेजमेंट के साथ, पूरे पार्टिसिपेशन के साथ और एक जिसको कहते हैं ना इमर्सिव होके एनईपी में, हमने तब उसको इम्प्लीमेंट करना है हायर एजुकेशन लेवल पर। बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के, डॉक्टर आंग्रे ने ऑलरेडी एक अडॉप्ट कर ही लिया है जिसको हम सेमिनार कम वर्कशॉप बोल रहे हैं। लेकिन डॉक्टर आंग्रे में इसमें आपको ये रिक्वेस्ट करूंगी, आप इसमें ट्रेनिंग सेशंस अगर ऑर्गेनाइज कराएंगे तो बहुत बेटर होगा, क्योंकि ट्रेनिंग सेशन में 101 जो कनेक्ट बनता है, जहां पर हम छोटी छोटी चीजों के बारे में उनको ट्रेन करते हैं कि इसको आप कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एबीसी पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना है तो वह कैसे किया जा सकता है, या इंटर्नशिप का अरेंजमेंट करना है तो वो कैसे किया जा सकता है, अगर मल्टीपल एंट्री एग्जिट किया जा सकता है, कॉलेज को कैसे करना है, स्टूडेंट को असेस करना है तो वो कैसे करना है, उसका करियर मैपिंग करनी है तो वो कैसे करनी है, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स होंगे। यूनिवर्सिटी में ने अपने लेवल पे बहुत सारे फॉर्म्स डेवलप किए हैं। नेचुरली नो वन इज गोइंग टू शेयर दोज फॉर्म्स विद यू फॉर्मली, क्योंकि हमें भी लगता है कि हमने अपने पर्पसेस के लिए इवॉल्व करे हैं, वी आर नॉट श्योर कि इसकी एप्लीकेबिलिटी किसी भी छोटे इकोसिस्टम में क्या होगी। तो इस तरह से जब 1-on-1 आप ट्रेनिंग सेशन करेंगे तो आप एक सिस्टम क्रिएट कर पाएंगे अपने इंस्टीट्यूशन के लिए, एंड दैट अप्लाइज टू ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो इसमें दो चीजें हैं जिसके बारे में आपको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। तो इंटेंजिबल कंपोनेंट है और दूसरा टेंजिबल कंपोनेंट है। इंटेंजिबल कंपोनेंट हमारा पॉलिसी है जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि भी ये होना चाहिए या कैसे हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट कहती है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ना चाहिए और हम 2030 तक हमारा ये 50% हो जाना चाहिए। तो इस बात पे सब एग्री करते हैं कि हाँ भाई बहुत अच्छी बात है, जीईआर तो 50% कम से कम होना ही चाहिए इफ इंडिया हैज टू बिकम ए डेवलप्ड कंट्री। एवरीवन एग्रीज ऑन इट। लेकिन जब हम कहते हैं कि जो एजुकेशन है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन का ब्लेंड होना चाहिए, तब वो कहते हैं नहीं ऑनलाइन एजुकेशन तो ठीक नहीं है, ऑनलाइन तो नहीं होना चाहिए। एट करेंट पॉइंट ऑफ टाइम जो हमारी इकोनॉमी का साइज है और जो रिसोर्सेज कंट्री के पास अवेलेबल है, हमारे पास किसी के पास भी कोई तरीका नहीं है कि जीईआर 50% कर सके। जीईआर को 50% करने का तरीका यही है कि हम इसको थोड़ा सा एजुकेशन को ऑनलाइन ले जाएं। तो इंटेंट तो उसके पीछे ये है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन ले जाने का मतलब ये है कि टीचर्स की जरूरत नहीं होगी कॉलेजेस में, और कॉलेजेस में टीचर्स की पोस्ट खत्म होनी शुरू हो जाएगी। जब आप 25% से 50% एनरोलमेंट पर जा रहे हैं, आई डोंट सी सच ए सिचुएशन कमिंग अप। और अब इधर आपने देखा भी होगा एक ट्रेंड हो गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉरेन कंट्रीज में जा रहे हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट एनरोलमेंट नंबर फॉल कर रहा है। सो वो वहाँ इसीलिए जा रहे हैं कि जिस तरह का एजुकेशन उन्हें वहां मिल रहा है, इमीडिएट एम्प्लॉयबिलिटी है। अगर उसी तरह का इकोसिस्टम इंडिया में हम क्रिएट कर देंगे अपने इंस्टीट्यूशंस में, आई मीन नो वन कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम गोइंग टू एनी कंट्री, दैट्स देयर राइट। लेकिन कम से कम हम उनको यहाँ पे वो स्किलिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं जो स्किलिंग वो बाहर जाकर लेते हैं एट ए वेरी हाई कॉस्ट, और वहां पे फिर वो एम्प्लॉयमेंट करते हैं। सो इंडिया कैन बी स्किल मार्केट फॉर द होल वर्ल्ड। और ऑफ कोर्स हम स्किल मैन पावर को अपनी को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, देयर इज नथिंग बैड इन इट। जितनी स्किलिंग हमारे पास ज्यादा होगी, हमारे अंदर भी अवेलेबल होगी, बाहर भी अवेलेबल होगी। इन ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हमें अपना माइंडसेट चेंज करने के, डिस्कशन करने की जरूरत है। एक और चीज जो HEIs के लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि NEP देखिए इम्प्लीमेंट तो होगी, अगर गवर्नमेंट ने कहा पार्टिसिपेट करेंगे तो बहुत इफेक्टिवली होगी, हमारे इनपुट्स भी उसमें होंगे। पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो जिस ढंग से इम्प्लीमेंट होंगे, रादर देन क्रिबिंग इन द फ्यूचर, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगी। तो इस चीज को ध्यान में रख के हमें उसको अपने कॉलेज या इंस्टीट्यूट के लेवल पे वी हैव टू वर्क ऑन इट। तो इसके अलावा और हम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस क्या क्रिएट कर सकता है, एक हमें ओनरशिप क्रिएट करनी है जो हमारे पास नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। अनलेस ईच वन ऑफ अस ओन्स इट कि भाई हाँ ये मेरी कंट्री की पॉलिसी है या मेरी पॉलिसी है, जो मेरा कंट्रीब्यूशन है या टीचर का कंट्रीब्यूशन है या मेरे नॉन टीचिंग का कंट्रीब्यूशन है, वो बेस्ट नहीं होगा। तो ओनरशिप कैसे होगी कि हमें ये देखना है कि हम इसको कैसे वर्केबल बनाएं, और वर्केबल बनाने के लिए हमें अपने लेवल पे अपने प्लान बनाने होंगे। फॉर इंस्टेंस एवरी इंस्टीट्यूशन हैज टू क्रिएट ए न्यू इकोसिस्टम फॉर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी।
अब यहाँ पर आके सारी बातें जिसको हम कहते हैं बॉटल नेक क्रिएट हो जाता है कि हम न्यू इकोसिस्टम कॉलेज में कैसे बनाएं, अंडर फंडेड है, अंडर स्टाफ्ड है, और स्टूडेंट्स जो है पहले ही एनरोलमेंट कम हो रहा है, चेंज कर देंगे कहीं बाकी जो बचे हैं वो भी ना भाग जाएं। बहुत सारे अप्रीहेंशन है और सारी अप्रीहेंशन जायज भी हैं। तो बेसिकली हमें किस चीज पर फोकस करना है, हाउ टू क्रिएट दिस इकोसिस्टम, जिससे कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेबिलिटी बढ़ जाए। और इसमें कुछ चीजें हैं जिसपे हमें फोकस करना है। पहली चीज तो ये है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें अच्छे सिटीजन्स क्रिएट करना है कंट्री के लिए, और ये वो बहुत स्पेसिफिकली कहती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो कंट्री के लिए भी यूजफुल हो और जो ग्लोबल लेवल पे भी यूजफुल हो। इसका मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव इतना नैरो नहीं है कि हम जो मैन पावर क्रिएट कर रहे हैं वो सिर्फ अपनी कंट्री के लिए किए। तो एक तो हमें उस तरह का इकोसिस्टम बनाना है। तो सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि किस तरह से हम गुड सिटीजन्स क्रिएट करेंगे, किस तरह का इकोसिस्टम होना चाहिए। तो इसके अंदर एक एनईपी में एक कंपोनेंट दिया है, जैसे डॉक्टर आंग्रे ने पूछा कि हमें करना क्या है, हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो उसमें एक कोर्स इंट्रोड्यूस किया गया है जिसको हम कंपलसरी या मैंडेटरी कोर्स बोल रहे हैं लेवल 1 पर, जो कि हमारा यूजी का फर्स्ट ईयर है, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2, जिसको हम ह्यूमन वैल्यूज का नाम दे रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि पहले ह्यूमन वैल्यूज पढ़ाए जाते थे, लेकिन बीच में ह्यूमन वैल्यूज खत्म हो गया, तो एक ह्यूमन वैल्यूज का कोर्स इंट्रोड्यूस किया गया है। ह्यूमन वैल्यूज के कोर्स के बाद पढ़ाने के बाद इंटेंट ये है कि स्टूडेंट को ये तो पता हो कि व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, मेरा क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए समाज में, एंड वेयर डू आई फिगर इन द होल स्कीम ऑफ थिंग्स। और इसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दी है कम से कम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने। तो इन्होंने अपना करिकुलम भी डेवलप किया है ह्यूमन वैल्यूज का, जो हमारे अपनी फैकल्टी पढ़ा रही है, और अगर कॉलेज में भी हो सकता है वो उस करिकुलम को अडॉप्ट कर सकते हैं। नहीं करना चाहते हैं तो स्वयं पे ह्यूमन वैल्यूज का कोर्स अवेलेबल है, वो अपने स्टूडेंट को दे सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि उनके पास रिसोर्स नहीं है, स्टूडेंट स्वयं से कर सकते हैं। हम एक और इनिशिएटिव लिया हुआ है कि यूनिवर्सिटी ने इस्कॉन के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया हुआ है, जहाँ इस्कॉन ने एक करिकुलम दिया था ह्यूमन वैल्यूज को, जिसको यूनिवर्सिटी ने अप्रूव किया है। इस्कॉन उसको फ्री ऑफ कॉस्ट रन कर रहा है और उसमें भी स्टूडेंट्स ह्यूमन वैल्यूज की ट्रेनिंग ले रहे हैं। सिमिलरली कॉलेज अपने लेवल पे भी किसी के साथ इस तरह की एग्रीमेंट में आ सकता है और एक जो स्टैंडर्ड ह्यूमन वैल्यूज का कोर्स डिवाइस किया है उसके अराउंड वो ह्यूमन वैल्यूज को पढ़ा सकते हैं। तो एक तरीका इजाद किया गया है कि जिससे कि वैल्यू सिस्टम स्ट्रांग हो सके एंड वी आर एबल टू क्रिएट द गुड सिटीजन्स। अब यहाँ पर कॉलेज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ह्यूमन वैल्यूज का कोर्स पढ़ा रहे हैं कि हम उसका भी एग्जाम लेंगे। एग्जाम उस तरह से नहीं लेंगे, आप स्टूडेंट से पूछेंगे कि जो उसने वैल्यू लर्न की है वो एक टर्म पेपर लिखे या एक डॉक्यूमेंट बनाए जिसमें वो लिखे कि जो जो वैल्यूज उसने लर्न करी उस वैल्यूज को उसने कहाँ कहाँ अपनी लाइफ में यूज किया। और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो स्टोरी टेलिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है लर्निंग का। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं कि कैसे उन्होंने से ट्रुथ को यूज किया, हार्मोनी को यूज किया, ब्रेवरी को यूज किया, सम ऑफ द वैल्यूज विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज हाउ, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एनईपी का कि हमें गुड सिटीजन्स क्रिएट करने हैं, वो एड्रेस हो सकता है। इसके अलावा कुछ चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कॉलेज को या इंस्टीट्यूट को करनी है, जो एनईपी फोकस करती है। उसमें एक स्किलिंग है कि भाई स्किलिंग जरूर होनी चाहिए और हर स्टूडेंट के पास कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए। एजुकेशन कैन नॉट गो विदाउट द स्किल, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो हमने वर्कशॉप की थी कॉलेज के टीचर्स की, प्रिंसिपल्स की, वहां भी हमारे पास फीडबैक यही आया था कि हमारे पास तो स्किलिंग का कोई वो इकोसिस्टम ही नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। हम स्किलिंग कैसे करेंगे या हम कैसे इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करेंगे। ऑफ कोर्स बहुत सारे हिचेस आएंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम भी आएंगी, लेकिन हमने स्किलिंग का एक इकोसिस्टम क्रिएट करना है। और इसके लिए क्या किया है कि करिकुलम में ही कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने कम से कम प्रोविजन डाला है एज एडवाइज्ड बाय द यूजीसी। वहां पर जो भी बच्चे कोर सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं या फिर डिसिप्लिन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, उनके साथ साथ स्किलिंग का भी एक पेपर है। So suppose if you are studying English, student will not end up skilling as such. Student उसके साथ साथ जो स्किलिंग से रिलेटेड कोर्स है वो भी एक पढ़ेगा ताकि वो इंग्लिश की नॉलेज को यूज कर सके। यही वो फिजिक्स के केस में करेगा, यही केमिस्ट्री के केस में करेगा। So this is how skilling has been, like we can say, integrated into the curriculum और उसको बहुत साथ में जोड़ दिया गया है। और ये जो है अब यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट या एक कॉलेज का अवेयर रहना बहुत जरूरी है। क्या यूनिवर्सिटी ने जो करिकुलम दिया है स्किलिंग का
वो वाकई स्किलिंग क्रिएट कर रहे हैं या नहीं कर रहा है। तो वो फीडबैक हमारे पास कॉलेजेस से आएगा तो बहुत इफेक्टिव होगा, सो दैट डिपार्टमेंट्स दे कैन सिट बैक, दे कैन हैव ए रीलुक एट द सिलेबस और जरूरत हो तो उसको अमेंड कर दें, ताकि इस बच्चा अपने जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है उसकी स्किल लेके निकले। इनफैक्ट somebody has said very rightly, उन्होंने कहा कि जो हमारा एजुकेशन था वो इतना रॉट लर्निंग पर बेस्ड हो गया था कि a lot of education was happening but learning was not happening। तो इसी चीज को ब्रेक करना है, एजुकेशन के साथ लर्निंग भी हैपन होना है, और लर्निंग भी ऐसा जिससे थ्योरेटिकल लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रैक्टिकल लर्निंग जिससे उसका एम्प्लॉयबिलिटी भी हो सके। तो आपने कोर कोर्सेज पढ़ा दिए जो आपके थ्योरी के हैं, स्टूडेंट को थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग हो गई, आपने स्किलिंग के कोर्सेज भी पढ़ा दिए, स्टूडेंट के पास स्किल सेट भी है जिसको कि वो मार्केट में यूज कर सकता है। हम ह्यूमन वैल्यूज भी पढ़ा रहे हैं ताकि स्टूडेंट को ये पता हो व्हाट इज राइट, व्हाट इज नॉट राइट, उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या प्लेस है समाज के अंदर। और इसमें जो स्किलिंग कंपोनेंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस उतनी तेजी से चेंज नहीं होते जितनी तेजी से इंडस्ट्री होती है। तो हमें ये दोनों के बीच में एक पैरिटी रखनी है ताकि साथ साथ चेंज होते रहें। और आप देखेंगे कि एनईपी में एक दो जगह इस चीज का डिस्कशन आता है कि हमें इंडस्ट्रियल एज 4.0 के लिए अपनी मैन पावर तैयार करनी है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एज 4.0 की जो स्किलिंग की रिक्वायरमेंट है विच आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग एज। और आप देख रहे होंगे कि इस चीज के कोर्सेज पे मेंशन है, जिसमें एआई का मेंशन है, ब्लॉकचेन मेंशन है और मशीन लर्निंग मेंशन है। तो ये कुछ टर्म्स जो है मेंशन भी किए हुए हैं कि इन पे हमें कोर्सेज एनकरेज करने होंगे। तो आप एनईपी का डायनेमिक नेचर देखिएगा कि जब ये 2020 से पहले 18 में ड्राफ्ट आया था डिस्कशन के लिए, तब ना इंडस्ट्रियल एज 4.2 का जिक्र था, ना ही इन स्किल्स का जिक्र था। कम कोविड, तब लोगों को पता चला कि किस तरह से जो ऑनलाइन चीजें हैं ये दे आर गोइंग टू कम, और माइंडसेट चेंज हुआ और एनईपी में भी हमें बदलाव देखने को मिला जो विच एड्रेसेस मोर जो हमारे करंट एज के चैलेंजेस हैं। तो आपने ये भी देखना है कि स्किलिंग इस तरह से आप करें, और हो सकता है कि स्किलिंग का कुछ कॉस्ट भी होगा क्योंकि आपका जो टीचर है वो उस तरह की टीचिंग के लिए ट्यून्ड नहीं है या ट्रेंड नहीं है। सो मे बी यूनिवर्सिटीज हैव टू टेक द इनिशिएटिव, जो उनके एचआरडीसी सेंटर्स हैं उनके थ्रू उनको इस तरह की ट्रेनिंग या ट्यूनिंग दे। इनफैक्ट बैक एंड पर तो चीजें अपने आप चलती चली जाएंगी, एक बार हम उसको फ्रंट एंड पर अगर रोल आउट करते हैं तो नेचुरली थिंग्स विल स्टार्ट हैपनिंग। और इसके लिए हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कम से कम एक वर्कशॉप या एक कॉन्फ्रेंस इंडस्ट्रियल एज 4.0 पर जरूर करानी चाहिए, ताकि जो हमारे टीचर्स हैं, हमारी फैकल्टी है, हमारे स्टूडेंट्स हैं, दे गेट टू नो व्हाट इज दिस इंडस्ट्रियल एज 4.0 इज, और इसमें किस तरह की हमारी रिक्वायरमेंट है। हम सब इस एज में जी रहे हैं, जैसे मैं जब आपसे कनेक्टेड हूँ इस अपने अपने डिवाइसेस के थ्रू, ये इंडस्ट्रियल एज 4.0 का ही एक रिफ्लेक्शन है। हम सिर्फ अवेयर नहीं है कि इसके रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, और क्योंकि कोविड ने हमें फास्ट ट्रैक कर दिया इस एज की तरफ, लेकिन अब हमें कॉन्शियसली ये पता होना चाहिए कि इंडस्ट्रियल एज क्या है और इसका क्या क्या रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा एक और जो चेंज बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है वो इंटर्नशिप का आ रहा है। अब हर बच्चे के लिए इंटर्नशिप कंपलसरी है, जो उससे पहले उसका एग्जिट नहीं होगा या उसको ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिलेगी। डॉक्टर आंग्रे ने बात करी मल्टीपल एंट्री एग्जिट की, बहुत अच्छी बात है कि फर्स्ट ईयर के बाद एग्जिट चाहेगा, सेकंड ईयर के बाद चाहेगा, थर्ड ईयर के बाद चाहेगा या फोर्थ ईयर के बाद चाहेगा। द चॉइसेस विद द स्टूडेंट, तो इट्स ऑल अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी, इट्स ऑल अबाउट चॉइसेस। ना तो हमें उसकी फ्लेक्सिबिलिटी रेस्ट्रिक्ट करनी है, ना ही हमें उसे चॉइस रेस्ट्रिक्ट करना है। तो यहाँ पर थोड़ा इंस्टीट्यूट्स को प्रॉब्लम आ रहा है कि हम इतना फ्लेक्सिबिलिटी कैसे दे पाएंगे। उस फ्लेक्सिबिलिटी को देने के लिए ही यूजीसी ये रिकमेंड करता है कि आप 40% तक ऑनलाइन जा सकते हैं। तो इससे आपको क्या है, आपका 60% कोर पे आप स्टिक कर सकते हैं, बाकी जो स्टूडेंट है वो दूसरे प्लेटफॉर्म से ले सकता है, या कॉलेजेस जो है कोलैबोरेट करके क्लस्टर बना सकते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं ज्यादा चॉइसेस देने के लिए। एंड एट सम प्लेसेस दैट these clusters can work very effectively, क्योंकि आप ये मान के चलिएगा कि एक छोटे छोटे कॉलेज हो, उससे अच्छा तो ये है कि बहुत सारे कॉलेजेस एक प्लेटफॉर्म के अंदर आ जाएं जहाँ स्टूडेंट्स को ज्यादा चॉइसेस मिले, और कॉलेजेस फिर कुछ कोर एरियाज में अपने रिसोर्सेज को फोकस कर सकते हैं रादर देन पीनट बटरिंग जो हम आजकल कर रहे हैं, वेयर वी आर स्प्रेडिंग अवर रिसोर्सेज टू थिन। सिर्फ इतना चाहिए कि एचईआईज आपस में बैठे और इसको वर्कआउट करें किस तरह से करना है, और एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो विन विन हो। नाउ आई वाज टॉकिंग अबाउट इंटर्नशिप, इसके बारे में सबसे ज्यादा डिस्कशन मुझे देखने को मिला जब हमने टीचर्स और प्रिंसिपल्स की वर्कशॉप की थी।
कुछ ने कहना शुरू कर दिया जी ये कारपेंटर है, उसके पास बच्चा इंटर्नशिप कर लेगा, उसको भी मान लेंगे। देखिए इट्स ऑल अबाउट लर्निंग, बिल्कुल मान लेंगे, लेकिन अब सर्टिफिकेशन नकली होने लगेगा, ये डिस्कशन आया था, ये भी होगा। लेकिन इस सबको अवॉइड करने के लिए एक इनिशिएटिव चल रहा है जहां पर कि गवर्नमेंट एक प्लेटफॉर्म बना रही है, जैसे इंटर्नशाला आपका AICT का है, तो यू विल सी ए सिमिलर प्लेटफॉर्म इन डिफरेंट स्टेट्स आल्सो। उस प्लेटफॉर्म पे आपकी रिक्वायरमेंट पड़ी होंगी इंटर्न्स की, और वहां पर स्टूडेंट डायरेक्टली अप्लाई कर सकता है एंड दे कैन गो फॉर इंटर्नशिप। फिर किसी ने क्वेश्चन पूछा कि भाई हम इंटर्नशिप जो इंटर्न्स आएंगे उसको हम इवेल्युएट कैसे करेंगे, कौन सा एग्जाम होगा? आई सेड नो, यू डोंट इवेल्युएट इंटर्न्स थ्रू द एग्जाम्स, यू इवेल्युएट इंटर्न्स थ्रू द वाइवा वोसी, जहाँ पे एक कॉलेज का फैकल्टी होगा, एक आप बाहर का एक्सपर्ट ले सकते हैं, वो कोई रिपोर्ट देगा। अभी तक क्या है कि जिन कोर्सेज में हम इंटर्नशिप करा रहे हैं बहुत ज्यादा प्लेजरिज्म है, स्टूडेंट्स डोंट अंडरस्टैंड कि अगर 20 लोग एक जगह टूर पर गए या इंटर्नशिप के लिए गए तो वर्ड टू वर्ड सेम रिपोर्ट नहीं हो सकती। उनका ये कहना होता है जी हम तो सारे इकट्ठे गए थे, सो वी हैव रिटन टुगेदर। नो, दिस डजंट हैपन। एवरीवन हैज टू राइट देयर परसेप्शंस, एंड परसेप्शंस आर ऑलवेज डिफरेंट। जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, अब क्योंकि एंटी प्लेजरिज्म टूल भी कंपलसरी हो गए हैं एंड दे हैव बिकम लिटिल चीपर आल्सो, तो इस डायरेक्शन में भी हमें स्टूडेंट को अवेयर कराना है। गवर्नमेंट तो अपना काम कर रही है, लेकिन अगर कॉलेज अपने लेवल पर लोकल बात करके अपनी इंटर्नशिप का अरेंजमेंट कर सके तो बहुत अच्छा होगा। इसमें KU में एक वाइस चांसलर का ही इनिशिएटिव था कि उन्होंने ADC के साथ एक मीटिंग की थी और उनके सभी डिपार्टमेंट को बुला लिया था। इतने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, इतनी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, एंड दे वर आल्सो वेरी हैप्पी कि हाँ हमें भी एक अच्छी मैन पावर मिलेगी। वी वर आल्सो वेरी हैप्पी। तो सिर्फ एक तो ये हैंड होल्डिंग वाली बात है। तो एक इंस्टीट्यूशन जो करें वो इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें, अपने लेवल पर करें, गवर्नमेंट के सपोर्ट से करें, क्लस्टर बनाकर करें, लोकल जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ करें, जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ करें। अपॉर्चुनिटीज आर गैलोर, ओनली थिंग इज वी हैव टू लुक फॉर इट। थोड़ा सा टाइम लगेगा बिकॉज न्यू थिंग्स दे ऑलवेज ट्रबल, लेकिन धीरे धीरे स्मूदन हो जाएगा। क्योंकि जब भी आप इंडस्ट्री के पास जाते हैं उनका यही कंप्लेंट होता है जी अच्छे एम्प्लॉयज तो स्टूडेंट को आता तो कुछ है नहीं, इनको हम यूज कैसे करें, कहाँ हम इनको एब्जॉर्ब करें। स्टूडेंट कहता है कि जी मुझे तो सब कुछ आता है, इंडस्ट्री में ही कोई काम नहीं है। कहीं ना कहीं मिसमैच है। जब हम एक इंटर्नशिप का सिस्टम अडॉप्ट करेंगे तो ये मिसमैच भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें जो है, जो नया इकोसिस्टम क्रिएट करना है इंस्टीट्यूट के लेवल पे, बहुत चैलेंजिंग है, पर्टिकुलरली जो स्केलिंग का इकोसिस्टम और आपका इंटर्नशिप का इकोसिस्टम। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज जो इंस्टीट्यूट को चाहिए, जो बहुत अहम है, वो है कि इंस्टीट्यूट को अपनी पेडागोजी चेंज करनी है। और पेडागोजी में सिर्फ माइनर चेंजेस नहीं लाने, बहुत मेजर चेंजेस हैं। जो थॉट है उसके पीछे वही चेंज करना है। हाउ डू आई टीच माई स्टूडेंट, हाउ डू आई ट्रेन माई स्टूडेंट, व्हाट डू आई एक्सपेक्ट फ्रॉम माई स्टूडेंट, लर्निंग कैसे होगी, किस लेवल की लर्निंग होनी चाहिए। अब इसमें देखेंगे कि NEP में जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने अपने लेवल पे इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि जो NEP टॉक्स अबाउट कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट, तो उसका एक ही तरीका है कि टीचर को पावर दी जाए और इंटरनल असेसमेंट बढ़ा दिया जाए। तो टीचर को पावर दी गई, इंटरनल असेसमेंट 50% कर दिया गया, विच इज अ वेरी वेरी हाई कॉम्पोनेंट। यहाँ पर जो टीचर की ऑनेस्टी है, जो टीचर की इंटेग्रिटी है, जो टीचर का एंगेजमेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अदरवाइज जो इंटरनल असेसमेंट है या कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट है, इट कैन बिकम ए टूल ऑफ harassment of students or favoritism of the students. So basically जो हम ये जो चेंज हो रहा है पेडागोजी में, जो इवेल्युएशन में चेंज हो रहा है, this is not about teachers, this is all about students कि उनको हम किस एक्सटेंट तक एंगेज कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हम उसको दे सकते हैं। तो यहाँ पर कंपोनेंट्स भी स्पेसिफाई किए गए हैं कि अगर आप 50% इंटरनल असेसमेंट है तो आपको उसको किस तरह से करेंगे। और उसमें हर यूनिवर्सिटी, मैं यहाँ सिस्टम बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि हर यूनिवर्सिटी अपना अपना सिस्टम बना सकती है। KU ने इसमें 2 इंटरनल एग्जामिनेशन का सिस्टम रखा है कि इंटरनल एग्जामिनेशन होंगे 1 और 2, इसके अलावा असाइनमेंट्स होंगी, क्लास पार्टिसिपेशन होगा, आप वाइवा भी ले सकते हैं। लेकिन ये सबका आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। जो भी आप इंटरनल असेसमेंट कर रहे हैं, यू शुड बी एबल टू डिफेंड कि भाई मैंने ये क्यों किया है। और क्योंकि आप टेस्ट भी या एग्जाम भी अनाउंस करके ले रहे हैं, तो नेचुरली स्टूडेंट भी उसके लिए प्रिपेयर्ड हुआ है, and they would have already been evaluated at least in 3/4 of the curriculum before they appear for the final exam. तो उम्मीद की जा रही है कि इस सिस्टम के बाद जो स्टूडेंट फाइनल ईयर एग्जाम में अपीयर होगा वो बेटर प्रिपेयर्ड होगा और इंस्टीट्यूट भी बेटर प्रिपेयर्ड होंगे। अब रादर देन कि हर टीचर अपना एग्जामिनेशन ले रहा है,
जो इंस्टीट्यूट है वो अपने लेवल पे एग्जामिनेशन अनाउंस करे और सेंट्रलाइज जो है इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करे, ताकि स्टूडेंट जो है उनको एक फीलिंग आनी चाहिए इवैल्यूएशन की, और उनको ये भी फीलिंग आनी चाहिए कि अगर मैंने एक एग्जाम में अच्छा नहीं किया है सो दिस इज नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि अभी तो बहुत स्टेप्स पड़े हैं। सो 25% फर्स्ट एग्जाम का है, 25% सेकंड एग्जाम का है, 50% फाइनल एग्जाम का है। सो देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज जहाँ स्टूडेंट अपने आप को इम्प्रूव करता है, और हर बार उसको अगले एग्जाम से पहले फीडबैक आ जाना चाहिए। एक और चेंज जो किया है इसको लेकर वो ये है कि क्योंकि आईसेट की इट्स ऑल अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी, जो स्टूडेंट्स है वो केयू का ऑर्डिनेंस ये कहता है कि वो कंपोजिट पास होगा, तो उसी हिसाब से उसकी ग्रेडिंग लगनी है। लेकिन आपने सिर्फ स्टूडेंट्स को मार्क्स के लिए इवेल्युएट नहीं करना आपको, क्योंकि करिकुलम आपका लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क है, व्हिच मेनी ऑफ यू माइट हैव ऑलरेडी अटेंडेड मेनी वर्कशॉप्स, जो ये कहता है कि हर कोर्स के अंदर, हर सब्जेक्ट के अंदर स्टूडेंट की मैपिंग करनी है कि क्या तो आपका लर्निंग आउटकम था, और स्टूडेंट ठीक है उसके 50% मार्क्स तो आ गए, पर व्हाट डज 50% मींस, लर्निंग आउटकम कितना हुआ, उसने असेस किया है या असेस नहीं, उसको कुछ आया या कुछ नहीं आया, वो बिगिनर है, वो प्रोग्रेस कर रहा है, वो एक्सेलेंट है, वो प्रोफिशिएंट है। ये कुछ पैरामीटर्स है जिनके बेसिस पे आप उसको असेस कर सकते हैं। तो ये चेंजेस आने हैं पेडागोजी के अंदर। जहां तक आपका इवेल्यूएशन का सवाल है, सिमिलरली आपका जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है क्लासेस में, उसमें भी चेंज आना है। दैट कैन नॉट बी लाइक लेक्चर एवरी डे, दैट हैज टू बी पार्टिसिपेटिव, जहां हम स्टूडेंट को एडवांस में कुछ रीडिंग मटेरियल दे सकते हैं। अब ये सिस्टम तो सबको पता है, व्हाट्सएप पे सबने रीडिंग मटेरियल दिया है कोविड टाइम में, कि किस तरह से हम रीडिंग मटेरियल एडवांस में शेयर कर सकते हैं। एंड देन रीडिंग मटेरियल शैल बी अवेलेबल टू द स्टूडेंट ऑल द टाइम। आप अपना लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम लीजिएगा, आप अपने वेबसाइट पे उसको अपलोड करिएगा, लेकिन स्टूडेंट के पास लर्निंग मटेरियल होना चाहिए। और आजकल तो सॉफ्ट कॉपी इतनी लर्निंग मटेरियल की अवेलेबल है, तो द जॉब ऑफ द स्टूडेंट बिकम्स वेरी वेरी इजी। तो इससे क्या है, एक बिल्कुल चेंज आ रहा है। अभी तक क्या होता था कि टीचर नोट्स ले आया, वो उसने क्लास में पढ़ा दिए, इंटरनल असेसमेंट बहुत कम है, पहले तो बिल्कुल भी नहीं होता था, सारा दारोमदार जो है एक्सटर्नल एग्जाम पर था। अब उससे बिल्कुल चेंज हो रहा है। सो वी हैव टू चेंज दिस, कि किस तरह से हमें क्लासेस में जाना है, कैसे पढ़ाना है, और कैसे हमें एग्जाम लेना है, और कैसे स्टूडेंट को सीखना है, क्या स्टूडेंट सीखेगा। आई मीन ऑल दीज चेंजेस आर हैपनिंग। अब आप यहाँ देखेंगे कि जब हम एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, जो बहुत मेजर चेंज आने वाला है, जो जो हम कहते हैं कि यूनिवर्सिटीज की पावर है, शायद वो भी किस एक्सटेंट तक इससे कम हो रही है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज के पास सबसे बड़ी जो पावर है वो है डिग्री अवार्डिंग है। और एनईपी कहती है कि कॉलेजेस जो हैं वो क्लस्टर क्रिएट करके एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यूनिवर्सिटी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि एनईपी का मानना है कि कोई भी यूनिवर्सिटी है उसमें 5 से 10 हजार से ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट। और आज की डेट में तो हमारे कॉलेजेस में 5,000 की स्ट्रेंथ है, और यूनिवर्सिटी में तो लाखों की स्ट्रेंथ है। तो इंटेंट ये है कि छोटे छोटे जो डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन है वो क्रिएट हो, ताकि मैनेजमेंट बेटर हो सके, और वेराइटी आ सके पढ़ाई में, आपके एग्जामिनेशन टाइम पर आ सके, रिजल्ट टाइम पर आ सके, क्योंकि जितना बड़ा सिस्टम होता है थोड़ा सा स्लो मूविंग होता है। और कॉलेजेस को एनकरेज किया जा रहा है कि वो ऑटोनॉमस हो। ऑटोनॉमी के अपने चैलेंजेस हैं, कि भाई आपको अपना एग्जामिनेशन विंग भी बनाना है, फिर रिजल्ट विंग भी बनाना है, फिर उसकी एक्सेप्टेबिलिटी चाहिए डिग्री की, सो मेनी कंप्लायंसेस हैं। आई मीन द कॉल हैज टू टेकन बाय द कॉलेज, कि वो यूनिवर्सिटी के साथ रहना चाहते हैं, वो क्लस्टर का हिस्सा बनना चाहते हैं, या वो अपने आप को ऑटोनॉमस डिक्लेयर करना चाहते हैं। लेकिन अब सूनर और लेटर जो बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, आई मीन देयर साइज इज गोइंग टू बी कट डाउन, ताकि जो है जो एजुकेशन की मशीनरी है वो थोड़ा फास्ट मूविंग हो जाए। और एग्जामिनेशन में जो एक इम्पॉर्टेंट सबसे ज्यादा रिवॉल्यूशनरी चेंज आया है वो है कि आप जो भी आपका एग्जामिनेशन का रिजल्ट है, या जो स्टूडेंट जो क्रेडिट अर्न कर रहा है, अभी तक हम क्रेडिट के टर्म्स में नहीं सोचते हैं, क्योंकि हमने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने तो कम से कम कॉलेजेस में अभी एलओसीएफ सिस्टम नहीं दिया, थिंकिंग कि एलओसीएफ और एनईपी को साथ ही रोल आउट कर देंगे। सो एक जो इम्पोर्टेंट चेंज आना है, ऑल द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट, कि पेपर के क्रेडिट कितने हैं। 1 क्रेडिट का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है। क्रेडिट के अकॉर्डिंग जो है उस पेपर का वर्कलोड होगा, या जो आवर्स हम डिवोट करते हैं स्टूडेंट या टीचर्स, उस हिसाब से होगा। प्रैक्टिकल कितने हैं, प्रैक्टिकल के क्रेडिट अलग होंगे, थ्योरी के क्रेडिट अलग होंगे। ये जो इनकी क्रेसीज हैं, इन पे ऑफ कोर्स यू एवरी इंस्टीट्यूट नीड्स ए सेपरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम। लेकिन द चेंज आई वाज टॉकिंग अबाउट वाज दिस, कि जो स्टूडेंट क्रेडिट अर्न करता है अलग अलग कोर्सेज में, वो सारे क्रेडिट जो है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट पर अपलोड होने हैं।
तो एक काम जो सभी इंस्टीट्यूशंस को इमीडिएटली करना है, एनईपी और नो एनईपी, अपने इंस्टीट्यूशंस का, अपने स्टूडेंट्स का एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में रजिस्ट्रेशन करिएगा। उनको कहिएगा कि वो जो ऐप है डिजी लॉकर ऐप को डाउनलोड करें, और डिजी लॉकर ऐप से उसमें और भी एडवांटेज है डिजी लॉकर ऐप के, उन्हें बताइएगा, और डिजी लॉकर ऐप से एबीसी में रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि फ्यूचर में जितने रिजल्ट आने हैं वो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से होंगे। तो इससे फायदा क्या होगा, हर इंस्टीट्यूट और या हर यूनिवर्सिटी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में क्रेडिट्स अपलोड कर देगा, और उसके बाद जो है वहां पर जो क्रेडिट होंगे, सपोज मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैंने 60% जो कोर्सेज हैं वो M.D.S.D कॉलेज से कर लिए, 40% मैंने स्वयं पोर्टल से कर लिए, या मैंने 2 साल जो है M.D.S.D से कर लिया, 3rd ईयर में किसी और कर्नाटक चली जाती हूँ, वहां के किसी कॉलेज से कर लेती हूँ, तो मेरे सारे क्रेडिट जो है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में अपलोड हो जाएंगे, और वहां से उन क्रेडिट को जोड़ के जो भी डिग्री अवार्डिंग यूनिवर्सिटी होगी वो मुझे डिग्री दे देगी। आज की डेट में ये है कि जहां से उसने 50% से ज्यादा कोर्स किए वो यूनिवर्सिटी डिग्री उसको देगी। अब बहुत सारे इश्यूज हैं, कोई कहता है कि भाई 3rd ईयर का सिलेबस तो मैप हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो डिग्री अवार्डिंग यूनिवर्सिटी का काम है कि उस सिलेबस को मैप करे, क्योंकि क्रेडिट्स की यूनिफॉर्मिटी होनी जरूरी है। क्रेडिट्स ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते। और इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो डिजिटल यूनिवर्सिटी लॉन्च करने वाली है। वैसे तो इट वाज सपोज टू बी लॉन्च्ड इन February, और उनका ये कहना है अगर कोई डिग्री नहीं देगा तो डिजिटल यूनिवर्सिटी सारे क्रेडिट्स को इकट्ठा करके डिजिटल यूनिवर्सिटी डिग्री दे देगी। सो देयर इज नो रीजन फॉर द स्टूडेंट्स टू बी अफ्रेड ऑफ, देयर इज एवरी रीजन फॉर द यूनिवर्सिटी एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस टू बी अफ्रेड ऑफ। सो देयर इज अ प्रॉब्लम एट द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, तो उनको कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि आज की डेट में अगर आप डिजी लॉकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनका तो क्रेडिट अपलोड हो रहे हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ने अपलोडिंग शुरू नहीं की है, जैसे IITs वगैरह हैं, दे हैव स्टार्टेड अपलोडिंग। एंड एक और चीज जो आप देखेंगे वहां पर कि जो अपलोडिंग है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी का खोल के देख लेना कि किस तरह से लाइक हाउ द क्रेडिट्स आर अपलोडेड, हाउ द क्रेडिट्स आर विजिबल, एंड मोस्ट ऑफ अस आर ऑन डिजी लॉकर बिकॉज ऑफ अवर लाइसेंस एंड देन अदर डॉक्यूमेंट्स, आधार। तो आप देखिएगा कि किस तरह से वहाँ क्रेडिट अपलोड किए गए हैं, एंड दिस इज व्हाट ईच वन ऑफ अस हैज टू डू। तो सबसे पहले इंस्टीट्यूशंस ने अपनी एबीसी आईडी बनानी है और हर स्टूडेंट की एबीसी आईडी बनानी है, कहीं ना कहीं ये उसके काम आने वाली है। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ आपस में ही कनेक्ट होंगे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से, एट सम फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम जो आपका स्टूडेंट बाहर जा रहा है जॉब करने के लिए या हायर एजुकेशन के लिए, अभी वो यूनिवर्सिटी में कहता है कि मेरा आप डिग्री वेरीफाई कर दो, this ABC will become a route through which all verification will happen at some point of time. तो आप देखेंगे ये सब कन्वीनियंसेस हैं जो क्रिएट की जा रही हैं स्टूडेंट के लिए और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए भी, क्योंकि अभी जो है ये आई मीन सिंस द जॉब इज डन मैनुअली एट सम प्लेसेस दे हैव कंप्यूटराइज्ड, बट स्टिल इट टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम। तो एक जो है हमें यहाँ एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के बारे में जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनको काम करना है। अब आप यहाँ देखेंगे कि इसमें जो हमारे इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल है उसका काम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल जो है ये अभी भी एक तरह का जिसको हम कहते हैं वॉचमैन का काम करती है इंस्टीट्यूशंस के अंदर, जो इंश्योर करती है कि सारे जो पैरामीटर्स की कंप्लायंसेस हो। तो यहाँ पे भी IQAC को एक वॉचमैन का काम करना पड़ेगा जब कोई भी इंस्टीट्यूट NEP को इम्प्लीमेंट करेगा, कि किस तरह से जो NEP के डिफरेंट पैरामीटर्स है, whether they are being implemented or not, whether trainings are being done properly, whether skilling is done properly, whether evaluation is done properly। तो इंस्टीट्यूट को अपने लेवल पर, अभी हम देख रहे हैं इस तरह का सिस्टम बहुत प्रिवेलेंट है। टीचर्स बिकम वेरी हैप्पी व्हेन द कंपोनेंट ऑफ इंटरनल असेसमेंट इज इंक्रीज्ड। ठीक है, मैं तो बहुत ज्यादा मार्क्स देके स्टूडेंट्स को भेज दूंगा, आप तो उसको बहुत ज्यादा मार्क्स देकर भेज देंगे, लेकिन मार्केट डजंट एक्सेप्ट द मार्क्स एट द फेस वैल्यू। तो हर जगह तो टेस्ट शुरू हो गए हैं या इंटरव्यू शुरू हो गए हैं जिसके बेसिस पे हम उसको स्टूडेंट को इवेल्युएट करते हैं। इन द एंड इट इज द नॉलेज दैट काउंट्स। सो वही NEP का फोकस भी है कि हमें उसको नॉलेज को बहुत बढ़ाना है। अब यहाँ पर जो मैंने स्टेट में देखा कि बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिनका NEC का असेसमेंट भी नहीं है, IQAC सेल बनाई हुई है वो भी फुली फंक्शनल नहीं है, उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें करना क्या है। और NEP के बहुत सारे गोल्स हैं, मैनी पीपल विल से कि दोनों में कोई कोरिलेशन नहीं है, देयर इज अ डेफिनेट कोरिलेशन, क्योंकि जो NAC के पैरामीटर हैं वो NEP के पैरामीटर से मैप करते हैं।
तो अगर आप NEC के लिए जाते हैं, इट फैसिलिटेट्स NEP, और अगर आप NEP के लिए जाते हैं, इट फैसिलिटेट्स NEC। तो अगर आप दोनों के लिए जाते हैं, एक आपका जिसको कहते हैं हम एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाता है, सिनर्जी के साथ आप काम करते हैं। तो अपनी इन सेल्स को स्ट्रॉन्ग बनाइएगा। और सबसे पहले जो, जैसे डॉक्टर आंग्रे ने कहा कि मैडम हमें यही नहीं पता कि ऑनर्स का हमें क्या करना है। देखिए, यूजीसी ने जो सिस्टम बनाया है वो ये बनाया है कि ऑनर्स इज नॉट ए सेपरेट और डिफरेंट डिग्री। ऑनर्स को उन्होंने इंटीग्रेट कर दिया है डिग्री के अंदर। तो थर्ड ईयर तक बच्चा नॉर्मल पढ़ता रहेगा। थर्ड ईयर तक उसको कोई ऑनर्स नहीं मिलेगी, चाहे वो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी पढ़ ले। पहले हमारा ये प्लान था कि हम थर्ड ईयर में एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के साथ ऑनर्स दे देंगे, लेकिन यूजीसी का जो फाइनल डॉक्यूमेंट आया है वो कहते हैं बच्चा अगर ऑनर्स चाहता है तो वो 4 ईयर के लिए जाए। 4th ईयर ग्रेजुएशन में वो एडिशनल सब्जेक्ट पढ़ता है, जिस सब्जेक्ट में उसको ऑनर्स चाहिए। जैसे इकोनॉमिक्स में चाहिए तो स्टूडेंट विल रीड ऑल इकोनॉमिक्स, तो उसको ऑनर्स मिल जाएगी। अब आप कहेंगे कि अगर 4th ईयर में जा रहा है तो रिसर्च ही ले ले, सिर्फ ऑनर्स ऑनर्स क्यों लेना है? तो यहाँ पर रिसर्च इज नॉट फॉर एवरीवन। रिसर्च में वही जा सकते हैं जिनका थर्ड ईयर तक CGPA 7.5 हो। इसका मतलब हमारे ऊपर भी बहुत प्रेशर है एज ए यूनिवर्सिटी कि हम उनके रिजल्ट टाइमली डिक्लेयर करें ताकि बच्चा 4th ईयर में माइग्रेट कर सके। तो अगर 7.5 CGPA है तो बच्चा जो थीसिस करेगा, रिसर्च करेगा, और उसको जो डिग्री मिलेगी वो मिलेगी ऑनर्स विद रिसर्च। और जो रिसर्च में नहीं जाएगा उसको जो डिग्री मिलेगी वो सिर्फ ऑनर्स की मिलेगी। अब ये भी क्वेश्चन आया कि भाई डिग्री किस तरह से मिलेगी। देखिए, हर यूनिवर्सिटी अपना अपना इकोसिस्टम बना रही है, सो आई कैन नॉट गिव लाइक समथिंग एट द फेस वैल्यू की डिग्री हम इस तरह से देंगे कि BA की देंगे या BSc की देंगे। But we have to take a leaf out of the book of the private universities, which are small and which are moving very fast, which is giving a lot of flexibility to the students. क्योंकि हमें कॉम्पिटिटिव भी होना है, अपार्ट फ्रॉम दैट कि हमें एक ऐसे सेगमेंट को एड्रेस करना है जिसको हमने एक्सेस देनी है, GR बढ़ाना है, वी हैव टू बिकम कॉम्पिटिटिव आल्सो। तो बेहतर तो यह है कि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन दीजिएगा। स्टूडेंट के पास ओपन चॉइसेस होंगी अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने की, और एक फॉर्मूला बन जाएगा कि वो उसने अगर वो इतने सब्जेक्ट पढ़ता है तो वो BA के इक्विवेलेंट है, इतने सब्जेक्ट पढ़ता है तो वो BSc के इक्विवेलेंट है। दिस हैज टू बी डन से फॉर द 5 years टू कम, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स में हो सकता है ये इतना जल्दी चेंज ना हो। तो रादर देन गिविंग द इक्विवेलेंस एट 1-on-1 बेसिस, जिसको हम कहते हैं केस टू केस बेसिस, ये बेहतर है कि हम इसी स्टेज पे डिसाइड कर लें कि अगर कोई मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन के लिए जा रहा है तो वो इक्विवेलेंस कैसे होगी। प्रॉब्लम उसमें नहीं है जिसने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ले लिया, उसको तो हम जानते हैं कि उसके तीनों सब्जेक्ट साइंस के हैं। प्रॉब्लम तब है कि अगर वो किसी और कॉम्बिनेशन को ले लेता है, फिजिक्स ले लेता है, साथ में कंप्यूटर साइंस ले लेता है, तीसरा जो है ट्रेवल एंड टूरिज्म ले लेता है, फिर हम उसको कौन सी डिग्री देंगे? क्योंकि मैथमेटिक्स आपके ह्यूमैनिटीज में आता है, तो मे बी स्टूडेंट गेट्स टू चूज कि आपको साइंस की चाहिए या आपको ह्यूमैनिटीज की चाहिए या आपको मल्टीडिसिप्लिनरी की चाहिए, उसको इक्विवेलेंस दिया जा सकता है साथ में। ये बहुत सारे इश्यूज हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज इसको फिक्स ही कर रही हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए। दैट्स नॉट द पर्पस ऑफ NEP, दैट्स नॉट द इंटेंट ऑफ NEP। वो इसलिए फिक्स कर रही है, वो चेंज चाहती ही नहीं, वो चाहते हैं कि NEP इम्प्लीमेंट भी हो जाए और कुछ चेंज भी ना करना पड़े। तो हो सकता है कुछ टाइम के लिए वो इस सिस्टम पर चल सकें, बट इन एनी केस दिस विल नॉट कंटिन्यू फॉर वेरी लॉन्ग। जैसे मैंने कहा कि कॉम्पिटिटिव है, आपको स्टूडेंट को इंडिया में भी रखना है हमारे, ताकि हम उसको एजुकेशन दे सकें, आपको उसको स्किलिंग भी इतनी देनी है ताकि वो ग्लोबल मार्केट में जा सके। तो हमें जो इंटरनेशनल हमारी बेंचमार्क्स हैं उनके साथ, जिसको हम कहते हैं एक पैरिटी, तो एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी और हमें हैंड होल्डिंग भी करनी पड़ेगी। जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, दे हैव स्टार्टेड हैंड होल्डिंग, वो मैंने डिस्कस नहीं किया आप लोगों से, क्योंकि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का। नेशनल कोलैबोरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कोलैबोरेट कीजिएगा इंडस्ट्री के साथ, कोलैबोरेट कीजिएगा दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ जिनसे कुछ सीखा जा सके, कोलैबोरेट कीजिएगा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ जिनसे कुछ सीखा जा सके। अल्टीमेटली इट्स गिविंग बेस्ट टू द स्टूडेंट। और जब हम इस इंटेंट के साथ NEP पे काम करेंगे तो हमारी इतनी टैलेंटेड फैकल्टी है कॉलेजेस में और अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में, there is no reason that they will not come out with innovative solutions. Whenever I have talked to some of them on one-to-one basis, they are very enthusiastic, they are very creative, they are very innovative. तो स्पेशली जो हमारी यंग फैकल्टी है, हमें उस पर ज्यादा डिपेंडेंट रहना चाहिए rather than our senior faculty,
क्योंकि जिसके 2-4 साल जॉब के रह रहे हैं, नेचुरली दे आर लुकिंग फॉर कंफर्ट फैक्टर। और जो यंगर फैकल्टी है, दे आर ऑपरेटिंग इन ए वेरी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, और हमें ट्रेनिंग भी वहीं से शुरू करनी चाहिए। So this is what higher education institutions can do. There is a lot more which I can speak on NEP, क्योंकि इसके साथ शुरू से जुड़े रहे हैं और यूनिवर्सिटी में इम्प्लीमेंट भी किया है with a very capable team. और अब मैं इसको यहीं पे क्लोज करती हूँ अपने एड्रेस पे, and I leave it for question answer session. Maybe that it will be much more helpful than a one-way communication. So thank you very much for keeping me on board, and congratulations to the college principal and everyone engaged with it again. Thank you very much. Thank you, Dr. Manjula Chaudhary, for your wonderful deliberation. Ma'am, you provided us with a roadmap. Ma'am, you provided us with a roadmap for the proper implementation of national education policy, and you also discussed various challenges for its implementation, especially for small institutions. And you also pondered over what could be the various solutions for implementation of this new policy. Thank you, ma'am. Now the house is open for any questions. If anyone wants to ask any question from ma'am, then you can ask directly, or you can write the question in the chat box. Any question from the participant? You can unmute yourself. Thank you, ma'am. Unmute yourself. Manjula ji. Thank you, Manjula ji, for really guiding us. But the question is, ma'am, if the ABC has to be created for each student, is it possible to go for the ABC even without the accreditation, without A grade? Our institution have a A grade in the past cycle, but whether it will be possible for any Earlier there was institution without restriction. A Now grade to UGC go is for? opening for it for everyone. Okay, ma'am. In fact, Okay, the ma'am. student has to download the DigiLocker, and it's linked to DigiLocker. Okay, ma'am. And there is no restriction on use of DigiLocker. Okay. Mother, this is the students only will have Because to go a for it. college may not, just a moment. A college may not be A grade, but in multiple entry exit, the student can migrate from B college to A college. So this ID Yes, has ma'am. to be created. Yeah. Good morning, ma'am. Yeah. I am Vinita Gupta from Government College Panchkula. Ma'am, I am IQAC coordinator, and we have developed a skill development cell here. But we want to just do collaboration with other university like Vishwakarma University for some skill course. But we are affiliated to Kurukshetra University. So how can we go do such course which is not affiliated, which is not there in the Kurukshetra University? So what are the rules and regulations to create some other course which is other than Kurukshetra University? I think this is in reference to Vishwakarma Skill University. Many colleges have been approaching Kurukshetra University to start their courses. And if the course is not running in Kurukshetra University, they can just write to DOC of Kurukshetra University. And earlier also we have been giving them permission to run the courses of Vishwakarma Skill University. So the syllabi and curriculum will be developed by then that will be provided by the respective university. Okay, that will be recognized by KUK. Of course, there is a government letter also. Okay. Then second question is, you have mentioned here IQAC, the role of IQAC in implementation of NEP. So I request you to hold some sort of workshop for the IQAC coordinators of the colleges so that we can know what is our role, because in the colleges, we are not just having a great role in the coordination or in the compliance of all the parameters. So the government colleges and the principals should recognize the role of IQAC in their colleges. So you should hold a workshop for the coordinator as well as the principal also. You can write to our Vice Chancellor and or the IQAC coordinator. Currently they are busy because we are also passing through this NAC thing and we are expecting visit in April. But I think they would be able to do it. So we should request, or the university itself should write. University IQAC coordinator. I think he will arrange it. Yeah. Good morning, ma'am. Good morning.
मैम दिस इज सीमा अग्रवाल फ्रॉम M.D.S.D कॉलेज। मैम जैसे कि अभी आपने बताया कि कुछ इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटीज कुछ सब्जेक्ट फिक्स कर रहे हैं बिकॉज की दैट इज नॉट गुड फॉर एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। बट मैम कुछ सब्जेक्ट्स जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बच्चा बीकॉम कर रहा है, अगर बच्चा कहता है मैं मार्केटिंग करूंगा, लॉ करूंगा, बट मैं अकाउंट्स नहीं करूंगा, तो मैम फिर तो वो बच्चा उस फील्ड के लिए वो नहीं हुआ ना, उसमें पूरी स्किल्स तो आएंगी नहीं। तो मैम कुछ तो हमें फिक्स करना ही पड़ेगा, तभी हम जस्टिफाई कर सकते हैं उस फील्ड के लिए। I mean, this is what you feel. Agar the student feels marketing is good for him, then or her, then let them do the marketing. मैम Choice is with the student, not with the teacher. बट मैम स्टूडेंट्स इतने अवेयर नहीं है ना, उन्हें पता ही नहीं है ये चीज का, कि उन्हें लगेगा कि जो टफ सब्जेक्ट है वो छोड़ दो, डिग्री तो हमें अवार्ड हो ही जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट हमारा बाहर जाना चाह रहा है, उन्हें वो दे आर अवेयर कि उन्हें क्या है। आप मार्केटिंग कीजिएगा, डिजिटल मार्केटिंग दीजिएगा, बहुत बच्चे आएंगे। एक बात जिनको और है, अकाउंटेंसी पढ़नी है वो अकाउंटेंसी पढ़ने आएंगे। राइट मैम। मैम एक बात और है, जैसे हम इंटर्न की बात करते हैं, अभी हमारे कुछ सब्जेक्ट जो हैं जैसे कि वोकेशनल एजुकेशन के हैं, वो इंटर्न से एसोसिएटेड है कि बच्चे ने प्रोजेक्ट कर रहे हैं, पर जो हमारा सिस्टम है मैम उसमें हम बच्चों को, हमारा कोई लिंकेज नहीं है कि हम बच्चों को कहें कि तुम यहाँ पे जाके इंटर्न करो। तो जब सारा सिस्टम ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा हो जाएगा तो हमारी तो इतनी लिंकेजेस है ही नहीं है मैम उनके साथ, तो बच्चे अपने हिसाब से थोड़ा सा मैनिपुलेट करके इंटर्न करने की कोशिश करते हैं। वही सिस्टम ही क्रिएट करना है। तो जो लोकल इंडस्ट्री है उनके साथ MOU साइन करिएगा, उनके साथ बैठिएगा, उन्हें कॉलेज में बुलाइएगा, एंड देन यू विल हैव द एसोसिएशन। राइट मैम। और जो आपने अकाउंटेंसी वाली बात की, इसमें मैं एक बात और ऐड करूंगी, जितने इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, आई मीन दे हायर इंजीनियर्स, दे डोंट हायर बीकॉम। मैडम एक और क्वेरी है कि जैसे आपने बताया कि वी कैन सीक परमिशन फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी टू रन सम स्किल डेवलपमेंट कोर्स फ्रॉम सम अदर यूनिवर्सिटी, तो वो जो डिग्री होगी या उससे रिलेटेड जो सर्टिफिकेट होगा, कौन सर्टिफाई, कौन सी KUK का मिलेगा स्टूडेंट्स को? नॉट एनी अदर यूनिवर्सिटी, ओनली विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, जिसके बारे में हरियाणा गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है। तो जो सर्टिफिकेशन है वो भी उसी यूनिवर्सिटी का होगा। तो ये पैरेलल कोर्स होगा विद बीकॉम और BSc, इट विल बी पैरेलल? हाँ, आप पैरेलल चला सकते हैं। सपोज कॉलेज में आप BA चला रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आप मेडिकल कोई भी फार्म ऐसा कोर्स चलाते हैं जो KU पर नहीं है, जैसे वहां पर बहुत सारे कोर्स मेडिकल के हैं जो हम नहीं चलाते, तो उनकी हम परमिशन दे देते हैं, आप पैरेलल चला सकते हैं। तो आप डिग्री नहीं देंगे फिर उस बच्चे को कुरुक्षेत्र से? नहीं, डिग्री हम नहीं देंगे, डिग्री दूसरी यूनिवर्सिटी देगी। ओके, थैंक यू। कंप्लायंसेस भी उन्हीं के होंगे। ओके। Ma'am, is there any use of taking now any honors, BCom honors or English honors? Is there any use now? Earlier people used to take this all honors in their sub, maybe political science, maybe any other subjects, you know. So ma'am, is there any use for this? एप्रीहेंशन है, क्योंकि 4 साल लगा के उसको फिर 2 साल का PG करना पड़ेगा रिसर्च के बाद, तो वो सीधा PhD में जा सकता है या सीधे सेकेंड ईयर में जा सकता है। There is no use of any taking. Madam, there is no use of. अब ये तो स्टूडेंट को डिसाइड करना है वो लेना चाहेगा या नहीं। अच्छा, कॉलेज ने मैडम अपनी सब्जेक्ट ऑप्शंस बढ़ानी है, तो दैट्स व्हाई वी ऑल आर थिंकिंग, should we go for the honors or we should not go for the honors? This is the question basically. That's why this is coming up to the mind of them. देखिए, ऑनर्स तो जब बच्चा 4th ईयर में जाएगा तब आपको देखना है कि कितने स्टूडेंट्स लेना चाहते हैं, तब आप ऑफर कर देंगे, वो स्कीम में तो रहेगा। ओके, गुड मॉर्निंग। एक मिनिमम नंबर होगा तभी आप ऑफर करेंगे, वरना नहीं करेंगे। गुड मॉर्निंग मैम, एम आई ऑडिबल? थैंक यू। गुड मॉर्निंग ma'am, this is Suman Sirohi from Government College for Women in Ambala City. I'm an associate professor of English. As a teacher of English, I share on this platform a query as well as apprehension as well as fear, which is prevalent among English teachers, that in future their services won't be required anymore because English is going to be an optional subject in future on account of NEP, implementation of NEP. So
what is your viewpoint in this regard, ma'am? Not viewpoint, my experience. We had to increase one section on English. The moment we made it optional, the demand increased. So same should happen there also. And there is nothing to fear because there is a compulsory paper of English also, the communication. Yes, ma'am. So will it be compulsory for all the students to opt? Communication is compulsory, but the subject, English as a subject, is not compulsory. It's not compulsory. So वहाँ हमारा बचाव हो सकता है as teachers. पूरा बचाव है. हमारा experience तो यही है. Rather Hindi suffered, Punjabi suffered, Sanskrit suffered most. Okay. जो हम apprehend कर रहे थे वो नहीं हुआ. Will their services will be transferred to any other subject like जो भी पढ़ा जैसा कि सुनने में आया, because I'm not. देखो कुछ नहीं होगा. आप लोग आपको एक ऑप्शन दी जा रही है जिसमें हम हॉबी कोर्सेज कह रहे हैं, एक्टिविटी बेस्ड कह रहे हैं. उसमें आइल्स की ट्रेनिंग शुरू कर दो. ऑल स्टूडेंट विल कम टू यू. Okay, ma'am. That is a nice idea. Thank you so much. मैम ये आप कॉलेजेस में कब से शुरू करेंगे CBCS और ABC सिस्टम? जैसे अभी यूनिवर्सिटी में आपने शुरू किया है, तो कॉलेजेस में कब से हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वैसे तो फोर्थकमिंग एकेडमिक सेशन से होना चाहिए, though it's delayed. Ma'am, there should be proper training of the teachers because we do not know anything about these CBCS or the ABC. नहीं, जब जाएगा तो ट्रेनिंग भी यूनिवर्सिटी will arrange for it. Natural है. Okay. और मैम जो ऑनर्स कोर्सेज which are already running here, they will be closed. वो they will be closed. अपना ये तो कोर्स तो रन करेंगे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उसके बाद ये नहीं चलेंगे. Okay. And about PG courses? About PG courses, MA English और MA History. वो तो चलते रहेंगे, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा. उसका ये हो सकता है जो 4 ईयर का ग्रेजुएशन करेगा वो फाइनल ईयर में पहुंचेगा, जो 3 ईयर का करेगा वो 2 साल का PG करेगा, जो ऑनर्स करेगा वो PhD में जाएगा. थोड़ा रूट चेंज हो गया. PG कोर्सेज विल कंटिन्यू रनिंग. इससे वर्कलोड बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है. नहीं, वर्कलोड की प्रॉब्लम नहीं है. जस्ट वी वांट टू नो द सिस्टम, हाउ इट विल बी रन नेक्स्ट ईयर. And it will be semester. जो आप ऑनर्स के कोर्सेज हर साल पढ़ा रहे हैं वो सारे कोर्सेज आप 4th ईयर में पढ़ाएंगे. Okay. And it will be semester. Semester. So ma'am, there should be some curve on the other extracurricular activities because during semesters it is not possible to carry on simultaneously the academic courses and the extracurricular activities. जब आप जो टेम्पलेट बनाया है, जिसको हमने एक्सपेरिमेंट किया है यूनिवर्सिटी में, आप उसको देखेंगे तो वीकली उसको टाइम टेबल में ही रखा गया है. तो प्रोविजन है. और इतना ही प्रोविजन नहीं है. अगर कोई जैसे आजकल स्टार्टअप पे फोकस है, उसको मैंने डिस्कस नहीं किया बिकॉज स्टार्टअप नीड्स अ सेपरेट लेक्चर. जो इनोवेशन इंक्यूबेशन सेंटर कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशंस में खुलने चाहिए, तो अगर कोई स्टूडेंट उसमें टाइम डिवोट करता है, वो क्रेडिट भी उसके फैक्टर हो रहे हैं. Okay, at present we cannot send our students to e-karma or the incubation center during college hours. नेचुरली आपको किसी दिन वीकडे या किसी आफ्टरनून को खाली रखना है जहां वो ये काम कर सके. Thank you. Any other queries? Hello, ma'am. I have one thing to ask. Recently, the colleges have received directions from the Kurukshetra University to open one-stop center for internationalization. So would you please throw some light on it, that what we are supposed to do in this regard? Basically, you have to sign memorandum of understanding with the international institutions, colleges, universities. It's all about creating international interfaces and learning from each other. Though I am not aware about that notification. No, it's all right. But college at its own level has to create this opportunity for the institution, or there will be some guidelines will be issued from the Kurukshetra University, or Kurukshetra University will be helping us in reaching out to those foreign universities. No, college has to do it at its own level. University will not be helping, and guidelines are available from UGC. So university will not supply any guidelines also.
All right. Thank Earlier, you. it was restricted. For every international collaboration, one needed the permission of Ministry of Home Affairs and Ministry of Education. Now, no such bar exists, except if we have to sign an MOU with, say Pakistan or not so friendly countries. Otherwise, it's open. Okay, ma'am. Thank you so much. I think Dr. Manjula has questioned all the, I think she has answered all the queries from participants, and now it is time to proceed to the next speaker, Dr. Anita Rani Dua. Thank you. Thank you very much, madam. And we welcome Madam Before Anita. Madam's address, let me briefly introduce ma'am. Dr. Anita Rani Dua is currently serving as Professor Biochemistry in Institute of Integrated and Honor Study, Kurukshetra University. And she is also serving as Director WSRC, Kurukshetra University. Her broad research area is antioxidants and cell signaling. She completed her PhD from Chaudhry Charan Singh Haryana Agricultural University, Hisar. She has completed many projects under UGC and other government organizations. She has enormous academic visibility across the nation as she presented more than 60 research papers in seminars and conferences. And she has made her mark in the area of publications with more than 40 research papers and a dozen books. She is also a member of various core committees in various universities like Kurukshetra University and Chaudhry Ranbir Singh University, Jean. She is also Deputy Coordinator, Kurukshetra University for UN Sustainable Development Solutions Network. It is my proud privilege to welcome you, ma'am. Kindly proceed with your deliberation. Ma'am has joined us. Ma'am, could you hear us? Because your voice is not audible. May I come in? मैम ये फूलों वाले हैं मैम, डेकोरेशन के लिए दिखा के लाए हैं और सबने फिला करिए। मैम ये बताइए जो सीढ़ियां हैं नीचे से, वो आप ये वाली सीढ़ियों के फ्लावर सजाने की बात कर रहे थे या ऊपर वाली सीढ़ियां कैसे कर रहे थे? आप सीढ़ियों में लगाएंगे चुनिया। हाँ। Hello, am I audible? Yes, ma'am, you are very much audible. We welcome you. There is some problem in the system where I have already morning to all of you, respected Dr. Anga, organizing and doing your duty. I have joined earlier in the inaugural session also, and I feel after listening Dr. Manjula, there is little left to be talked about this all. I have been assigned this duty. I thank all the organizers for
giving me this opportunity to interact with the participants. Am I allowed to upload my presentation? Yes, ma'am, you can. You are the co-host now. Hello. Anuradha, is it? You kindly see that things. Please allow me to present my She can do it now. presentation. Ma'am, you can do it Madam, now. now you can do. Yes, Anuradha, you please take up the platform and please see. But I am unable to see any icon for that. Sharing is not, this sign is not coming to my screen. Anyhow, let's just begin with what is possible at present. So the very first thing comes to the mind of everyone is this is a very, as Dr. Manjula has also underlined, that it is a very big change. But what was the root of this change? Am I audible? आपके पर्दे के आसपास Is it okay? जो आपका बैनर लगेगा, दो Yes, बैनर्स you के are आसपास audible, ma'am. आपके वो लगेंगे. प्रदीप जी आप बताइए. नहीं, फूल है ना. और आगे जो है Dr. Anuradha, am I audible? Yes, ma'am, you are audible, but your screen is not visible, ma'am. Because I don't see any icon to present, so I am just skipping that part. I will be just interacting. No, ma'am, you have joined from two devices, so we have made you co-host with the two devices, so you can share it now, ma'am. You can share it now, ma'am. But I don't see any icon of any permission of anyhow. I will continue. If there is some problem, then we will switch back to it. I think I will be able to manage in this mode itself. This is, as we were discussing since morning, that this is a very big change, that we are moving to another, a very vast discipline or a very vast area. NEP as compared to our earlier system is very vast in all the dimensions, in implementation, in scope, in our responsibilities, in the responsibilities of HEIs. It is a major change. But the very first question arises, what was the need? When we are very much clear about the objectives and aims, in that case, I think it becomes more appropriate to implement, and more when we are convinced, only then we are able to get engaged into the things. So the as Dr. Angela has also said, that it is the UN Sustainable Development Goals, which were laid down by UN in 2015, and India has adopted it to implement it by 2030. Among these 17 goals, as many of us are aware, it is Sustainable Development Goal number 4, which talks about quality education. Due to the huge gap in the quality of education across the world, UN has given some standards, taglines, some standard guidelines that these should be implemented so that the mobility or the globalization, mobility of the human beings from one country to another is feasible, and secondly, the level that is matched. Inclusive, equitable, quality education, and promote lifelong learning opportunities for all. Here, I would like to underline inclusive. Inclusive means taking all the stakeholders together, whether all the segments of the society together, whether they are differently abled or some other segments which are left behind, they are to be taken into the mainstream. And secondly, the
quality education. Quality education means at par with all the countries, with other countries also. So when we are talking about quality, it is directly related to the future perspectives. So in among the future perspectives, the most immediate impact of the education, or most immediate goal of the education, we see as employability. And the another dimension is lifelong learning. The lifelong learning means it's the due to some of the factors or some of the social bindings, some economical bindings, some of the sections of the society are lagging behind, especially when we talk about women. It is in light to that also, that the women education is not at par with the average. As we see, it is the universal factor across the globe. So addressing all these issues and then opening the lifelong learning opportunities for all, that is the main tagline for quality, for SDG number 4, that relates to the quality education. In this process, we have to major dimensions. That is, the educational structure was altogether need to be changed. Then regulation and governance. Our system of regulation, our system of governance, that has it has been discussed in the earlier session also, that we need to make small clusters. We need to make universities smaller so that the effective regulation and effective governance can be managed. Then Indian traditions and value system, that is most important, that we need to keep in the era of globalization, when from and our students are going to the other countries. In that case, we need to keep our Indian identity intact. We need to keep our Indian values intact, and the impact we are seeing in various forms in the society. So to address all these things, main objective is to give quality education and enhance employability. Another very important phrase is that this education, NEP-2020, that is actually student-centric, not teacher-centric. But till now, our system is that it is decided by university that what will be the syllabus of this paper. Say a student is studying in say BA History and Geography. It is fixed that for history we'll be studying these 6 papers in 3 years, in one in each semester, and he will be awarded degree with history. Now, it is not the student. What are his choices? What are his options? What is the value of what is the demand in market? What is the demand in that subject? All these things are not being addressed till now. Now the time is to address all these things so that we are enhanced by taking into consideration the interest and the student as well as the so for that, the key areas on improving Excuse me, ma'am, आप audible नहीं है. You are not audible at all. We can't hear you, ma'am. Your voice is not audible. मैंने जो सबकी वो भेज दो स्क्रीनशॉट में I think there is internet problem. कॉल करें I think ma'am's internet connection is not stable. करते कमेंट रखिए वही मेरी बेटी का रिजल्ट था आज पोस्ट पास हो गया
Hello. Am I audible now? Yes, you are audible, ma'am. Okay. I'm sorry. Somehow this system is not working well at present in my area. But anyhow, we will discussing about the key focus areas which have to be improved. They include academic resources, then learning environment, the overall ecosystem, quality of teaching, as well as research. That research part here is important, since we are to deal with the innovation. We have the policies are to upgrade and to encourage students to find the solutions of the problems around them. So here research doesn't mean that we have to take our students to big research laboratories and then make them aware of all the protocols and parameters only. This research here is the communication research, the community research also. The student is to be trained to look into the problems around us and then try to solve them, find out the solutions by using their wisdom, by using their knowledge. And technology use and integration of the technology, widening the reach to a larger section of students. This is the aim of this this NEP 2020, that we have to make our reach. And for that purpose, I think the part that 40% of the courses student can take from online platforms or from other universities, that has been incorporated. That is the purpose, to make it wider. Some of the areas still in other parts of the country, although in Haryana, we have covered most of the area to be covered under our higher education. Colleges are there in far off places, but in many parts of the country where this facility is not available here, then, or the quality of education, or we can say some courses are not available in the colleges in the remote areas, then student can shift on to the learning platforms, to the online platforms, to attain that knowledge and to do those courses from the online platforms. And then holistic education, which will be rather addressing all the components to enhance the ability of the student, to enhance the skills of the student, to enhance the value-based system. All these things, internship, all these things are to be incorporated and making it an integrated and holistic system. So the very first thing we have to keep in mind is that it is a student centric system. Secondly, the change what we will be implementing, that is, now the student is to be changed into learner. अभी तक क्या कर रहे हैं हम अपने सिस्टम के अंदर कि जैसे कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ाना है, उसका फिक्स्ड करिकुलम है और उस फिक्स्ड करिकुलम के ऊपर स्टूडेंट को कुछ फिक्स पेपर अपीयर होने हैं, उसने पढ़ना है और उनको फाइनल एग्जाम में लिख के आना है. That written part is being evaluated and the student is judged by the capability to learn that subject and then reproduce that subject. What he has learned from that course, what he has learned from that subject, that is not being evaluated. Whether he is able to really implement the knowledge which you have given him in the class, that is not being evaluated. That practical part, that application part, that is now at present, that is not being given due credit. Whereas now in the new system, it will be the learning, how much the student has learned. We have to evaluate that, rather than only the end term exam or the final exam which he has written. That we have to distinguish between learning and writing, reproducing and learning. Learning means gaining knowledge, imbibing it, and then making it, applying it on the, or to find the new solutions. So this is the change in pedagogy also, that not only giving the student to the opportunity to gain knowledge, rather to teach him how to apply it in the real life, how to find the solutions of the problems around us by using the knowledge which is given in the classroom. So our evaluation will not only be based on the classroom
Hello. So we were talking about making the evaluation process will be changed. The evaluation as well as pedagogy, both the things are being changed. Now the evaluation is based on the participation of the student, and our question answers are now being changed based on the learning outcomes. As madam has also underlined that now the courses will be having a preset of the learning outcomes, that each course, each part of our company, each part course means the paper which you are teaching. So each paper will be defined by some learning outcomes, and based on those learning outcomes, we have to evaluate the student. Now it will not be just the reproduction of the knowledge which we have given, rather it will be like you will be giving some problem that is real-time problem, and student will be asked to answer the problem you have asked. So it should be it may be something like comprehensive, as we used to teach language. So likewise, each subject will be taught in that fashion, so that we are able to quiz presentations. These will be made the part of the program, so that when our student is going to after graduation, he is not only enriched in the knowledge of that subject, rather with other competences like presentation, like communication, giving his own inputs, adding on to the solutions of the problems. So all these things have to be taught in every subject. So it is the change in pedagogy that is most important for the teacher. As far as NEP is concerned, it is making learning flexible in all the terms, whether it is multiple exit entry or choice of the subjects, or in the length of the program also. I will be just discussing the template which we have implemented in IIHS, but that also includes the multiple exit entry. That part we will be discussing there, and then making the learning flexible in terms of choice also. For example, in
So, but at present, what the syllabus is going on in our colleges, we are not asking student what is his interest. We are just making a fixed structure and teaching that. Whereas now in new system, in third year and fourth year, we will be giving choice to the student in which branch of that subject Ma'am, you are not audible. हाँ मैम कर रही हूँ इनको कॉल में मैम आप
Ma'am, you are not audible. इसको क्या अलाउड है नहीं? कुछ वहां से आवाज तो नहीं आ रही? नहीं। हेलो Hello, sir, you are audible. Hello, good morning, sir. गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक्चुअली डॉक्टर अनीता दुआ मैम के यहाँ पे थोड़ा कुछ टेक्निकल इशू आ गया है, तो शी हैज टू स्टॉप इन बिटवीन एंड शी विल बी जॉइनिंग अगेन आफ्टर योर सेशन, सर। सो शैल वी स्टार्ट विद योर सेशन, sir? Sure, no problem. Please. It is my proud privilege to welcome Dr. Krishan Kant on this platform. Dr. Krishan Kant, sir, he is a principal at Agarwal College, Ballabgarh. Sir, when I have downloaded your biodata, it was of 57 pages. So it is because you are associated in so many things and you have done so much. So it is my proud privilege to introduce you with my participants. And sir is a stalwart in his own field. He is a EC member of YMCA. USNT Faridabad. He is a elected member of Indian Society of Analytical Scientists, and he has membership of almost 30 to 40 organizations. Sir, we are really very blessed to have you with us. Sir has represented a number of papers in various conferences. He has been a resource person for national as well as international conferences. He has authored
10 books during his tenure as a principal. Sir has been invited speaker for almost for 57 conferences and seminars. Sir has visited abroad for academic pursuits and in third international WONUC conference on the effects of low and very low doses of ionizing radiation on human health. He has presented his research over there. In 22nd International Conference on Nuclear Tracks in Solids at Barcelona, Spain, he has also presented his research work here. And in International Conference on Environment Radioactivity from Measurements and Assessments to Regulation, in International Conference on Gas Geochemistry, in International Conference on Nuclear Tracks in Puebla, and in International Conference on Nuclear Tracks in Solids at Kobe, Japan. So in such conferences, he has represented India and presented his research activities over there. His field of interest are geophysics, radiation physics, and environmental sciences. He has also taken research projects such as random monitoring in dwellings and workplace in Haryana using solid-state nuclear track, random monitoring in Faridabad using solid-state nuclear track detectors, natural radioactivity in the technologically enhanced building materials, radioactivity measurements in potassium-enriched vegetation, and measurement of random thorium and gamma radiation levels in Faridabad. मैडम शुरू करें, ये तो बहुत लंबा चौड़ा पढ़ दिया आपने, इतनी जरूरत नहीं थी. Sir, I just want to tell to my participants that sir is a multifarious personality, and there is no field at all in which he has not involved himself in national service scheme in Red Cross as well, and he is totally devoted himself towards the research as well as towards the benefit of society. Sir, we are very blessed and we are very grateful to you for joining us today. And whenever we talk about NEP, Dr. Krishan Kant is one of the name which comes very first to us when we think about experts in these fields. So thank you so much, sir, for joining us. Now the dais is yours, sir. Thank you, madam. Thank you. इससे पहले कि मैं अपनी बात पार्टिसिपेंट से साझा करूं, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मैडम प्रिंसिपल डॉक्टर किरण आंगरा जी का, जो हमारी बहुत अच्छी मित्र भी हैं और बहुत अच्छी हमारी शुभचिंतक भी हैं. उन्होंने मुझे मौका दिया कि इस डायरेक्टर हायर एजुकेशन द्वारा जो प्रायोजित सेमिनार है उसमें मैं अपनी बात आप सब लोगों से साझा करूं. धन्यवाद करना चाहूंगा कन्वीनर डॉक्टर अनुराधा जी का, को कन्वीनर मिस आंचल जी का, और जो आयोजन सचिव ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं डॉक्टर मोनिका ढिल्लों जी का, कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि थोड़ी चर्चा NEP पे करें, क्योंकि पूरा देश जो है इसकी बात कर रहा है. और कॉलेज की प्रिंसिपल, कॉलेज की मैनेजमेंट को मैं बधाई देना चाहता हूं कि एक ऐसा द टॉपिक विच इज वेरी एप्ट एंड वेल थॉट ऑफ, उस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं शिक्षक साथियों के साथ. तो मैडम, काइंडली परमिट मी टू शेयर माय स्क्रीन. Sir, you are co-host. You can share your screen now. Yeah, is it visible? Sir, yes, it is visible. You can do it F5, sir. Then it will be more visible to us, sir. Yes, sir, it is visible now. So the title of my presentation is Implementation of National Education Policy 2020, Need for Reimagining Roles and Responsibilities of Higher Educational Institutions. When I talk about the higher educational institution, it means it involves all the stakeholders, may it be the students, the teachers, the promoters, the society, the alumni, the employers. So it is a collective responsibility, and they need to reimagine their roles and their responsibilities for the implementation of NEP 2020. Dream it, understand it, chase it, and realize it. Everybody wants that this NEP 2020 should be implemented in the country.
in the education system, whether it is the school system or higher education system. So for that, the foremost thing is that we have to dream it. We have to understand it. And when we understand, we have to chase it, and finally we can realize it, and no one can stop us from realizing it. In Rig Veda, there is a saying, Ano Bhadra Kritvo Yantu Vishwata. Let noble thoughts come to me from all directions. It was stated long back, and which is very, very relevant even in the present scenario. I acknowledge the works of others which I have used in my presentation in the photographs or some quotations. The title decided by the institute was Role and Responsibilities of Higher Education Institutions in Implementation of NEP 2020. And what they wrote is, the prime objective of the seminar is to explore critical issues faced by new education policy with a focus on different aspects of challenges to implement the policy and its further prospects. Now, the basic question here is that whether the critical issues are being faced by national education policy, or these critical issues are being faced by us, we the implementers, we the higher educational institutions. That is a big question which we need to understand and decide. Policy has already been launched in the country on 29th of July 2020. It has come in public domain. Now, whatever issues or challenges are, they are not before the policy. In fact, they are before us. Higher education scenario in the country, if we look at it, then you can see that there are 1043, and latest data is 1118 as per AISHE survey, number of universities, around 50,000 colleges, more than 11,000 standalone institutions, 3.85 crore students. About higher education I am talking, more than 15 lakhs teachers, gross enrollment ratio 27.1, which the government and the education policy expects to be 50% in the coming time. Gender parity index is 1.01 and pupil teacher ratio is 26. There has been continuous efforts to improve the quality and standard of education in the world, not only in our country, and there has been commissions in the past, even at present, even pre-independence and post-independence. And in our country, after independence, there was Radhakrishnan Commission 48-49 and National Knowledge Commission from 2005 to 2014. After that, it was abolished. This policy is not the first policy which has come. There had been policies earlier also. There was National Policy on Education 1968, National Policy on Education 1986, National Education Policy 2020. The basic purpose of education is to improve all aspects of life as physical, mental, spiritual, vital, emotional, social, and cultural. This we understand, and if not, we need to understand. If I talk of National Policy on Education 1968, the crux was, the focus was to make a transition from evaluation to improvement in learning, which this policy is also talking about. If I talk about 1986, the National Policy on Education, it suggested for elimination of excessive element of chance and subjectivity, de-emphasizing memorization, which this policy is also talking about. Introduction of continuous and comprehensive evaluation. In this policy, they are much talking about the assessment, not about the evaluation. The assessment is more important. I will talk in details in the later slides. Use of grades, introduction of semester system, and 10+2+3 system. And the present education policy, which we call as National Education Policy, it expects the revision and revamping of all aspects of education, including its regulation and governance. As you all know, there will be one regulator in the name of HECI,
with 4 verticals, which I shall be talking about, to create a new system that is aligned with the aspirational goals of 21st century education, including SDG 4. SDG 4 is the quality education, which we are related to. That's why SDG 4 it has been written. In spite of that, there are other sustainable development goals also. Out of 17, 5-6 goals which are directly related to the education system and educational institutions, while building upon India's tradition, values, and knowledge system. And they are recommending for 5+3+3+4 system. You all must be knowing about it. So this education policy, it contains all the elements which are expected to achieve the sustainable development goals, which were adopted by UNO in 2015. They are 17 in number, and these goals give you the blueprint for peace and prosperity for people and the planet now and into the future. This is what NEP 2020 expects. For sustainable development to be achieved, it is very important to harmonize 5 core elements which are interconnected and all are crucial for the well-being of individuals and societies. You go anywhere, you go to the entrepreneur side, you go to your job side, you go to your education side, ethics are very, very important. Then the outcome should include the employment generation. Here it is focusing on employment generation, not on employment. Means we should develop the right kind of infrastructure which subsequently generates the employment, economic growth of the country and the people. Social inclusion is very, very important. And last is the environmental protection, which is very important. If we talk about the ancient India and its literary works, you must have come across the book Kadambari by Ban Bhatt, in which he talks about the 64 kalas, knowledge of 64 arts. That was not only teaching, it included singing, dancing, and painting, scientific, vocational, professional, medicinal, engineering, soft skills. He wrote this book long back, where there was a system of multidisciplinary and interdisciplinary approach, which this new education, national education policy is also talking about. राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने एक लाइनें ये 2 लिखी हैं जो मैं आपसे साझा करना चाहूंगा। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। 64 कलाओं की बात बान भट्ट की कादम्बरी में हुई। देश के जो नीति निर्धाता हैं उन्होंने सोचा कि भी देश में चल क्या रहा है, हमारी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की हालत क्या है। तो मुझे लगता है कि ये लाइनें जो राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने लिखी वो प्रासंगिक थी। उन्होंने उसके बारे में सोचा, विचार किया, मंथन किया और एक बहुत ही बुद्धिजीवी वर्ग को देश से सिलेक्ट करके एक कमेटी का गठन हुआ, जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार किया, जो कि आज पब्लिक डोमेन में है। ऐसा नहीं है कि हमारी कुछ खूबियां नहीं है, क्योंकि अल्लामा इकबाल ने लिखा तराने हिंदी में, यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। वी वर अटैक्ड बाय मेनी पीपल, they tried to finish our civilization, our art, our culture, but they couldn't, because some of our systems were very, very strong. And we need to introspect and we need to peep into the past. What was that? What were those strengths of our system that they could not finish us? Probably now the NEP 2020 will pave a new path to revive golden period and making India Vishwa Guru. This fellow, I think he was the main fellow who tried to destroy it and succeeded to some extent in polluting our system, ancient education system, which was very, very strong. And it was a statement in the British Parliament in 1835. He was Macaulay. Now NEP has come and its aims and objectives, NEP extract in the triple formula of work-centric, futuristic, humanistic and holistic objectives. And the basic concepts is
whether he is a person or an institution, the SWOT is very, very important. Unless we identify our strengths, weaknesses, opportunities, and challenges, we cannot progress. Situatedness, educatedness, and the governance, they are also equally important. The narrative of higher education for many years has always been to provide knowledge and skills to people to enable them to find gainful employment. And therefore, the focus has always been on nurturing those aspects which lead them there. The focus is on gainful employment, but the NEP 2020 TNETs provide inputs and food for thought to shape the destination and define the journey to the destination, respectively to produce socially productive, spiritually rooted, physically, morally, and emotionally strong, responsible, and useful citizens to make India self-reliant, global leader, and Vishwa Guru. There have been policies and commissions and regulatory systems earlier also. This is very important and we need to understand. But the desired outcomes could not be realized, maybe due to some bottlenecks in the system or problems with the implementation or execution. Maybe there was less decentralization and poor monitoring mechanism and impact analysis, and hence meager return on investment. If you look at the Kothari Commission report 1966, the first sentence in the preamble is, the future of India is being shaped in our classrooms. And when it is extrapolated to higher educational institutions, where the ultimate product outcome is the youth, that is the student, who is the future architect or builder of the nation, the quality has to be paramount importance. The great thinker, political advisor, and economist Acharya Chanakya has rightly said, शिक्षक साधारण नहीं होता, प्रलय और सृजन उसकी गोद में पलते हैं. That is why the teaching and learning environment of higher educational institutions has to be very constructive and conducive, and teachers have to understand their roles and responsibility. This is how we have to reimagine our roles and responsibility. I knowingly included this slide. The future of India is being shaped in the classroom. But what happened to this statement in more than 50 years? This we need to think and ponder over. हुआ क्या? मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की आप लक्षणों का इलाज करने की कोशिश करते हैं, ना कि मूल कारण का. तो रूट कॉज जब तक हमें पता नहीं चलेगा, we cannot cure. And I think the root cause has been equally highlighted in the coming policy. Everybody in the country is talking about the quality. We need to understand what is quality. Personally, I feel that if you go to market and buy a product, you have certain expectations. And if that product is fulfilling your expectations, immediately you say that it is a quality product. But when it comes to higher educational institutions, ultimate who is outgoing of the HEIs? It is the student. The students should have the quality. Students should have the attributes. And for that, we have to develop the right kind of ambience, the physical and learning infrastructure in our institution. So quality is meeting and even exceeding the expectations of the consumers. It is a system improvement. It is a matter of choice, matter of firm conviction. It is a certitude. It is not an act. It is a habit. And it is not a journey. It is a journey. It is not a destination. The meaning of this quality may differ from person to person, from institution to institution, depending upon their resources. But two main definitions: fitness for purpose and satisfying the consumer expectations. No one can deny these are the two major requirements. And who are the HEI stakeholders? Students, they are the consumers, customers. Industry and society are the beneficiaries. Parents are the investors, and faculty as service providers. When we say that faculty are service providers, then no शब्द हमारे मुंह से नहीं आना चाहिए. हम ना कह ही नहीं सकते. विद्यार्थी की जैसी जब एनीवेयर एनी टाइम ऑफ एनी डायमेंशन जो भी रिक्वायरमेंट है, वो एज ए टीचर वी आर बाउंड टू fulfill the requirement of the students. Continuous improvement
means to be running, to be stationary. This is also equally important. There are three options. You can be in the bulk, you can be in the upper 10 percentile, or you can be in the lower 10 percentile. If you are in the lower 10 percentile, you have to run hard to survive. If you are in the bulk, you have to run harder to join those who are ahead, because everybody wants to improve. And if you are in the upper 10 percentile, you have to run hard to remain in the group. So here it is a choice of the individual teacher or the group of teachers of the institutions, whether you want to remain in the lower 10 percentile or in the bulk or upper 10 percentile. And the basic tool is the PDCA cycle: plan, do, check or study, and act. Concept of quality in tune with NEP 2020. NEP 2020 talks about outcome-based education, standard operating procedure, stated policies and procedures. Everything should be on your website. It should be clear in the public domain and everybody should know and understand. Issues management system. There has to be some management system who addresses the issues of all the stakeholders, whether it is the student, teachers, non-teaching employees, or even the stakeholders who are outside. Learning outcomes, very important. The program outcomes, course outcomes, program specific outcomes, and graduate attributes. When I talk about graduate attributes, it includes the personal, the intellectual, the professional, the life attributes. And everybody is talking about the POCOs and PSOs, but we should clearly understand that who has to define what. The course is nothing but the paper in a program, and a teacher teaches the course. So nobody else but the teacher himself can define the course outcome in a better way, because he should clearly understand that what the student is going to learn after completing this course. Usually what happens, people sit together in the department without caring for this, they just simply define the course outcomes. The course outcomes are to be defined by the teacher itself, individual teacher, program outcome at the department level, and program specific outcome at the institutional level. And as far as the attainment is concerned, PSO, it is attained when the student graduates or post-graduates from your institution and go to his or her workplace. Because attainment of program specific outcome includes the attributes. How does he behave in the society? How does he behave in his team? How does he respond to the situations? They all are included in the graduate attributes. The important is our thoughts. Someone has rightly said that cases are not made of iron, they are made up of thoughts. So it is very important that we look at our thoughts, because our thoughts becomes your words. Watch your words, they become your actions. Actions becomes habits, habit become character, and character becomes your destiny. Because NEP 2020 is going to decide the destiny of the teachers and the students. So if we want our destiny to be bright, then we need to look at our thoughts, what we are thinking. Very important. We are what our thoughts have made us. So take care about what you think. Words are secondary, thoughts live and travel for. सभी कहते हैं, सभी समझते हैं कि विचार कभी मरते नहीं हैं. कहते हैं स्वामी दयानंद एक व्यक्ति नहीं, एक व्यक्तित्व थे, वो एक विचार थे, और जो उनके विचार हैं वो आज भी प्रासंगिक हैं. So we have to be very careful about that. The second thing is the mindset. Mindset matters the most. This slide I like the most. You can see mindset is what separates the best from rest. He's a laborer boy. He doesn't have the resources, because sometimes I have listened to teachers talking about we are situated in a rural background. We do not have the resources. We do not have the time. We do not have the facilities. But friends, I can say that if you have the mindset, you will separate the best from the rest. See this laborer boy. He has collected some bricks and he has made जो सिंहासन होता है वो इसने अपना बना लिया है, and he is sitting on that, enjoying, and see his level of confidence, which is very, very important, and we need to understand this.
If you have to make a dent of your competence, your institution has to be a center of excellence. Then there is a strong need to have quality assurance and quality check systems. See this figure. It inspires me a lot, and maybe it may inspire you. Here is a lady, poor lady. क्या कह रही है वो? मेहनत करती हूँ, हर पल मुस्कुराती हूँ, मैं 500 रुपए के लिए धरना देने नहीं जाती हूँ, बड़ा होकर मेरा बेटा पत्थर न चलाए, इसीलिए गोद में लेकर उसे भी संस्कार सिखाती हूँ. Friends, this is very, very important. When she can think on this, then why can't we? I think पुरस्कार देने से अच्छा संस्कार देना है, क्योंकि यदि उपहार या पुरस्कार नहीं दिया तो बच्चा कुछ दिन देर रो करके चुप हो जाता है, लेकिन यदि उसको संस्कार नहीं दिए तो वो जिंदगी भर रोता रहता है और बड़ा होकर अपने गार्जियंस को, अपने माता पिता को भी कोसता रहता है. तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल. सी डॉक्टर राजेंद्र सिंह, वाटरमैन ऑफ इंडिया, व्हेन ही कुड डू, सी माझी द माउंटेन मैन, व्हेन ही कुड डू, सी दिस बॉय standing on the rooftop because he doesn't have electricity in his home, but in the street light he's reading. When he can do it, why can't we? Nothing is impossible. We have to make our mind. See this boy, he doesn't have the microphone and loudspeaker, but in the field he's standing, and by using this he is just speaking. So this is how, if you want to achieve, you can achieve. No one can stop you from achieving. But what is happening actually is, आपने सुना होगा कस्तूरी का मृग एक होता है जिसकी नाभि में कस्तूरी होती है और उसमें सुगंध आती रहती है. वो ये नहीं सोच पाता कि ये तेरे पास है. वो घास में इधर उधर घूमता रहता है. जंगल जंगल ढूंढ रहा मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को. दिस इज ए हार्ड फैक्ट दैट वी आर नॉट looking inside. We are not recognizing our power. We are just like Kasturi ka mrig. And moreover, the technology, the Facebook, the Instagram, Twitter, YouTube and WhatsApp, they don't let us free. पहले तो कहते थे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को त्यागना पड़ेगा, लेकिन अब यदि हमें कुछ इंस्टीट्यूशन में एक्स्ट्रा करना है, एक्स्ट्रा लर्न करना है, तो इन पांचों को भी त्यागना पड़ेगा. और बापूजी के जो 3 बंदर थे, because the Gandhiji's 3 monkey theory has evolved over time, तो इन तीनों से भी थोड़ा छुटकारा लेना पड़ेगा. And what we need to do, we have to make a proper coordination between heart, where the emotions develop, the mind, where the knowledge, prudence, decision making ability develops, and the hand, where the doings, courage and service happens. You have seen during COVID-19 period that our students, our teachers, they did a wonderful job for the community. They brought their hands outside, and whatever the food packets or the vaccinations or the oxygen cylinder distribution, what not, they did a wonderful job. The thing is that there has to be a coordination between head, heart and hand. एक सैनिक उग्रवादी को उसी गोली से मारता है तो उसको मेडल मिलता है, और यदि उग्रवादी सैनिक को मारता है तो उसको फांसी मिलती है. अपराध वही है, किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई, उसी वेपन से हुई, बट द इम्पोर्टेंट इज द पर्पस. What is the purpose? So purpose of doing the things in life is very, very important. The present education system, as you all know, it is all rote learning. बच्चे को जबरदस्ती रटवाया जाता है, उसके बाद वो एग्जाम में लिखता है, उसके बाद वो उसको भूलता है, फिर अगले सेमेस्टर का रटता है. तो this is a vicious cycle which we call as the rote loop. It is going on, and it doesn't test our critical thinking. It does not create any awareness, understanding or analytical skills. It only tests our memory, and the entire focus is on marks. It is a marks focused and package centric approach. You can see this figure. If a teacher is saying, I will teach you how to get 90% in physics, there is a long queue, huge crowd. I will teach you concept of physics. Nobody wants to go. The problem is with the system. The problem is with the mindset. The problem is with the students. So for teachers, it is a big challenge that how to change this established dogma. Similar is the evaluation system. Without knowing into the inherent skills of the students, the same assessment or evaluation system is used. And Albert Einstein rightly said, इस पिक्चर में यदि इंटरव्यूअर ये कहता है किसी मछली को कि भाई आप पेड़ पर चढ़ जाओ
Though she is very genius, you ask her to run in water, she will do wonderful. Everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. So we need to rethink on this, how to improve or change our assessment and evaluation system as per the skill of our students. See this, I taught Stripe how to whistle. The trainer is saying to the owner that I taught Stripe how to whistle. I do not hear him whistling, the owner is saying. The trainer says, I said I taught him, I did not say he learned it. This is what is actually happening in the present times, that we are not concerned that whether the student has learned what we taught in the class, but in the time to come, we have to ensure it. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षकों की भूमिका एवं अपेक्षाएं। शिक्षक की भूमिका बहुत असाधारण, जटिल और चुनौतीपूर्ण है। नए भारत में शिक्षकों के समक्ष श्रेष्ठ, संवेदनशील, समाजोपयोगी, देशभक्त एवं आत्मनिर्भर युवा पीढ़ी के निर्माण की कठिन चुनौती है। उसे अपने छात्रों में आत्मबल, आदर्श, नैतिक बल, सच्चाई, ईमानदारी, लगन और मेहनत की वह मशाल जलानी है जो उसे पूर्ण मनुष्य बनाए। सरल, सुगम, बोधगम एवं संप्रेषणीय ज्ञान का वाहक होने के साथ साथ बदलते परिवेश को समझना एवं अपनी पाठ्य सामग्री में उसका समावेश कर कक्षा में उसे अपनी शिक्षण पद्धति में ढालना और विद्यार्थियों में पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है। इट इज ए बिग चैलेंज बिफोर द टीचिंग कम्युनिटी। सो व्हाट आई सजेस्ट टू माय डियर कलीग्स दैट पढ़िए फिर पढ़ाइए, समझिए फिर समझाइए, सुनिए सुनाइए और बच्चों से कहो कि वो अपने हृदय में उसको समाये भी। पढ़ना, समझना, मनन करना। मनन में एक शब्द है मन। मन शब्द बहुत ही अच्छा होता है, और यदि इंडिविजुअली हम नए शब्द की बात करें तो नए शब्द को हम नेगेटिविटी में लेते हैं, लेकिन यदि मन शब्द के आगे या पीछे ने लगा दें जिसको नेगेटिविटी में लेते हैं तो इट गिव्स ए वंडरफुल मीनिंग। यदि ने आगे लगाते हैं तो नमन, ये आपको झुकना सिखाता है, और मनन आप चिंतन करते हैं। तो पढ़ना, समझना, मनन करना, और सबसे जो ज्यादा जरूरी है उस पर आचरण करना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Teaching, friends, we have to take it as a passion, not as a profession, because when you take it as a profession, it gives you materialistic approach, and when you take it as a passion, it gives you faith, values, concern, emotion, and respect. And dear friends, I tell you that the time is challenging. 1969, when a student got less marks, the parents and the principal asking the student, explain these bad grades. But today, if he gets less marks, the parents and the student, they are asking the teacher, you explain these bad grades. So there is a transition. Earlier times में क्या होता था और अब लोगों की और समाज की और पेरेंट्स की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, तो इसको हमें ध्यान से समझना भी चाहिए और इसको देखना भी चाहिए। तो प्रोसेस ऑफ करिकुलम ट्रांजैक्शन, पढ़ाना कैसे है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी अंडरस्टैंड इट एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड इट। आसान नहीं होता किसी ताले की चाबी होना, गहराई में समाकर दिल जीतना पड़ता है। तो आर वी रेडी टू डू दैट? आर वी थिंकिंग ऑफ ए लर्नर हु आस्क, इफ आई कैन नॉट लर्न द वे यू टीच मी, कैन यू टीच मी द वे आई कैन लर्न? यस, we need to understand it, and we need to go to the level of the student wherein he can understand. That's why today everybody is talking about the slow learners, the moderate learners, and the advanced learners. तो जैसा लर्नर है उसी हिसाब से उसको हमें फूड फॉर थॉट देना पड़ेगा, and we have to involve the students in learning, because NEP-2020 is talking a lot about that. Every student will go for internship and project works and all that, so we have to involve them. And for that, विद्यार्थियों के पार्ट पे जो जरूरी है वो है भाव, भक्ति, आस्था और श्रद्धा। यदि ये नहीं होगी विद्यार्थी की शिक्षक में, जो कि हमें उनके अंदर पैदा करनी पड़ेगी। भक्ति से मेरा मतलब जो है, जो मैं समझता हूं वो ये है कि आप कुछ ना बोलें और भगवान समझ ले, वो भक्ति है। और आप मंदिर में जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, आपको प्रसन्नता होती है, आप उसके सामने अपनी बात रखते हैं, और आपकी बात यदि पूरी हो जाती है तो आपकी भगवान में श्रद्धा बढ़ जाती है। तो श्रद्धा का मतलब भगवान कुछ ना बोले और आप उसको समझ लें, तो दोनों मूक रह करके एक दूसरे को समझते हैं, दैट इज कॉल्ड श्रद्धा। और यदि मैं फिजिक्स का विद्यार्थी हूं
इसलिए मैंने ये भी लिखा, इम्पीडेंस मैचिंग is very very important, breaking inertia or resistance to change. Impedance matching किस किस के बीच में? Between source is the teacher or the coach, and load is the student or the learner, is essential to minimize reflection and maximize knowledge transfer. यदि इसका मतलब यही है कि आपको विद्यार्थी के लेवल पर जाकर के पढ़ाना पड़ेगा ताकि वो सीख सके. टीचिंग, लर्निंग एंड इवैल्यूएशन की यदि हम बात करें, the vital and crucial academic activity of any educational institution require meticulous planning and responsible execution, chiefly through teamwork and coordination. NEP 2020 is talking about caring, sharing, and handholding, cooperation, collaboration, coordination, and that comes through a team. So teamwork is very, very important. Where any one of those receives inadequate attention, the other two may fall away, bringing the whole educational efforts to little or no value. यहाँ मैंने एक चेन दिखाई है आपको जिसमें एक रस्टेड लिंक है, because the strength of a chain is the strength of its weakest link. That is, we have to be equally strong on all fronts. And we need to understand this 4-quadrant model in which for the teaching and learning, there are 4 pillars of education: parents, students, teachers, and government. There are 4 types of education: physical, mental, intellectual, and spiritual. How the student learns? He learns 25% from the teacher, 25% from his own wisdom, 25% from his fellows, and 25% experiential. But what is happening actually? 100% हम किताबी ज्ञान से उसको सिखाना चाहते हैं. We hardly give the chance to the students to use their own wisdom. It is all spoon feeding. They hardly interact with their fellow students. Sorry to interrupt you, sir, but now your screen is not visible. From this slide? Sir, last 3 slides, sir. Okay, मैं दोबारा करता हूँ मैडम शेयर. Okay, sir. Stop sharing. ये आ गई मैडम? राइट सर, अब आ रही है. आ रही है? चलिए बहुत बढ़िया. अभी कर देते हैं. अब आ गई? राइट सर, आ गई सर. ये बड़ी बार क्यों नहीं इसमें फिनिश हो रही? ये वाली ये रहेगी. चलिए. Then I talk about the 4th quadrant, 4 stages of education, teaching, and learning. That is the information and theory gathering, which we are doing in the class. Then it is the deep awareness and the conduct and the propagate. They are very, very important. So we need, and the student also need to understand these all 4 quadrants. And for teachers, how I would use these? Being a great professor is an art and a science. Take 15 minutes a day to stay current, which is very, very important. What is the report? A World Development Report says that there is crisis of outcomes, crisis of quality, and crisis of values. And all these issues, they have been deliberated and discussed and highlighted in the NEP document, how to address these issues. अगर आपको वह फसल पसंद नहीं जो आप काट रहे हैं, तो उन बीजों की जांच करें जो आप बो रहे हैं. तो what are the seeds? Seeds are the facilities, the pedagogy, the andragogy, the type of environment which we are providing to the students in our higher educational institutions that we need to inspect. So due to this crisis of outcomes, the regulatory bodies, policy makers, domain experts, multilateral agencies, opinion makers, industry experts, academic leaders, teachers, सबके सुझाव लिए गए और सुझाव लेकर के उनको इनकॉर्पोरेट किया गया, क्योंकि इस पॉलिसी को कंसल्टेटिव पॉलिसी भी कहते हैं. बिकॉज द मैसेज वाज सेंट इवन टू तालुका लेवल. गांव से भी जो सुझाव आए, बहुत सारे सुझाव आए, उसमें जो उसमें डालने चाहिए थे वो सब उसमें इनकॉर्पोरेट किए गए. एंड अब आप देखें, आप कहीं भी जाते हैं, लो क्वालिटी, स्किल, एनईपी, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट, जनरेशन गैप, पाथवेज, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, इमर्जिंग स्किल्स, इन सब की बात करते हैं. बट इज इट न्यू टू अस? I think no, because Swami Vivekananda also talked about it long back. He said that education is in which the character is formed, strength of mind is increased, the intellect is expanded, and by which one can stand on one's feet.
मीन्स आत्मनिर्भर बन सके। जब ये सारी बातें इतना पहले विवेकानंद जी कह गए, जिस बात को आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी कह रही है, तो हमें ये देखने की जरूरत है कि जब हमारा इतना समृद्ध और सुदृढ़ इतिहास रहा है, जहां पर इन सब बातों की चर्चा भी होती थी, और नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला विश्वविद्यालयों की बात करें तो वहां पर इसको प्रैक्टिस भी किया जाता था, और वहां से निकलने वाले विद्यार्थी और उन्होंने जो कुछ लिखा, चाहे वो चाणक्य हैं, चाहे जो जीवक हैं, वो आज भी प्रासंगिक है। तो ऐसा क्या हुआ, उसको हमें फिर से समझना पड़ेगा, जिसको NEP 2020 में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। We clearly need to understand what is certification, what is qualification, what is skill, what is ability, what is quality, because there is very minor difference between this. Because NEP 2020 is talking about you have to start the skill enhancement courses, you have to start the ability enhancement courses, you have to start the quality enhancement courses, you have to start some vocational courses, career oriented courses. Unless we understand these terms minutely, then we cannot develop the course contents. So this need to be understand very clearly. This is the title page of the NEP document, 65 pages in English and 107 pages in Hindi. And it has already been launched in 29th July 2020. I hope that all of you has downloaded this document and you put it on your table and try to read it whenever you find time. If not, then I will make an appeal to all who are on board in this national seminar that please download it and read it, because unless you sensitize yourself to the issues, you cannot take a leap in achieving all those. This is some background. 2017 में कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, 29 जुलाई 2020 को इसको लॉन्च कर दिया गया. Now there is a steering committee who is making the curriculum for school education, early child care education, teacher education, adult education, and there are 5 foundational pillars. There is a change even from school level to college level, and the major changes from 10+2, now we have switched over to 5+3+3+4. If I talk about the main tenets of this policy, it is student centric, academic flexibility is there, choices are there, mobility, so that learners can choose their learning trajectories. क्यों इसको किया गया कि learners can choose their learning track? It was very tight bound. If a student want to do BSc physics in the present system, तो उसको physics, chemistry, math पढ़ना ही पड़ेगा. I know that in the later stages some optional papers were given like electronics or statistics, this and that, but if a student does not know physics, is he not eligible to do the BSc? In the present system, not. Don't you think that if he is very good in chemistry and math, getting so out of so, and in physics he is not able to clear, we have lost a good mathematician and chemist. So this policy, it gives a chance that the student can opt the subject of his or her own choice. Multiple entry exit option is there. This is a wonderful thing which has been done in this policy, because there sometimes the situation comes in the life of students that they have to discontinue their studies. And in the present system, they don't get anything if they don't complete the entire course. But now there is a provision that if he goes off after 1 year, certificate, 2 years diploma, and 3 years or 4 years, it is a UG degree. Now there will be no BA, BSc, BCom. It will be only undergraduate degree. Equal promotion of art, science, and physical education. And now there will be no extracurricular activities. Every activity is part of the curriculum. All activities will be curricular activities. Multidisciplinary approach across the science, social science, arts, humanities, and sports. No hard separations. And multidisciplinary and holistic education. MDC multidisciplinary courses, SCC skill enhancement, ability enhancement, and value added courses. Rigorous specialization, those who want to go to research, emphasis on conceptual learning, skill development, after diagnostic assessment, regular formative assessment for learning rather than the existing summative assessment. अभी हमारा जो सिस्टम है, बच्चा आता है, एडमिशन लेता है, पढ़ाते हैं और 4 महीने बाद कहते हैं कि भाई जाकर के एग्जाम में बैठ जाओ. But this NEP 2020 focuses on continuous regular formative assessment. Even a student, if you teach him a topic, he has to be assessed for that topic, whether he has actually learned it or not.
and it will be the prime responsibility of the teacher that he has to adopt the right kind of teaching skills that the student is able to learn. The integration of Indian knowledge system, which is a fantastic system, it has to be integrated with the prevailing one. Multilingualism, conceptual understanding, internalization, lifelong learning, use of technology. Yeah, it is very important. We have to use technology, but I say, friends, that let technology be an enabler. Don't be the slave of the technology. If we will be the slave of the technology, it will be very disastrous. Focus on outcome-based education. It also talks about the online distance learning. It is the purview of the university, but in the later stage, when every institution will be degree granting institution, they can have their own ways, academic bank of credit, and finally, higher education institutions coming forward for assessment and accreditation process, for which many of the institutions are not coming forward because they are afraid that they may get poor grades and that would be a stigma. But let me tell you, friends, that that is not a stigma. When you go for assessment and accreditation process, then many of the things are streamlined. You have a swag of your institution, and challenges you can take with a positive attitude, then they will become your opportunities. And once you achieve it, then that becomes your strength. So I will make an appeal to all the teachers coming from different institutions that take this message to your institution and talk your principals and directors that they should come forward for assessment and accreditation. With the unveiling of 2020, it is a momentum occasion in our country. And what it says, every child is a unique and bright child. तो जो हमारी कहने की आदत है कि ये बच्चा तो ऐसा है वैसा है, इसके साथ कोई काम करने का फायदा नहीं है, इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो सकती. We need to take it back because every child is a unique and bright. The point is that we have to break the inertia and we have to identify his hidden traits and his potential. Education curriculum must be able to help every child find his or her unique place. It should focus on holistic development, represent and promote their educational, social, economic and cultural interest, prepare them to compete globally. Feeling of patriotism, nationalism and secularism has to be there. And वो जो विद्यार्थी हमारे संस्था से निकलें, वो समाज उपयोगी हों. They can contribute in social development and national development. For that, what is expected from higher education institutions? Innovative and critical thinking, problem solving, awareness, understanding, analytical skill, effective communication and language skills, decent social interaction, spirit of helping, I to we. This is very important. We have to develop a feeling that it is not I, it is we. एनएसएस का जो मोटो है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजों में एनएसएस होता है, नॉट मी बट यू, वो ये कहता है मुझसे पहले आप. बट इट्स बेटर दैट वी से नॉट मी बट यू बट वी. एंड व्हेन वी चेंज फ्रॉम आई टू वी, इलनेस बिकम्स वेलनेस. सो someone has rightly said that no one of us is as strong as all of us. And when we say that we is important, W-E-V is important, then the morals of the story also change. Now the concept of the hair and tortoise story has changed. We have to use the skill. Only hard work may not work all the time. जब पैदल चलना है तो खरगोश पर कछुआ बैठ सकता है, तेजी से दौड़ेगा, और जब पानी में से जाना है तो खरगोश के कछुए के ऊपर खरगोश बैठ सकता है ताकि पानी में से जल्दी से निकल जाए. So to accomplish the given work fast and efficiently, we have to use the skills, not only hard work, because hard work may not work all the time. We should do smart work. मैं कई बार लोगों को बताता हूं कि अब जो थर्स्टी क्रो की कहानी है, उसमें उसको बार बार कंकड़ पत्थर डाल के पानी ऊपर लाने की जरूरत नहीं है, because that is very hard work. What the crow will do, he will go to market, will take a straw, put it in the pitcher and drink water and fly away. That is what is smart work. Responsible citizens हो वो, accountable हो, uprightness हो, अपने बात कह सकें, environmental enrich, self-directed lifelong learning, holistic development. Everybody is talking about the समग्र विकास बच्चों का, integrated and holistic development. It includes the intelligence quotient, जो हम किताबी ज्ञान जो बच्चों को देते हैं, moral quotient, spiritual quotient, physical quotient. Ignorance quotient is also very important, emotional quotient,
entrepreneurial quotient and environmental quotient. So we need to develop all quotients of the students so that they are holistically developed. Experimental research facilities we need to provide. Experiential learning is very, very important. Sometimes people say कि arts में experiential learning क्या होगी? You can send your students to some historical buildings wherein they can just collect the data from the literature and prepare the reports. That is also experiential learning. Think globally, act locally, be vocal for local. And we have to develop a feeling among the students where they should feel that education is not for living, but for life. And as I told you, let technology be an enabler. Don't be slave of the technology, because recently, you know, ChatGPT पूरा विश्व में उसने हल्ला मचा के रख दिया है. And you know, whenever some technology come, there are two schools of thoughts. One favors, one opposes. But definitely, जैसे फ्रांस में उसको बैन कर दिया गया है, तो it is a big challenge, and we need to use the technology with utmost caution. So no doubt the NEP is ambitious and futuristic for radical transformation of job seekers into job creators. But much of its success depends on its execution, friends. This is very important. The execution of NEP in true spirit will make the Indian youth accelerated and efficient for creating value to other people based on the knowledge acquired by them. And this will further fuel deep learning and illustrate the practical relevancy of the education system. To conclude, NEP aims to usher producing prolific, productive, and contributing citizens for building an inclusive, equitable, and self-reliance India. ये एक्सपेक्टेशंस हैं एनईपी की. अब आपके सामने दो ऑप्शंस हैं. हिंदी में तो दोनों एक ही हैं, भाग लो या भाग लो. But in English, it is run away or participate. As a teachers at institution, we cannot run away. Ultimately, we have to participate. And the national education policy change the education system in India, and the aim of assessment is regular honi chahiye, formative honi chahiye, competency based, active learning, and higher order skills. We need to find out whether all these components are inbuilt in the students who are coming out as a graduates or postgraduates. See this example. Add 2 matchsticks to make 3 squares. Give it to the student. The student athletes will think for 1 or 2 seconds. Some of them will do it. And it is very simple, like this. So we have to give them the examples so that creativity, critical thinking, problem solving, visualization, hearing, and idea generation occurs. देखिए एक छोटी सी लाइन है, ये पढ़ो तो जाने. थोड़ा सा समय लगाएंगे स्टूडेंट. पढ़ाई जीवन का आधार है. But you are compelling the student. You are asking the student to think. And that is the prime motive of NEP 2020. The key policy announcements: choice-based learning, 4-year multiple disciplinary UG courses, academic bank of credit, focus on experiential learning, internships, blended mode of learning, emerging areas like artificial intelligence, machine language, breaking the silos. जो आप BA, BSc, BCom की बात कर रहे थे, वो अब नहीं रहने वाला है. Evaluation process and reforms, development inducing feedback. Feedback is very, very important. Either it is from the student, teacher, alumni, employer. And after taking the feedback, you have to analyze, you have to take the action, and you have to upload it on the college website. Evaluation process has to be very, very innovative. Achievement of critical learning outcomes, enhancing the competence of students, regulatory mechanism for prompt action on possible errors. This is very important. And testing to focus on achievements of essential learning outcomes. अब ये सब कुछ हो गया है, सारी बातें हो गई हैं. अब इश्यू ये है कि सक्सेस किस पर डिपेंड करेगी. तो इट्स सक्सेस डिपेंड ऑन इट्स इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन. Otherwise, it will just remain as a vision document. Let us hope that it will be implemented in the same spirit that it is penned down. इसका वही हाल ना हो जो 68 और 86 वाली पॉलिसी का हुआ, या जो कोठारी कमीशन ने रिकमेंडेशन ने उसका हुआ. क्योंकि विचार और योजना कितने ही उत्तम क्यों ना हो, जब तक व्यवहार में नहीं आते तब तक उनका कोई महत्व नहीं होता. Now, who bears the honors of its success? Answer: of course, the teachers. Are they really prepared? Are they equipped? Are they recognizing self-esteem and self-directed learning? So your talent determines what you can do. This is dedicated to teachers. Your motivation determines how much you are willing to do, and your attitude determines how well you do it.
So your talent, your motivation, and your attitude will collectively decide the implementation of NEP 2020. And from the institution point of view, the institution should have perspective plan, the development plan, and strategic plan with defined timelines. NEP implementation, 7A and 4I model: anticipate, accustom and acclimatize, adopt, adapt, absorb, adapt. Then it makes the intent. And once there is an intent, you can innovate, you can invent, and you can implement or execute. But for that, you have to make a resolution. और resolution भी कैसा हो? Strong steel resolution, जिसमें संकल्प हो और विकल्प ना हो. विकल्प रहित संकल्प और संपूर्ण समर्थन से ही हम NEP 2020 को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. Those who do not sweat on time, ये म्यूट कर दो मैडम, कोई बोल रहा है. मैडम ये कोई बोल रहा है, प्लीज उनको म्यूट कर दें आप. थैंक यू. Those who do not sweat on time, क्योंकि पसीना बहाना पड़ेगा. इसकी इंप्लीमेंटेशन के एस्पिरेशन चाहिए, डेस्पिरेशन चाहिए, इंस्पिरेशन चाहिए और परस्पिरेशन चाहिए. But those who do not sweat on time have to shed tears later. So the choice is ours as teachers, that whether what we want to sweat on time or we have to repent at a later stage. But I say that policies are indicative. वो आपको destination दिखाती हैं, रास्ता आपको खुद बनाना है. Their effective implementation depends upon many things. Teacher taught relationship, unraveling 100% potential of every student. ये कोर्सेज आपको चलाने हैं. माइंडसेट आपको चेंज करना है. पेडागोजी से आपको एंड्रेगोजी पे जाना है. पेडागोजी इज लर्नर टीचर सेंट्रिक एंड एंड्रेगोजी इज लर्नर सेंट्रिक. तो हमें लर्नर सेंट्रिक रहना है. मास्टरिंग द फंडामेंटल कंसेप्ट, असेसमेंट, ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स, improving the IQ, and intent to execution, because knowledge is silver and action is gold. So action, timely action is very, very important. We have to educate, encourage, enlighten, empower, and make the students employable, which is very, very important. And I personally believe that education is all inclusive, but excellence is always exclusive. Best practices you have to identify from various institutions, then you have to imbibe, initiate, investigate, implement, internalize, institutionalize. Then you have to study the impact analysis, and finally the dissemination of best practices. And as a leader of the institution, you should know what, why, when, whom, where, and how. इन सब प्रश्नों का उत्तर यदि आपके पास है तो आप बेस्ट प्रैक्टिसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. यस मैडम. हेलो. यस मैडम, बताइए, कुछ कह रही हैं आप? डोंट बी पार्ट ऑफ द क्राउड, क्योंकि किसी ने ठीक कहा है कि भीड़ का हिस्सा बनोगे तो भीड़ बन जाओगे. तो यू हैव टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ. एंड हु इज अ सक्सेसफुल पर्सन? वन हु कन्वर्ट्स हिज सिग्नेचर इनटू ऑटोग्राफ. तो ए फीलिंग ऑफ यू टू वी, I to we has to come, and together everyone achieves more. None of us is as strong as all of us. And when you work in a team, so someone has rightly said, together everyone achieves more. So team spirit has to be there, and there has to be an integrated and holistic approach. Output से outcome की तरफ जाना है, quantity से quality की तरफ जाना है, और academic development से holistic development की तरफ जाना है, जिसमें knowledge, skill, capacity, competence और जीवन मूल्य विद्यार्थियों में हो. किसी ने ठीक कहा है, नियत और नीति मिलाकर नियति बनती है. तो यदि हमारी नियत ठीक है, नीति तो ठीक है ही है, आ ही चुकी है, तो नियति भी निश्चित रूप से ठीक होगी, ऐसा मेरा मानना है. NEP 2020 आ चुकी है, देश में बदलाव की बयार है. द विंड ऑफ चेंज इज ब्लोइंग इन द एंटायर कंट्री. नाउ द चॉइस इज yours, whether you want to find the shelters or you want to make the windmills. I think we as teachers, no one will be different from the opinion that we as teachers have to make the windmills. But what actually is happening, that if we were left to us, we would all stay safely inside our comfort zone, and we cannot become what we need to be by remaining what we are today. क्योंकि महात्मा गांधी जी ने भी कहा, be the change you wish to see in the world. So there is a strong need to these challenges be addressed uniquely. What is happened? NEP 2020 wants a change.
And when you want to make a change, it poses you challenge. And when you come over the challenge, it becomes an opportunity. So do not limit your challenges, rather challenge your limits. Someone has rightly said, and someone has to take the lead. जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है. अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर जमीन, अभी तो नापने के लिए सारा इंसान आसमान अभी बाकी है. तो we have to build the attitude, we have to think out of the box, and we have to develop the ecosystem. सब कुछ लोग कहते हैं कि पूरे सिस्टम पर प्रेशर आ गया है. NEP-2020 is putting a pressure on the system. By friends, don't take it as a pressure, please take it as a pleasure. यदि आप खुशी के लिए काम करेंगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन यदि आप खुश होकर के काम करेंगे तो निश्चित रूप से खुशी मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है. अब आपके ऊपर बाहर से प्रेशर डाला जाए कि आप काम करें, या अंदर से खुद आप प्रेशर लें कि हमें काम करना है, तो दिस फिगर क्लियरली इंडिकेट्स that if the pressure is from outside, life ends, and if the pressure is from inside, life begins. So great things always begin from within. So you have to take this call. This is important. Either use it or lose it. If you don't use your brain, you don't use your knowledge, you lose it. So try to use your knowledge, use your brain. किसी ने कहा है, कहीं लिखा रहता रोटी जली क्यों, पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, तो जवाब एक ही था, जापना फेरा ना था. तो unless we revise, the things become rotten. वर्तमान स्थिति को हमें देखना चाहिए, इंडस्ट्री के हिसाब से सिलेबस बनाना चाहिए, सिलेबस रेगुलरली हमें चेंज करना चाहिए, पढ़ाने के हमें तरीके बदलने चाहिए, और एक जैसी पढ़ाने की पद्धति सब पर लागू नहीं हो सकती. That as a teacher we have to evolve, and the syllabus we need to change. The syllabus has to be locally need based, socially relevant, nationally important, and globally significant, which is very important. And now, as far as the regulation is concerned, there will be one HECI, Higher Education Commission of India, with 4 verticals: NHERC for regulation, NAC for accreditation. In the time to come, NEC will not be the only assessment and accreditation agency. There will be multiple accreditation agencies in the country. फंडिंग के लिए HEGC एंड एकेडमिक स्टैंडर्ड सेटिंग के लिए जर्नल एजुकेशन काउंसिल GEC. ये स्लाइड में आपसे जरूर साझा करना चाहता था कि खाली जो कोर कंपोनेंट्स जो हम बच्चों को पढ़ा देते हैं उससे काम चलने वाला नहीं है. फॉर एग्जांपल, इन 3-year UG there are 120 credits. 1 credit is equivalent to 15 hours of direct teaching in a semester, if it is a tutorial or theory class, and in practicals they take 30 hours. This we need to understand. So we have to have the major, we have to have the minor, multidisciplinary, then ability enhancement, skill enhancement, value added, summer internships, and projects and dissertation. If you are opting for 4-year UG, only then you will go for research and dissertation. Otherwise it ends up with the summer internship. So this is very, very important. Now वो काम चलने वाला नहीं है कि हिस्ट्री, पोल साइंस, हिंदी, इंग्लिश ले लो. आपको सिलेबस डिजाइन करने पड़ेंगे, और वो सिलेबस टीचर से अच्छा कोई डिजाइन नहीं कर सकता. बट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एबिलिटी, व्हाट इज स्किल, व्हाट इज वैल्यू एडेड. दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड. एंड फॉर दैट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को क्या करना है? ट्रेनिंग द ट्रेनर्स एंड मेंटर्स by organizing FDPs so that they have the exposure, domain knowledge, technology, attitude, and mindset. And faculty development. And friends, faculty is not the physical body. It is the attitude of a person, mind, intellect, thinking, heart, and soul. Innovation and critical thinking is important, and research orientation. This is a very good slide wherein you have to decide that whether we want to give them the material knowledge, which will give them the great lifestyle, or you want to give them the spiritual knowledge, which will give them great life. And there is a lot of difference. Great lifestyle wala आदमी stressed, depressed, oppressed रहता है, but still well dressed. But if it is a great life, it is very simple, it costs nothing, and self-maintained. Great material knowledge उनको quantity देती है, spiritual knowledge quality देती है. So this we need to understand whether we want to go on the right hand side slide in which there is great lifestyle, quantity, prove to the world, go through the life or information, और अरे भाई इनको म्यूट कर दीजिए प्लीज जो हैं.
or you want to have the great life quality, you want to improve, you want to grow through the life and you want transformation. क्योंकि यदि ग्रेट लाइफस्टाइल है तो धन इकट्ठा आप करेंगे, धन इकट्ठा करेंगे तो लास्ट में आपको विल बनानी पड़ेगी, और ये विल जो आदमी बनाता है तो फिर झगड़े होते हैं। और यदि आपकी ग्रेट लाइफ है, क्वालिटी है, ट्रांसफॉर्मेशन है, तो आपकी गुड विल बनती है। तो एज ए टीचर एंड इवन एज ए स्टूडेंट यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू मेक द विल और द गुड विल। नाउ द पैराडाइम है चेंज फ्रेंड्स। पहले आप कंटेंट बनाते थे, फिर असेसमेंट होती थी, फिर आउटकम्स की बात करते थे। अब विद्यार्थी आपसे आते ही पूछता है कि मैडम सर मैं ये पढ़ूंगा तो मैं क्या बनूंगा? तो यू हैव टू डिफाइन द लर्निंग आउटकम फर्स्ट, एंड वो लर्निंग आउटकम वो अचीव करे उसी तरह के असेसमेंट मेथड आपको लगाने पड़ेंगे और उसी तरह का आपको कंटेंट डेवलप करना पड़ेगा। मींस अध्यापकों को बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है चीजों को समझने के साथ साथ। एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग, नॉट असेसमेंट ऑफ लर्निंग। लर्निंग की असेसमेंट नहीं, लर्निंग के लिए असेसमेंट आपको करनी है। दिस इज ऑल्सो ए बिग ट्रांजिशन। और ये स्लाइड बहुत अच्छी है, आप देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, क्योंकि एनईपी 2020 असेसमेंट की बात करती है। असेसमेंट इज टू इंक्रीज क्वालिटी। एक व्यक्ति है, छोटा सा पौधा है, पानी दे रहा है उसको, बिकॉज द पर्पज इज टू इंक्रीज द क्वालिटी। एंड व्हेन यू कम टू इवैल्यूएशन, देखिए हाथ बांध के खड़ा है, कह रहा है टू शॉर्ट एंड नॉट एनफ लीव्स, मीन दे जस्ट फाइंड द डिफेक्ट। तो वी need not to find the defect in the students, we have to increase the quality. And self assessment is also very important, in which the student खुद स्वयं से पूछता है what did I learn today, what were my contribution in class, what do I need help with, what do I want to know more about, what would you do differently if you took this class again, any feedback response to the teacher. Leadership, he has to have a choice, clarity, conviction, commitment and courage. और जो लीडर्स हैं, एकेडमिक लीडर्स हैं, मैडम किरण भी बैठी होंगी, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सुरक्षा का, स्वाभिमान का, स्वावलंबन का, सुशासन, ये हमें प्रोवाइड करना चाहिए। और जो हमारी एफर्ट्स इंस्टीट्यूशन में हैं उसमें टेंजिबल चेंजेस होने चाहिए, मतलब आपको वो परिवर्तन नजर आना चाहिए, तभी आप कह सकते हैं कि आप एफर्ट्स करती हैं। Why do we go for assessment, accreditation, audit and evaluation? जो NEP का इंटीग्रल पार्ट है, तो उससे आपको ये पता चलता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आपको पता है, और आपको इम्प्रूव करने के लिए फर्दर क्या करना चाहिए। फोकस ऑन क्वालिटी का असेसमेंट का ये भी पर्पस है, फोकस ऑन क्वालिटी, सेल्फ इवैल्यूएशन, मोर रोबस्ट, ऑब्जेक्टिव, ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। नेक का भी सिस्टम है, आपको पता है। नेक मॉडल ऑफ क्वालिटी, ये मैं सारे अध्यापकों से साझा करना चाहूंगा कि IQAC जो कॉलेज में होता है, इट इज जस्ट लाइक ए नेस्ट। और जैसे आप देखिए ये सारे पक्षी अच्छा अच्छा तिनका छांट करके ला करके नेस्ट बनाते हैं, इसी तरीके से बड़े खुले मन से अध्यापकों को जो उन्होंने एक्टिविटीज की हैं, जो कन्वीनर्स हैं, जो इंचार्जेस हैं, वो सभी एक्टिविटीज का डाटा IQAC के कोऑर्डिनेटर्स को प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि वो एक अच्छा सुंदर सा घोंसले के रूप में बना सके। मींस जो AQR आप अपलोड करते हैं हर साल के बेसिस पे, उसको मैक्सिमम डाटा उसमें जा सके। अदरवाइज रियलिटी ये है कि सिचुएशन काफी खराब रहती है। और यदि if you have a good internal quality assurance system and cell, then you see this picture, it is very encouraging that even cat can look like a lion. So this is very important and it depends on the IQAC system. लोग कहते हैं कि भी NEP तो आगे NEC क्या कर रहा है, तो NEC has already taken a leap and there are some mandatory questions when you go for AQR submission. You have to reply to these 6 questions कि आपके इंस्टीट्यूशन ने मल्टीडिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी के लिए क्या किया है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, स्किल डेवलपमेंट, एप्रोप्रिएट नॉलेज, फोकस ऑन आउटकम बेस्ड एजुकेशन एंड डिस्टेंस एजुकेशन और ऑनलाइन लर्निंग के लिए क्या। यू हैव टू रिप्लाई, इट मींस ऑटोमेटिकली यू हैव टू स्टार्ट द प्रोसेस। एंड दे आल्सो टॉक अबाउट द इलेक्टोरल लिटरेसी के लिए आप क्या कर रहे हैं। So you cannot say that NEC has not done anything. They have already taken the leap and they have already put some mandatory questions when you submit the AQAR. Now, मैंने बहुत सारी चीजें बताई, but there are challenges also. Challenges not before the NEP. Challenges are before us as a faculty members, as a promoters, as a academic leaders, as higher educational institutions. So these are some of the challenges which we are facing, but if we make up our mind, we have the right kind of ecosystem attitude, then we can come
out of it, and we can implement the NEP 2020 in the time to come. It may take time, but it should be implemented in letter and separate. ये मैंने एक slide लिखी है कि हम we always try to find the perfection. Friends, perfection is not achievable. If you will chase perfection, you may get excellence. But I tell you, perfection and happiness are illusions. I took this slide from, there is one assistant advisor, Priya Narayan in NEC. She showed somewhere this slide. I liked it. I just took it from her. Perfection और happiness illusions हैं. जैसा इसमें लिखा है, आप देख रहे होंगे. कुमारा कहता है तकदीर है मगर किस्मत नहीं खुलती, ताजमहल बनाना चाहता हूं मगर मुमताज नहीं मिलती. प्रेमी कहता है तकदीर है मगर किस्मत नहीं खुलती, मुमताज मिल गई पर शादी नहीं करती. शादीशुदा कहता है तकदीर है मगर किस्मत नहीं खुलती, ताजमहल बनाना चाहता हूं मगर मुमताज नहीं मरती. तो जो आदमी की इच्छा है वो एंडलेस है. एंड समटाइम्स परफेक्शंस आर इल्यूजन्स. लाइकवाइज इन इंस्टीट्यूशंस, बेंचमार्क पता नहीं तो ग्रेड नहीं मिलती. हम कहते थे बेंचमार्क्स तो पता ही नहीं है, कितनी इवेंट्स करानी है, कैसे करानी है, तो डरते थे, असेसमेंट नहीं कराते. और ग्रेड नहीं मिलता तो रूसा की ग्रांट नहीं मिलती, और रूसा की ग्रांट नहीं मिलती और मिल जाए तो खर्च नहीं होती. तो प्रॉब्लम्स हैं हमेशा. देयर आर एंडलेस प्रॉब्लम्स, बट नाउ द नेक हैज मेड इट वेरी ट्रांसपेरेंट इन क्लियर. मैट्रिक्स को घटा दिया है. बहुत ईज ऑफ असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन इज देयर. ओनली 56 मैट्रिक्स आर देयर एंड बेंचमार्क्स आर इन पब्लिक डोमेन. तो ना अपग्रेड लेना भी कोई मुश्किल काम नहीं है. काम यह है कि आपको शिद्दत से आपको काम करना चाहिए. किसी ने कहा है कि इतनी शिद्दत से निभाओ किरदार अपना कि पर्दा गिर भी जाए तो तालियां बजती रहें. ऐसा हमें करना पड़ेगा. और मैं आपको ये बता दूं, देयर आर नो सीक्रेट्स टू सक्सेस. इट इज द रिजल्ट ऑफ प्रिपरेशन, हार्ड वर्क एंड लर्निंग फ्रॉम द फेलियर. व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड. Implementation of NEP 2020 and NEC assessment and accreditation can neither be cured nor be avoided. It is compulsory. हमें करना ही पड़ेगा. We have to endure it. So the best way to prepare for assessment is to read, understand and implement the concepts and requirements of NEC and NEP. I am aware that preparing for it, अरे मैडम म्यूट हो जाइए, आप खुद ही कौन ये बोल रही हैं. I am aware that preparing for it like pulling the mammoth chariot of Lord Jagannath. मुश्किल काम है, मैं मानता हूं, आप भी मानते हैं. Only the VC or principal cannot do it. Each and every stakeholder has to extend their hands for comprehensive preparation. True involvement and honest approach are the only way to get it. Satisfaction and preparation alone are the proper ways. तो आपने ये अच्छे से सुना और मेरी बात को आपने सुना होगा निश्चित रूप से. तो मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं यहाँ कोई आपको उपदेश देने नहीं आया हूं. मैं केवल आपसे ये कह रहा हूं कि NEP 2020 आ चुका है. ये हमारे हित में है, देश के हित में है, विद्यार्थियों के हित में है. तो हमें इसको पढ़ना चाहिए. पढ़ करके हमें अपने आप को सेंसिटाइज करना चाहिए और फिर उस पर काम करना शुरू करना चाहिए, क्योंकि लगभग 3 साल इसको अब हो जाएंगे. और मैं समझता हूं कि छोटा छोटा प्रयास, क्योंकि जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद ए सिंगल स्टेप, समवन हैज राइटली सेड. तो सब लोग कर ही रहे होंगे. और इस तरह के सेमिनार्स का जो आयोजन है, जैसा डॉक्टर किरण आंगरा जी ने अपने महाविद्यालय में किया है, इससे जो सरकार की और जो नीति निर्धाताओं की जो एक सोच है उसको एक बल मिलता है और लोग अपने अपने इंस्टीट्यूशंस में जाकर के अपना काम करते हैं. ऐसा मेरा मानना है. एक बार मैं पुनः डॉक्टर किरण आंगरा जी का, जो प्राचार्य हैं इस महाविद्यालय की और इसकी कन्वीनर, को कन्वीनर, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे जो कुछ भी अल्प ज्ञान मैंने 34 साल के अपने इस करियर में लिया है वो आपसे साझा करने की कोशिश की है. धन्यवाद. जय हिंद. Thank you very much, sir. We really welcome you. We know you. You are one of the dynamics in Haryana. But sir, we want to know one thing from you. How the M.D. University or your college has thought of starting this, from which session you want to start, and sir, what are the measures you have taken? क्या framework है sir college का? अगर options जो आप flexibility in curriculum दे रहे हैं sir. मैडम, यस, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया. मेरी विश्वविद्यालय के कुलपति से बात हुई थी. तो कुछ चीजें तो इसमें ऐसी हैं जिसमें हमें विश्वविद्यालय की इंतजार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो फंडामेंटल चीजें हैं उसमें जहाँ यूनिवर्सिटी का कंट्रोल है वो विश्वविद्यालय को ही करना है. तो
विश्वविद्यालय हमारा अब बहुत तेजी से इस पे काम कर रहा है और उन्होंने फैकल्टी वाइज कुछ कमेटीज बनाई हैं। मैडम जरा प्लीज देखिए कौन बोल रहा है, प्लीज म्यूट कर दीजिए। अगर आपके यहाँ सिस्टम कहीं चल रहे हैं तो उसे बंद कर दीजिए प्लीज। डॉक्टर मोनिका, कैन यू प्लीज म्यूट योर सिस्टम? हाँ प्लीज म्यूट योर सिस्टम मोनिका। थैंक यू। तो अभी वो सारा का सारा कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ पे बहुत सारी मीटिंग्स यूनिवर्सिटी में हो रही हैं और जो मैसेज यूनिवर्सिटी से आया है कि जो कमिंग सेशन है 2023-24, हाँ जी सर, इससे हम फर्स्ट ईयर में इम्प्लीमेंट करें। हाँ जी सर, ओनली इन फर्स्ट ईयर दे आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट। सर उसमें कर कैसे रहे हैं सर? व्हाट इज द पैटर्न, क्या फ्रेमवर्क क्या है सर? फ्रेमवर्क अगर मैंने सपोज किसी कॉलेज के पास आर्ट्स एंड कॉमर्स है तो वो सर क्या कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट सोच रहे हैं? क्योंकि हम सब जान रहे हैं सारे लोग जो यहाँ आज सेमिनार में बैठे हैं सर, वो बहुत इच्छुक हैं अब इस फ्लाइट के ऊपर चढ़ने के लिए। आपका एक क्वालिटी का जहाज आया था जब आप एक पिक्चराइज कर रहे थे, शेयर कर रहे थे अपनी स्लाइड, तो ऑल ऑफ देम आर वेरी मच इंटरेस्टेड एंड दे आर रेडी टू फ्लाई। पर सर प्रॉब्लम ये है कि फ्रेमवर्क कैसा बनाया जाए, किस मुद्दे पे सोचा जाए, क्योंकि यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने 31 मार्च लास्ट डेट दी है टू स्टार्ट एनी न्यू सब्जेक्ट। न्यू सब्जेक्ट आप कैसे सोचोगे स्टेज पर? तो दिस इज द पॉइंट, व्हाट इज द फ्रेमवर्क? मैं मैडम ये कह रहा हूँ कि जो यूनिवर्सिटी का डोमेन है दैट हैज टू बी डन बाय द यूनिवर्सिटी, बट आई कैन टेल यू व्हाट वी कैन डू एट द कॉलेज लेवल। राइट सर, आई शोड यू वन स्लाइड जिसमें मेजर और माइनर कंपोनेंट की जो बात है, 4 सब्जेक्ट्स की जो बात है, वो तो दैट हैज टू बी डिसाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी। आई कैन नॉट डू एनीथिंग, बट एज फार एज रिगार्डिंग द स्टार्टिंग ऑफ द एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज एंड स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज एंड वैल्यू एडेड कोर्सेज, जिनके भी मेजर कंपोनेंट्स बनने वाले हैं, क्रेडिट्स बनने वाले हैं, उसमें यू कैन स्टार्ट ऑन योर ओन, बट हियर देयर इज अ डिफरेंस। पहले हम खुद शुरू कर लेते थे और यूनिवर्सिटी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था। अब बिकॉज दे आर आल्सो क्रेडिट बेस्ड, तो whatever syllabus you will make, you will get it approved from the university and the credit will be decided by the university. अभी एजुकेशन पॉलिसी कह तो देती है कि भी स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन होगा, डिग्री ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशन होगा, कंप्लीट ऑटोनॉमी होगी, बट इट इज, ये तो छुपा हुआ है भविष्य के उसमें कि क्या होने वाला है। बट आई थिंक दैट ऑनेस्टली द यूनिवर्सिटीज आर वर्किंग ऑन इट। मैंने कहा भी था कि भी पूरे हरियाणा में सारी यूनिवर्सिटीज मिलके एक ही पैटर्न पे क्यों नहीं काम कर रही हैं? जैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी क्लेम कर रही है कि उन्होंने सारा कुछ तैयार कर दिया है और दे आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट। मैंने यही एग्जांपल देके अपने कुलपति महोदय को कहा, मैंने कहा सर हम कहाँ चल रहे हैं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी तो काफी कर चुकी है। तो उन्होंने कहा वो सब तैयार है गुप्ता जी और जल्दी हम इसको अपनी वेबसाइट पे डालने वाले हैं। तो जो डोमेन यूनिवर्सिटी का है अभी तो वो तो यूनिवर्सिटी ने ही करना है, जब उनका आएगा जब ही हम करेंगे। बाकी कुछ चीजें इसमें ऐसी हैं जो हम अपने लेवल पे शुरू कर सकते हैं एंड वी कैन claim as far as the NEC assessment and accreditation is concerned and other assessment part is concerned that whatever is in our hands that we have already started. उसमें जो मेजर कंपोनेंट है वो वैल्यू एडेड, एबिलिटी एनहांसमेंट, स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज वाला है। आप उनको डिजाइन करें। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बहुत लंबी लिस्ट डाल दी है। ये जो पैटर्न मैंने दिखाया है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैंने दिखाया था आपको, जिसमें 120 क्रेडिट्स फॉर 3 इयर्स यूजी कोर्स के हैं और एक सेमेस्टर में 20 क्रेडिट्स का चलेगा। तो ये सारा मुझे लगता है कि आपका अप्रैल तक, मई तक आ जाना चाहिए हमारी यूनिवर्सिटीज का भी। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें खुद ही इवॉल्व करनी है अपने इंस्टीट्यूशन में एज पर आवर रिसोर्सेज। जैसे इंडियन नॉलेज सिस्टम की हम बात करते हैं तो व्हाई कांट वी थिंक ऑफ स्टार्टिंग ए वैदिक सर्टिफिकेट कोर्स इन वैदिक मैथ्स। तो इस तरह की जो थॉट प्रोसेस जो है वो हमें खुद डेवलप करना पड़ेगा। And why can't we start a course in certificate course in teachings of Gita, certificate course in yoga, certificate course in stress management. तो इस तरह के जो कोर्सेज हैं जो which will help the students in their holistic development also, तो इस तरह की प्लानिंग हम कर सकते हैं। अब ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, अभी हम भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इंडियन नॉलेज सिस्टम का इंटीग्रेशन है, कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज आपको शुरू करने हैं, दैट ऑल यू कैन डू। अभी जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर एबीसी है, अभी कुछ नहीं, हमारी यूनिवर्सिटी होगी फिर हमें पावर देगी तो हम करेंगे। तो समटाइम्स यूनिवर्सिटी आल्सो हैज टू बी वेरी लिबरल एंड गिव परमिशन इन ए टाइम बाउंड मैनर। करेक्ट। जैसे मूक्स के लिए हम जाना चाहते हैं तो उसमें एक एनओसी यूनिवर्सिटी से लगता है,
अब यूनिवर्सिटी कई बार बहुत समय तक परमिशन नहीं देती है, तो टीचर डिमोटिवेट हो जाते हैं। So this has to be taken in a wider perspective, and it is a two-way process कि यूनिवर्सिटी भी उतना ही कोऑपरेट करे और आगे चले बढ़ के, और हम लोग भी यूनिवर्सिटी के साथ उतना ही कोऑपरेट से आगे चलें। मुझे लगता है कि चीजें हो जाएंगी। Yes. Sagarwal College is a leading college of MD University, और आप एक बहुत ही known MD University के एक pillar हैं. So that's why we thought what is the face of the MD University. दूसरा कि अग्रवाल कॉलेज किस तरह आगे बढ़ रहा है, इसलिए ये प्रश्न आपको था सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। बहुत इंफॉर्मेटिव टॉक थी, विद द वेरी ब्यूटीफुल, वी नो यू वेल। ऐसा नहीं कि हमारे लिए आपका लेक्चर फर्स्ट टाइम था, बट आई होप यहाँ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के लोग इस प्लेटफॉर्म पे आज हैं। They would have been very happy to see you and your talk, and they must have relished the thoughts which you have shared, sir. Thank you, madam. Thank you. Thank you. आपका आदेश था तो आना ही था सर। आप तो हमारे फर्टर्निटी के एक डायमंड हैं सर। So nice of you, ma'am. Thank you. Any other questions somebody wants to ask? Yeah, sir. I am. Yes, ma'am. I have a question. One you can take them, please. Yeah. I am from Government College Sector 1 Panchkula, sir. Vinita Gupta. जी नमस्ते विनीता जी। नमस्ते सर। नमस्ते। ये बाकी लोगों को म्यूट कर दो जरा प्लीज, फिर वो डिस्टरबेंस हो जाती है। तो आपका लेक्चर था बड़ा ही जैसे लिटरेरी टचेस के साथ और शेरो शायरी, बड़ा जोशीला जिसे हम कह सकते हैं। एवरीथिंग वाज देयर, नॉलेज अबाउट NEP आल्सो, बट एक जो मैं आपसे थोड़ा सा डिसएग्री करती हूँ, या थोड़ा सा जो आपकी चीजें थी उसमें मैंने जहां तक ऑब्जर्व किया, ये जो डिसएग्री वर्ड है ना मैडम, ये डिसएग्री जो वर्ड है जी, ये ठीक नहीं है। बट आप अपना विचार दें, डिसएग्री किसी से होना नहीं चाहिए। नहीं, जो आपने, बिकॉज आई एम जस्ट गोइंग टू रिएक्ट इन whatever you have said there. जी आप that is in the reaction of that is in the reaction of that देखो मैं एक चीज बताता हूँ आपको, सॉरी टू इंटरप्ट। रिएक्ट कभी करना नहीं चाहिए, ऑलवेज वी नीड टू रिस्पॉन्ड, क्योंकि जब भी हम रिएक्ट करते हैं ना तो रिएक्शन में कुछ का कुछ हो जाता है, और और जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं ना तो बहुत अच्छे से करते हैं, बढ़िया से करते हैं, एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच अदर। तो आपके विचार का स्वागत है। जो मेरा विचार था मैंने साझा किया, अब आप अपना विचार साझा कीजिए। वनीता जी, सर जो हैं वो फिजिक्स से हैं और वो विश्वास करते हैं रेजोनेंस पर। रेजोनेंस तब होती है जब दोनों क्रेस्ट मिल जाएं तो बेटर रहता है। तो इसलिए सर ने रिस्पांस की बात करी, बिकॉज ही बिलीव्स कि वाइब्रेशन शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। मैंने इम्पीडेंस मैचिंग की बात भी मैंने की। So, madam, we welcome you, please. On a positive note, I should start here. Yeah, please. It was a very good and exciting, I can say, lecture. Please. And we have felt great inspiration from it also. But one thing is there that I can say that in the end you have said that this is a two-way process. But I can say that it is a multi-way process. Only the teachers, you have said that onus of all of these things lies on the teachers, but teachers single-handedly cannot do anything unless and until the students are themselves motivated, because in the colleges we have the students who come after 18 years of age almost, and they have learned a lot from their schools, their social environment, their family's environment. Unless and until the parents are educated, parents are motivated regarding this NEP and this project and its goals and its values, and the students are motivated at the lower level, the teachers at the college level cannot do much in this sense, because we are in a government college here, as you have cited here also, that the teacher take excuses regarding the rural background of the students. So this is not an excuse, this is a practical problem, because the students here, they come from poor financial backgrounds, and they want some sort of financial support. That is, they go for earning or some
some low income, low paying jobs also while doing their studies. So we have tried our best. I have 27 years of experience from South Haryana to this Panchkula college also. I have seen students everywhere, and because being a government college, I have seen, I had been to a private college also, just like your private college. It was West College Bhiwani. I had an experience of that college also. I have seen a difference in the socio-economic status of the students in both these colleges, like private and these government colleges. So we can say that socio-economic background of the students matter a lot, and we have to spread this awareness at the grassroots level also regarding this NEP. Only then it will be successful. Because teachers, I think most of the teachers, they do their best to train their students, and just we have a little very limited time span with our students. So and this whole of the curriculum is also designed in this manner. So the teachers do not have much role in the curriculum design. Whatever the design is given by universities, we have to implement that, very well. So this is a multi-pronged, you can say, a problem, and we have to take it at every level. That's all. Thank you. ठीक कहा है मैडम आपने, आप अपनी जगह ठीक हैं. Am I audible? Yes, yes, yes. आपके एक लास्ट शब्द मैंने आपके उससे लिया, जो आपने कहा कि समय बड़ा कम टाइम है टीचर्स के पास. यही तो एक मेजर इश्यू है. आप कहते हैं कि करिकुलम डिजाइन में फ्रीडम नहीं है. Who says that there is no freedom in curriculum design? हम करिकुलम डिजाइन में फ्रीडम चाहते नहीं. यूनिवर्सिटी ने आपको एक करिकुलम दे दिया. बेसिकली करिकुलम क्या, वो कोर्स है. करिकुलम तो आप डेवलप करते हैं. कोर्स इज डिसाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी एंड करिकुलम वी डेवलप इन द इंस्टीट्यूशन. तो जो आपने समय की बात कही, तो मैं अब कह ही दूं कि यदि 9 से 2:30 में हमें सब कुछ करना है, उसमें हमें सब कुछ करना है, उसमें ब्रेक भी चाहिए, उसमें 4 पीरियड्स ही हमें पढ़ाने हैं, उसमें टाइट बाउंड मैनर में हमें वही पढ़ाना है जो यूनिवर्सिटी ने दिया हुआ है, तो उससे वही होगा जो आज हो रहा है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर कमिंग आउट ऑफ आवर इंस्टीट्यूशंस, दे आर नॉट एम्प्लॉयेबल बिकॉज दे हैव नॉट द राइट काइंड ऑफ नॉलेज which is required by the university or the employer. University is not doing, इसलिए हम भी ना करें. इस तरह से एस्केप करने से काम चलने वाला नहीं है. एज ए टीचर, आपने कहा कि बच्चे नहीं आते क्लास में. Who is responsible for that? Are we not responsible? What is the reason that a student should come to our class, come to my class? I have to create the right kind of thing. मेरे जो नोट्स हैं, मेरे जो प्रेजेंटेशंस हैं, उसमें कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि बच्चा मेरी क्लास में अट्रैक्ट हो. मैंने अपने कॉलेज में देखा है कि एक टीचर की क्लास में 80 बच्चे होते हैं, दूसरे के में 15 ही होते हैं. वो भी टीचर उतनी तनख्वाह ले रहा है और वो टीचर भी इतनी तनख्वाह ले रहा है. जब उससे कहते हैं तो वो इस तरह की बातें करने लग जाते हैं, जी हमारे हाथ में है ही क्या. तो ये जो सारी चीजें हैं, इनका समाधान ना सरकार के पास है, ना विश्वविद्यालय के पास है. इसका समाधान टीचर के पास खुद ही है. जब हमारे बेटे बेटी को पढ़ाने की बात आती है तो वी ट्राई ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, और जब विद्यार्थी की बात आती है तो उसको हम वहां विद्यार्थी मान के बैठ जाते हैं. यदि उसमें भी हम अपना सन और डॉटर देखने का प्रयास करें तो वी विल यूज ऑल आवर स्किल्स, वी विल यूज ऑल आवर रिसोर्सेज टू डेवलप देम, एंड दिस इज व्हाट द NEP 2020 इज एक्सपेक्टिंग. They are highly talking about the Mento-Menti system. Mento-Menti system में क्या, यही तो है. अभी हो क्या रहा है, हम जाते हैं क्लास में and we start bombarding the students with the subject knowledge. We hardly ask any student, बेटा तेरा मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, तू क्लास में आता नहीं है. Do we really try to find out the problem of the student? यदि हम थोड़ा सा, if we will think out of the box and we will have a one-to-one interaction with the students, and मैंने एक स्लाइड में दिखाया था कि ऐसे ही ताला नहीं खुलता, चाबी को उसके अंदर जाके उसके हृदय तक जाकर के ताले को खोलना पड़ता है. तो आर वी रेडी टू गो टू दैट एक्सटेंट? आर वी रेडी टू डिवोट मोर टाइम इन आवर इंस्टीट्यूशन, और एट 2:30 वी विल जस्ट पिक आवर बैग एंड गो अवे फ्रॉम द कॉलेज? इट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल,
It is not the responsibility of the university. The government has already given you the policy document. They have shown you the destination कि स्टूडेंट्स होलिस्टिकली डेवलप्ड होने चाहिए, और यदि बच्चे को नौकरी करनी है तो इसमें जो मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का स्कीम दिया है कि 1 साल में बच्चे को समझा करके आप बुकिश नॉलेज के साथ साथ कुछ हुनर, कुछ वोकेशनल कंपोनेंट उसमें डाल दें, ताकि ठीक है बेटा तेरे को परिवार को संभालना है, आप जाइए ये सर्टिफिकेट कोर्स लेके जाइए, नौकरी करिए, 2 साल बाद 3 साल बाद जब आपको लगे कि अब ठीक है आप वापस आ जाइए। तो ऑल काइंड ऑफ एंट्री एंड एग्जिट्स दे आर अवेलेबल in this NEP 2020 document. It is a beautiful document. The issue is that जो कहते हैं ना learn, unlearn and relearn, तो we have to change our mindset. जो हमने अभी तक जो हमारे माइंड में भरा पड़ा है ना, वो सब बोलना पड़ेगा हमें, और ये जो नई चीजें जो इवॉल्व हो रही हैं ये सब हमें इसमें डालनी पड़ेंगी, एंड देन वी विल एंटायरली a new teacher coming out. जो असली जो गुरु शिष्य परंपरा होती थी, तो हम अध्यापक या शिक्षक ना रह करके गुरु के रूप में जब हम विद्यार्थियों के सामने आएंगे तो आप देखेंगे कि एक मिरेकल होने वाला है देश में। समय लगेगा, मैं मानता हूं, और हर आदमी की अपनी अपनी लिमिटेशंस भी हैं, उससे भी मैं आपसे सहमत होता हूं, लेकिन मैं नहीं मानता कि भाई इसमें यूनिवर्सिटी की जिम्मेवारी है, सबकी जिम्मेवारी है, लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेवारी मेरी अपनी है। आई हैव टू मेक माई कंटेंट्स वेरी इंटरेस्टिंग इन द क्लास. आई हैव टू टेल देम द स्टोरीज फ्रॉम रियल लाइफ, एंड इतनी मोटिवेशनल स्टोरीज इंटरनेट पर उस पर अवेलेबल हैं। मैं आपको बताता हूँ, एक स्टोरी है इंग्लैंड में, एक टेडी एंड थॉमसन, आप पढ़ना उसको। यदि टेडी एंड थॉमसन की स्टोरी आप पढ़ेंगी तो मेजॉरिटी ऑफ द टीचर, समवेयर आई एक्सप्लेन इट, दे स्टार्ट वीपिंग, कि किस तरह से आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर किसी बच्चे के लिए मिरेकल कर सकता है, और थोड़ा सा किसी बच्चे को आप इग्नोर कर दें क्लास में because of his behavior or because of his dress or because of his socio-economic background, तो ये havoc भी play कर सकता है। तो a teacher has to be in different roles for different students. This is my submission. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you for such wonderful words. And it is very true that the teacher has to understand his duties more, and they have to work beyond the classroom and beyond the working hours. Only then we can inculcate habits and other things to our students. And thank you so much for your kind cooperation. If there is, we can have one more query. And after that, our second session will be started. Anuradha, I request you to please take the credit system which sir was talking. Probably that slide is not with us recording. I will share with you, madam. I will take the photo and I will share with you. Okay, okay, sir. Thank you. Sure, I will do that. Thank you, sir. Thank you. Thank you, ma'am. Ma'am, excuse me, ma'am. Yes. There is a request, if it is possible to share the slides which sir has given for the presentation. The presentation. Ma'am, you can, I'll share the YouTube link. You can go there and you can take the screenshots or whatever you say. Okay. Anuradha, another question is there for sir. If it is, Anuradha, YouTube link मुझे भी भेज देना. Sure, sir. I'll send you after this seminar, sir. Sure. No Excuse me, sir. One question. One question, on YouTube as well right now also. After this, in evening, I'll share with you. Yeah, sure. Thank you. Any other question, or I should leave? Sir, एक question है. Sir, मैं एक question रखना चाहती हूँ. Sir, scope of vocation. Sir, vocational education का scope क्या है NEP में? मैडम, सारा स्कोप ही वोकेशनल एजुकेशन का है सर, लेकिन वो तो इम्प्लीमेंट जो बोला जा रहा है वो तो मतलब असलियत में सर उतना इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है स्कूल में। मतलब मैं एक स्कूल से रिलेटेड हूँ, तो वहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन चलता है, तो जो एनईपी ने 2020 में जो भी दिया है, तो सर उसमें जो बोला जा रहा है और जो किया जा रहा है उसमें से कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। इज देयर एनी स्कोप सर? क्लियरली मैं बता रही। ये कुछ बीच में कोई और बोल गया। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। देखिए,
अर्पिता जी, जो वोकेशनल एजुकेशन की आपने बात की, तो हाँ जो सर। हम एक ट्रांजिशन करना चाहते हैं जॉब सीकर्स टू जॉब प्रोवाइडर्स, हाँ सर। तो क्योंकि आपने स्कूल की बात की, तो जो माइंडसेट डेवलप होगा, जो माइंडसेट डेवलप होके आएगा, वो स्कूल लेवल से ही आने वाला है। तो जो एनईपी के डॉक्यूमेंट को आप जैसा कह रही हैं, स्कूल लेवल पे आपने पढ़ा होगा, तो 6th ऑनवर्ड्स ही वोकेशनल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं वो लोग। हाँ सर। द इश्यू इज कि ट्रेन्ड मैन पावर की कमी है, नो वन कैन डिनाई इट। आपको एक पूरा का पूरा परिदृश्य आपके सामने है, और उसमें यह भी लिखा है कि आपको कैसे करना है। अब उसके लिए जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, जो एक एम्बियंस आपको डेवलप करना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलप करना है, दैट कॉल हैज टू बी टेकन बाय द इंस्टीट्यूशंस विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट, एंड इट वेरीज फ्रॉम इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन। तो उस पे कई बार ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे बहुत ज्यादा चर्चा कई बार आप समझती हैं बात को, तो एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स इट, कुछ उसमें ग्रे एरियाज भी हैं और कुछ उसमें लिमिटेशंस भी हैं, लेकिन सूनर और लेटर, क्योंकि एक चीज तो साफ है, सरकार की नीयत तो है कि भाई ये इंप्लीमेंट होना चाहिए और सोशली यूजफुल सिटीजन्स इंस्टीट्यूशन से निकलने चाहिए। तो नीयत है, नीति है, तो समय लगेगा, लेकिन नीयत ही अच्छी होगी, आप मान के चलिए। और जो भी आपके अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उनसे जो बेस्ट आप कर सकती हैं वो करने का प्रयास कीजिए, ऐसा मेरा मानना है। Thank you, sir. Thank you so much, sir. Dear participants, there is slight change in the schedule. As a respected resource person, Dr. Pawan Sharma won't be available after lunch, so we will be having technical session after his deliberations. And sir has joined with us. Sir, we are very grateful to you that you have joined us. And so after such lecture, we'll shift the technical session and we'll be having your deliberations, your scholarly research after the deliberations of Dr. Pawan, sir. Can I leave, madam? Yes, sir, you can Thank leave. you. Thank you, sir, for coming and for telling us so many Sir, things. I request you to listen our very leading professor of university. You will really relish him. Yes, please. Sir, we welcome you to this virtual platform, sir. Now I invite Ms. Anchal to introduce our resource person with the participants. Thank you, Anuradha ma'am. It is my honor and privilege to introduce Dr. Pawan Kumar Sharma. Dear participants, Dr. Pawan is currently serving as professor in Kurukshetra University, Kurukshetra, and he is also serving as Dean Research and Development in the university itself. He is MSc and PhD in chemistry. His specialization includes organic chemistry, nucleic acid research, synthesis of reactive intermediates, carbolic anhydrase inhibitors. Dear all, Sir has delivered one Platinum Jubilee lecture in Chemical Sciences and at 104th Indian Science Congress, and was also honored with the prestigious Srinivas Ramanuja Birth Signatory Award at 106th Indian Science Congress. He has strong research collaboration with prestigious research centers across the globe. He has visited many countries in the 6 continents for research purpose. He has 130 research papers in international journals and 5 patents are published by him. I welcome you, sir, and I acknowledge your presence. Over to you, sir. Thank you very much. First of all, I apologize for the inconvenience caused to the organizers and to... Am I clear? Am I audible? Yes, sir, you are audible. Am I audible? Yes, Okay. sir, you are audible. So, okay. So I'm sorry that if there has been some change in schedule, I think that there was some confusion that I wrote that I am not available, but I think that somehow Madam Angra wanted me that I should speak. So
I just squeezed in some in between. I hope that, as I can see, that still there are more than 70 participants online. So that tells that definitely we had a. Hello. Yes. So because still there are more than 70 participants, so it tells me that the deliberations the whole day had been wonderful. And most importantly, as I see the schedule, I think that you had the best speakers available in this area. Because when we talk about a team, NEP team at Kurukshetra, so our team definitely, the best persons in our team, like Dr. Manjula as well as Dr. Anita. So I understand that both of them might have spoken. So this is the team at KUK, which is not only the first university which made Kurukshetra University as the first university of Haryana, but I think probably the first university in the entire country who has meaningfully, means not on paper, meaningfully rolled out this NEP for the undergrad students in our IIHS, Institute of Integrated and Honor Studies. Kurukshetra University, because we wish to take lead in this area. So as you know that we did a principals workshop also, and that principals workshop was, Dr. Angra was there. So that principals workshop was made basically for hand holding the affiliating colleges, as well as to lead the colleges towards the thought process of NEP implementation. And through this seminar also, I know that most of you now know that what are the parameters or what are the nitty-gritties of NEP. So my job, I think, in this session basically should be that if I can reflect on some of the practical aspects, that it is okay that we know that this is the document, this is NEP, this is what it says. But practically, I would like to spend some time on that. What is the way forward, right? How we can move forward, because it's a small document. It doesn't talk about many tasks. So the modules have not been made in this, the tasks have not been cut. So what is the way forward? So first of all, I would like to say that the first way forward can be, you see, it can be taken if we take this NEP, which we know that we got after 34 years. This is the third national education policy, and we got it after 34 years. So if we take it as an opportunity rather than as a government order, that is the first change in mindset that we need. That it is a government order, we need to follow. Tomorrow, government or the university will say, okay, you do this, we'll do this, and then we'll try to find faults. No, this is not practical, this is not okay, there are these challenges. So first of all, it is our responsibility as an institution, as a teacher, that we should take it as an opportunity. We must understand this is a great opportunity which we have. Of course, every new opportunity when we want to change the way it has been proposed in NEP, so every opportunity brings inherent challenges along with it. So, but we must understand that we should take it as an opportunity rather than as a government order. Second thing is that all higher education institutions, be it colleges, be it universities, we should have a dedicated team. And it should not only be the responsibility of the team that the college makes. The responsibility is of everyone. But the job of the team is only to break it down into small modules. And then we start working on modules in a parallel fashion. Not waiting for, oh, maybe tomorrow something different can come. Oh, the government may guide us on it. Because when we break it down, then we'll come to know that there are certain tasks, there are certain modules, there are certain things which have to be done at the institution level. So we should break it down into smaller modules and we should start working on it. Now,
in terms of way forward, if I just rephrase it and try to say that what this NEP offers. So when it comes to what it offers, the first thing comes what it identifies as a challenge. So you would be surprised to know that one of the major challenges that has been identified in national education policy is the limited teacher and institutional autonomy. That has been identified as a major challenge. I'm sure that all the speakers today, they might have said that by a certain date, all colleges, they have to move towards autonomy. That's true. That is true that all colleges, because NEP says that every unit will be autonomous, either independently or as a cluster. But I want to emphasize that why they say this, because the NEP considers that the limited autonomy to the institution or to the teacher or to the student, that is a bottleneck in reaping the benefits of the education in general and higher education in particular. So that means first thing it offers is that it paves the way for autonomy. And not like it, we may not like it, that we may have thousands of questions in our mind. NEP thinks about autonomy, it can be gauged from the fact that if you go through the document, you will find this word autonomy mentioned at 34 places. If you go at the 10 points, 10 सूत्रीय कार्यक्रम, am I audible? Yes, sir, you are audible. So I disconnected because I got disconnected, I think, somewhere. So I was talking about the autonomy. So was it, is it, means, was it at your end? I'm talking about autonomy. So know that मैंने कहाँ तक मेरा तो बोल रहा था वो तो जब डिस्कनेक्ट हुआ तो मुझे समझ आया. So let me just hello. Yes, sir, you are audible. Hello. Okay. Okay, so I'll just for some time I'll turn off my video if it is at my end. I don't know that some yeah. So we should, at our end, we should try to break it down into smaller modules. Hello. Yes, sir. Okay. So, Sir, you can go ahead with your session. The voice is breaking. This is what is there. Please. Yes, ma'am, there are some technical glitches. I think sir has just left the meeting.
We are requesting. Yeah, he has joined again. Hello. It will be better to switch off. Hello. Yes, sir, you are audible. Hello. Sir, you are Yeah, audible. I don't know at what end the issue is. Am I audible now? Let me try once again. Yes, sir, you are audible now. Okay. So I'm sorry about this. I don't know where this issue is. It never happens. So I say that the higher education institutions should break it down into smaller modules, and then they should start. I don't know what's happening. So Yes, sir. There are some technical glitches. there are some technical hitch, and I don't know. So um, first thing is, so let me just sum it up in short, because it's not the best day today, I think. That first thing is that NEP paves our way for the autonomy. And if we go through this document, then it has been mentioned at 34 places. And NEP gives a 10-point program. Thus, Bindu deti hai NEP. And out of these 10 points, 2 points deal with the autonomy. So that tells us that where the emphasis is. So that is one thing, that the way forward, that we have to go towards the institutional autonomy, teacher autonomy, a great, you see the leverage towards the autonomy. But at the same time, I must say to my fellow teachers, my teacher colleagues, let's not misinterpret autonomy. Autonomy doesn't mean at the name of autonomy teaching the same curriculum, teaching the same syllabus for 10 years, 5 years, 20 years. That's not definitely the meaning of autonomy. That's not teaching autonomy. So instead what we need to do, we need to invest teachers' energy, resources, and time into developing better pedagogies. So each one of us should look at our subject with a fresh perspective, and should try to develop better pedagogies for teaching. And we should try to move away from chalk and talk, the simple chalk and talk method. We need to develop the teaching pedagogies. Now, second thing is that if we go to the soul of NEP, then the soul of NEP talks about talking to the students, teaching the students, letting them understand how to learn rather than to learn. The third important thing, the change, which the higher education institution must think about is, even though you choose to have robust research system in your college. A robust research system, because this is integral. Now, some of you might be thinking, I'm
It's not obliging. So I'll just sum up maybe some other time. You see, so let me just sum it up, because the technology is not helping us today. That you can think only one thing I'll say and then I'll stop. Some of my friends, some of my teaching colleagues, they may be wondering that if we are going to be primarily a teaching higher education institute, why research is important for us. Let me tell you, research is going to be very important to you. And think about research not as something at a high pedestal. Think about the small, you see, the meaningful research that you can do in your neighborhood with the limited resources. So research is not only that you are developing cutting edge technologies. Research and development also comes into the domain of, you see, the social domain. You pick up a problem and start working on it. It may take 20 years to solve that problem in the neighborhood. That will also come under research and development. But how research is going to be an integral part? I hope that I am audible for now. Yes, sir, you are audible. Yeah. Yeah. So because you see, the colleges will be differentiated based on that whether you are offering a 3-year degree course or a 4-year degree course. When you are offering a 4-year degree course, you will be differentiated on the basis of research. Otherwise, even if a student would exit after 2 years, would not like to come to your college thinking, oh, tomorrow if I may decide to go for the 4th year, then I may need to change a college. So that is one thing. Second thing is, this is an opportunity to each and every college to have a springboard in the sense, when as this NEP will be implemented, there will be a churning of all the big and small colleges. So the colleges that will take lead towards the implementation of NEP, they will be ahead of others. And you see, the admission, as I'm sure that Dr. Neeta or Dr. Manjula might have told you, that under NEP, we do not admit students to a program. We admit students to a course. So in that case, you see, all those colleges, the big or small colleges, that won't matter because student will be choosing course. So if you take lead towards the implementation of NEP, towards, as I said, towards pedagogies, towards paying attention to developing a research ecosystem, so it is likely that the so-called smaller colleges today may be the leading lights in the higher education system tomorrow. So the complacency will not help it towards adopting and implementing NEP. So what I would say that we should sit together at the higher education institution level. University is always open there. Now towards research, you see, Kurukshetra University has made certain efforts to rope in the colleges, to bring in, to build the research ecosystem at the colleges. And I'm sure you might be knowing that for the first time now we have officially allowed the teachers from the colleges to be PhD research supervisor, not as co-supervisors. They can be co-supervisors at KUK, but to be independent supervisors, they can give their own seats and they can be a qualified PhD supervisors. And we have already you see, I think that more than 30 cases we have already cleared. So there is a complete, you see, there is a set procedure. So university is already trying to build a research ecosystem at the colleges. So take advantage of that and spend energy and time on the pedagogies. And more importantly, let's sit together, change the mindset. This is going to come. NEP has to be implemented and it's bound to have changes. The document that you have, the government may differ tomorrow, can come up with something new, but we can take advantage of all those only if we know by heart that what this NEP is. So I would just like to close because technology is not helping us and I also have to join some other place at 2 o'clock, that the soul and the spirit, both the soul and the spirit of NEP is just to consider education
as a medium of nation building, or rather nation development, through participation of teachers, institutions, and students, with the ultimate aim to reclaim the glory of Bharat as Vishwa Guru. And I think that NEP is one medium, and colleges are basically the seats, the higher education institutes. They are the temples of learning that will take the Bharat, the country, our India, towards the Vishwa Guru. With these words, I apologize for the inconvenience as well as for infrequent disturbances in between, but that's not something in my hands. So thank you, the administration, thank you, Dr. Kiran Angra, my friend, for providing me this opportunity to interact with the participants at this stage. Thank you very much. I shall be very happy to interact further, but I have 5 more minutes. So thank you very much. Thank you so much, sir, for giving your deliberations for research. Sir, we are very grateful to you that you have joined us today despite of being too busy. Sir, it happens many times due to technical glitches. We don't feel such much comfortable. But sir, the golden words you have shared with us, they'll definitely help our participants to go ahead with the research as well. And thank you so much, sir. If we can have only one query with the sir, if sir has 5 minutes with us. You can unmute yourself and ask, sir. So the moment you joined, our chat box was like, sir, we really want to listen to you, though there was technical glitch, but still people wanted to listen to you. That's why we have requested you to come, and definitely, sir, your experience matters a lot to us. So thank you. Thank you, sir. Thank you. So will we shall we proceed further for the technical session? Dr. Angra is there, or? Okay, so if that's all, I would like to take leave. Thank you once again. I think that. Thank you, sir. Thank you, sir. So shall we proceed further with the technical session? And the moderator for technical session is Ms. Anchal, and session chair is Ms. Vinita from Government College, Sector 1, Panchkula. So the technical session will be handed by both of you. Over to you, Ms. Anchal and Vinita, ma'am. A very good afternoon to Vinita, ma'am. I welcome you, ma'am. And we are going for our technical paper presentations. So the first presentation we have is by Surbhi Sharma from Chandigarh University, Chandigarh. Surbhi, are you with us? I think she is not in the meeting right now. So the next presentation that we have is by Kuldeep Kumar from Chandigarh University. By the meantime, if there is someone who wants to present paper, then they can raise their hand. We can have their presentation. You can write your name in the chat box. Or you can, okay, Sunita Kalra ma'am has raised her hand. So ma'am, do you want to present your paper? You can unmute yourself. Ma'am, please make a request that they should make it limited to 5 minutes only. Okay, ma'am. Okay. We have limited time. Yes, Sunita ma'am, are you ready? Yes, ma'am.
Okay, ma'am. There is a time limitation of 5 minutes given by our chairperson. Yes, sir. Requested to conclude your paper within 5 minutes. Ma'am, please give me screen sharing permission. Okay. Yes, ma'am. Just give me a second. We are doing it. Yes, ma'am. We have enabled the share screen option. Now you can share your screen. Thank you. Good afternoon, Principal Mrs. Kangra Madam and Mrs. Janchal and Mrs. Anuradha and Miss Madam Vinita and all my dear participants which are attending this session. Myself, Sunita Kalra from DAV Girls College, Kosni. I am Assistant Professor in Mathematics and my topic is New Education Policy, its implementation and future path. This paper aims to focus on origin of NEP, its implementation and future path. In 2020, when whole country was struggling to the menace of COVID, a major development that took place was the development of NEP-2020. Now, history of NEP in India. The first NEP was announced in India in 1968 by Prime Minister Mrs. Indira Gandhi. Based on report and recommendation of Kothari Commission, this policy called for fulfilling compulsory education for all children up to 14 years of age and specialized training and qualifications of teachers. In 1986, the government led by Prime Minister Rajiv Gandhi introduced new education policy, which emphasized to equalize educational opportunity, especially for SC, ST, and women, and expanded open university system with Indira Gandhi National Open University. On 29 July 2020, the Union Cabinet, headed by Prime Minister Narendra Modi, approved a new education policy, NEP-2020. Now, main features of NEP. First feature is the 10+2 schooling system will be replaced by 5+3+3+4 system. First stage will be foundation stage, 3 to 8 years, and this stage will be of 5 years. Second stage is preparatory stage, 8 to 11th year. This stage will be of 3 years. Third stage is middle stage, 11 to 14. This stage will be of 3 years. And secondary stage, 14 to 18. This stage will be of 4 years. In school education's main feature of NEP 2020, students will take coding classes from 6th standard. In higher education, there will be exit options in undergraduate courses. If a student drops out after 1 year, he or she will get a certificate in the discipline or field, whichever it may be. And if he drops after 2 years, he will get a diploma, and after 3 years, he will get bachelor's degree. Now, main objectives of NEP. Main objectives of NEP is to have an educational system by 2040 that is best in the world and is largely focused on introducing flexible, holistic, as well as multidisciplinary
multidisciplinary undergraduate courses with multiple exit options. There will be single and comprehensive governing body called the Higher Education Commission of India to coordinate all of higher educational institutions except for law and medical field. Vocational courses will be introduced in colleges and universities. Appropriate steps are expected to be taken by colleges and universities to promote public investment in education sector. Open and distance learning will be promoted in higher education institutions. Appropriate steps are expected to be taken by higher education institutions for promotion of digital and online education. Because online education focuses more on practicality of learning received by the students. Further, online educations can be acquired by anyone, whether he is doing some job or staying at home. But the pandemic of COVID has made the necessity of online education very clear. Now we conclude this: no system can run without the help of stakeholders, whether parents, students, teachers. So it is duty of all stakeholders to make new education system NEP-2020 a successful system as it aims at 0% unemployment and job for all youngsters. Thank you. Thank you, Sunita ma'am, for such a nice presentation. Vinita ma'am, if you want to ask any question to her, you can ask. Technical session. I think let's complete the technical session. In the end, we will have the question answer session. Okay, ma'am. Okay, sure. Okay, that will be okay for you. Sure, ma'am. So the next presentation according to our schedule is by Mr. Ramesh Kumar. Dr. Devika Sharma was there. Ma'am, she is not in the meeting, I think, right now. Ramesh Kumar, are you there? No, he is not with us. Dr. Amarjit Kaur. Hello. Yes, Kamaljeet ma'am. Anji. Do you want to present your paper? I would like to present my paper, but around 3, you have not mentioned my name earlier. Is it so? It is Dr. Amarjit Kaur, ma'am. Amarjit Kaur and Mrs. Urmila Sharma. One of them may present it. Amarjit Kaur is there. I can see her name. Actually, I am Dr. Kamaljeet, Kanwal. No, ma'am. Dr. She has Kamaljeet. announced Dr. Amarjit Kaur from this Jean College. Yes, ma'am. Actually, due to the time constraint, we have taken a limited number of papers. But if someone else wants to present, they can present. हाँ, आपने जो शेड्यूल दिया था that was already been there ना, तो उसके accordingly तो हाँ मैम अगर आप प्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं. Around 3, after 3 I will be there. If you would like to कि मैं अपना दूं तो I would हाँ. Okay, ma'am. Dr. Devika Sharma is with us. She has raised her hand. Devika, ma'am, are you there? Yes, I'm very much here. Good afternoon, everyone. Please, good afternoon, ma'am. Please go ahead with your paper. Devika, ma'am. Yes. Just a second. I will be sharing my screen. Yes. Can you see my screen? Yes, ma'am. We have enabled this share screen option. You can share your screen.
Devika ma'am, Good are you happy? afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Yeah. I will be reading my paper, but I will be reading it. Uh, the topic which I have chosen for today's presentation is National Policy 2020, revisiting the changing paradigms in Indian education system and their future impediments. What I actually took for this discussion today is the application of how we are applying national policy of education in the state of J&K. In fact, what I can say is national policy is a master stroke in the policy reforms. It can lead Indians into rurality in which employment opportunities will be plenty. There are few trends which are emerging due to the application of new education policy. Like we can see that there is learning in collaboration. We do see students learning in a collaboration. Besides that, we are seeing that students are learning outside the classroom environment. Besides that, there is also an increase in the use of social media in learning. Besides that, there is increase in the data management and analytics parts. Besides that, what I can see in my college as well is that there is an increase in the gamification of education. Students are finding gratification in gamification. Besides that, it can help in the development of commitment, sport, and establishment in the intuitive classroom climates. Besides that, what I can see is that this new change in the education pattern has also led to Sorry to interrupt you, but socialized it's not visible. isolation. Devika ma'am, your voice is breaking. students. You are not audible, Devika. Your PPT is not visible, Devika ma'am. It's that has an negative impact on the students in the way that like they really don't think that they are not coming, but I do see that there is graph change in the student. That so this is Achal ma'am, perhaps she has left. Her network was not stable at all. Yes, ma'am. I can see she is not with us Let's in the give the meeting. chance to the next participant. Yes, Okay, ma'am. I present, ma'am. May Amarjit Kaur from Okay, PGWJ. May I Yes, present, ma'am? yes, ma'am. Devika ma'am, your time is over. Now we have to go ahead with the next Excuse me, madam. presentation. Okay. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you for your presentation. Madam, may I present? Ma'am, Yes, just ma'am. now, Amarjit Kaur is there. Dr. Dr. Kamarjit Amarjit from Kaur from from where Yes, you ma'am. GCW. are Amarjit present? Kaur from PIGGCWJ. Yes, Yes. ma'am. Amarjit ma'am, please go ahead with the presentation. Okay, ma'am. I will summarize my paper. Yes, ma'am. As we know that new education policy 2020. Through this policy, the government wants a great change in the education system. And my topic is new changes. My topic is changes in higher education in NEP 2020. Ma'am, I am summarizing my paper. As we know, the purpose of the quality higher education
is more than the creation of greater opportunity for individual employment. Yes, ma'am. It represents the key to more vibrant, socially against cooperative communities and a happier, cohesive, cultured, productive, innovative, progressive, and prosperous national education policy 2020 envisions a complete overhaul and re-energizing of the higher education system and thereby delivering high quality in higher education with equity and inclusion. The policy's visions includes the following points. First is कि higher education consisting of a large multidisciplinary autonomous universities and colleges with at least one in or near every district map and with more HEIs across India that offer medium of instructions or programs in local and Indian languages. And second is revamping curriculum, pedagogy, assessment, and student support for enhancement students' experiences. And then reaffirming the integrity of faculty and institutional leadership, that is the main point, leadership position, and through merit appointments and career progression based on teaching, research, and servicemen. Establishment of a national research foundation to fund outstanding peer-reviewed research and to actively seed research in universities and colleges. And then governance of HEIs by high qualified independent boards having academic and administrative autonomy. And that is the great point, ma'am, that there are great problems that we are facing in implementation of new education policy because great leadership must be there in every institution if we want to implement this policy because leaders don't know how to implement it and even there is a need of great cooperation and great help and great training should be organized for the leaders. How should we implement it? And the initiative should be taken by the government. Then increased across equity and inclusion through a range of measures, including greater opportunities for outstanding public education. And then student support, scholarship by the public and private universities for disadvantaged and unprivileged students. Unprivileged students should be supported by the public institution and the government. And then so the major point is, ma'am, online education, online distance education should be implemented and all the infrastructure and the quality should be maintained as we provide education offline. Then institutional restructuring and consolidations. The main thrust of this policy is, ma'am, to transform higher education institutions into large multidisciplinary institutions and HI clusters and knowledge hubs, each of which will aim to have 3,000 or more students. Although, ma'am, I am concluding now. Although the policy is very attractive and policy is very effective, it looks very effective and it should be that the students should be provided holistic development, personality development and moral education. That is the main point of this policy. I think that it should be inculcating in each student so that they can be great citizens of our country. And it needs a great of efforts by the teachers, by the leaders of the institution, and even by the government. I think that the training should be organized by the government how to implement this policy in our institution. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Am I audible, ma'am? Yes, ma'am, you are audible. Thank you, Amarjit, ma'am, for such a nice presentation. The next we have Kamaljeet, ma'am. She wanted to present her paper. Kamaljeet, ma'am. Yes, I'm audible, ma'am. You are audible Yes, to me? ma'am. Yes, ma'am, you are audible. You can go ahead with the paper. Okay, thank you. Thank you, all of you. I am Dr. Kamalji from Associate Professor in Vaish Mahila Mahavidyalaya. Hello, everyone. Today I am going to present my paper on new education policy, its origin, implementation, and its future path.
And if we talk about the origin of the new education policy, then we all know that this new education policy was introduced by our central government under the leadership of Narendra Modi and our HRD minister, Mr. Ramesh Pokhriyal Nishank. They introduced this policy in the year 2019 and it was approved in 2020. Earlier, the first policy, which was the origin, which it gained from the first policy which was introduced, that was in the 1968. The first education policy came into existence. After that, the second education policy under the leadership of which was formulated by our ex-honorable Prime Minister Rajiv Gandhi in 1986, and it was further amended in 1992. And after that, the new education policy 2020 is the third education policy of independent India. A 34-year old education policy is currently underway, which is becoming ineffective with the changing scenario. Now the question arises, what is the benefit of the new education policy 2020? The first benefit of new education policy 2020 is to teach the students, to teach the children in their mother tongue up to their foundation stage. And second benefit is that this education policy is totally based on vocational education. And the main aim of this policy is to either give the student their jobs or to start up their own business as an entrepreneur. And third, the benefit is to scrap the MPhil. They have scrapped the MPhil. Now there is no need. The person can easily grow from MA to PhD. They can easily get an MA, the Master of Arts, the Master of Commerce, or the Master of Science. They have also been reduced to 1 year. And bachelor degree has been extended up to 4 years. And the fourth year, the students can do their research work. And moreover, this policy also gave a stress on the ABC system. ABC is the academic bank credit. The students have to earn maximum points or the credit score they have to earn, and they can deposit it in the academic bank, and on the basis of their credit system, they are being whether they are eligible for doing the research or not. And if we talk about the 10+2 system, that was the earlier system. The new education policy has been converted into 5+3+3+4 in place of the currently running model 10+2 model. The 4 steps of the new education policy are: number 1, at the foundation stage, which is being 3 to 8 years for the children. And at this stage, the students has to be taught in their mother tongue. After that, the preparatory stage comes. And this year, the time limit is from 8 to 11 years for the 3 years more. And in this stage, the new education policy, special attention will be focused on strengthening the numerical skills of the student. And after that, the third stage comes. The third stage is the middle stage. And middle stage is again of the 3 years. This stage, children from 6th to 8th grade, included in which subject-based curriculum will be taught, and coding will also be started from the children of the 6th grade. And 4th stage is a secondary stage. This stage is for the 4 years, 9th grade in this stage to 12th stage to the 12th standard. In this, intensive study of the subject will be done. The students can go, they can multiple exit and multiple entry system has been introduced. Under the earlier system, that was the 10+2 system, the students were not allowed to choose their subject of their own choice. Compulsory mandatory subjects were there, but in this system, the multiple entry and exit, and moreover, in the college stage, the students can choose their own subject. The new National Education Policy 2020 has been approved by our central government. We all know that. And the education system to meet the need of the 21st century of the India. This policy is all about that how a student, how the persons can be made a good entrepreneur, how they can take the risk, how they can start their own business, how they can further utilize, further they can use this policy. This is all about my paper.
Any question? Hello? Ma'am, we will take question after the session is over. The next participant is Catherine Masi. Dr. Okay, Catherine thank you, ma'am. Masi from Guru Nanak Khalsa College, Yamuna. Is she there? Anchal ma'am, is she there? No, ma'am, she is not with us in the meeting. And once again, please call Dr. Ramesh Kumar, Sahayak Pradhyapak, Government College for Women, Jean. No, ma'am, I think none of them is with us. Any other participant who... We should conclude the technical session. You can give your own deliberation. And you can give your own deliberations regarding the same. So any other participant who is interested in, who has any queries regarding these presentations in this technical session? So I think we had a great deliberation on National Education Policy 2020. I think it is now in the process of implementation because universities have already adopted various parameters of NEP. And we have, since the morning, we are listening to a great elaboration on what this NEP aims at. So we have learned from the lectures that the onus of the responsibility lies a great deal on the teachers. So we, being teachers, we have to take the lead in this implementation and to make this NEP successful. So as far as I have learned, and from this present, first of all, let me just sum up the presentations by our teachers who have presented their papers. Ma'am Sunita Kalra from DAV Girls College, Cosley, she has presented about the future path, and she has told us that till 2040, our India aims at being the best educational, presenting the best educational system all over the world. So we are talking here about the internationalization of the educational system of India, and we are talking about the maintenance of Indian ethos in our educational system. So, and she stressed upon that there will be 0% unemployment ability in the country. So that was a good paper, ma'am. Second paper was by Ma'am Devika Sharma from J&K, and her presentation was very valuable as she has shown the practical side of it, how it is applied, implemented in J&K, and she told about that they are just practicing there, learning in collaboration and learning outside the classrooms. So I think we will get feedback from her in future also, and we will be benefited by her feedback. Amarjit Kaur ma'am from GCWG, she elaborated upon the main points like the multidisciplinarity. We are talking about it since morning, and interdisciplinary approach, and that the teaching will be done by local and in Indian languages. Dr. Kamaljeet also has stressed upon this point in the school level. And the one thing which has come out from this deliberation, that the entire education system of India is going to be revamped and restructured here. And we teachers should be prepared for taking this opportunity, as Dr. I think our last resource person, Pavan Kumar Sharma, has told us that we should not take it as an order from the government. Rather, it is an opportunity to show our strength and our talent, being teachers and being the leaders of the country. So this policy, it focuses on the high quality research also. And a few points which I think nobody has taken up, like the freedom for the teachers. We are talking about the autonomy to the institutions. But as I talked with Dr. Ravi Kant, it seemed that the teachers are to be made the scapegoats in this, but the government has in this policy some freedom for the teachers also. Like there will be no frequent transfers in the government colleges. There will be no non-teaching activities for the teachers. Like we feel burdened here that we get
little time for academic activities, and the teachers are given so many other activities like the surveys and the duties in the election during the election times. So the policy aims at not giving any non-teaching activities to the teachers, and their entire focus will be on the teaching activities. And there will be continuous professional development. The government is going to organize workshops, seminars, conferences for the teachers to improve themselves and to train them according to the demands of the times. And the teachers will be free to adopt the pedagogical methods as per the requirement of their classrooms. So I think there will be little imposition on behalf of government or the universities on the freedom of the teachers, how they can mold their students. So these are the beauties which every teacher should appreciate here, which I found here, very beautiful things. So these are the things, and the government aims at the gross enrollment ratio will be 100% till 2030, and the social gaps will be breached in this policy. So I think this is a welcome document from all the stakeholders, the teachers, the universities, the government departments, the industries and students and their parents also. All the stakeholders, all the aspects of society, they are welcoming this policy, and we hope that India will be once again become the Vishwa Guru in education all over the world. So this is my feedback also and my inputs in it. Thank you very much. And I would like to add one more thing, that there are very many online platforms also. So we are talking about technology here, and we have seen that this technology has connected us here. And Anuradha ma'am knows us very well that during COVID, this technology played a great role. And we came across each other and we came to know each other during that COVID time, when we framed e-content for the students and for the government departments. So that was a great time. The government has started various platforms for the e-content courses also, like this you can say SWAM, and this one platform was there on which we launched our videos, and that was Diksha platform and Utkarsh platform. So our students get help from there also. NCERT books are also available there for the school students, and the teachers have also created e-content, and one e-library is also available on the site of Department of Higher Education, Haryana. So the teachers can make their videos regarding their curriculum, and they can send it to the Department of Higher Education, and that is stored there in the government library. So these are the things which the new education policy aims at, and I hope that it will be a great success in making India the Vishwa Guru. Thank you very much. Thank you, Vinita ma'am, for your insightful comments on various paper presentations. Now, I will present the report of the seminar. Sorry to interrupt, but as we know that the session of Anita Dua ma'am was interrupted due to certain technical problems, internet connection. So now she will share her PPT. This is a scheme template shared by ma'am. So we can have a look on it. And the participants can take the screenshot of this in case they want to use it for future. Hello, am I audible? Yes, ma'am, you are audible. Anita ma'am has. Please move to the previous slide. Move to the previous slide, please. Slide number 11.
Next, please. There is a figure. Yes. I think this slide is visible to everyone. Yes, it is visible, ma'am. See, this is the basic graph. Most of the things you might have discussed during the whole day. This is the change which we are going to implement under NEP 2020. You have seen that this whole system was earlier the knowledge part, and now knowledge, that is disciplinary, interdisciplinary. There is ability enhancement component. Along with that, there is skill enhancement component, internship, community engagement, value-added courses, and research. So now the system is comprising of so many things, which you are observing here. Next slide, please. Let's see how these are incorporated in the UGC template, curriculum template. Next slide, please. Next, please. Slide number 12. Can we move on to slide number 12, please? Ma'am, it is visible. Next slide, please. That is on the template. Ma'am, we are moving the next slide, but we are not able to see it. आप इसको टिक करो, इसको ही 2 बार टैप करो तो ये स्क्रीन पे आ जाएगा ना आपके. ओके मैम. स्लाइड नंबर 12 पे टैप करिए. ओके मैम. Yes. Yeah, it's there. Yes, ma'am. I just want to elaborate on this template. Although the credit hours may not be the same, because recently in January, we have received a document from UGC. Earlier, we have kept the 3 courses with the 3 courses with 3 subjects with 6 credits each. But now UGC is giving it 4 to 6 credits. So these things are to be decided yet, and DHE has made a committee of all the NEP coordinators from all the universities under the leadership of MD Rohtak. And this committee will soon meet in Rohtak, and then a common template will be evolved. That will be implemented in all colleges and all universities, in all the colleges simultaneously. So the major components will remain same, but number of credit hours may vary from this template which I am showing you. So according to this scheme, the student will get admission in 2 subjects, subject number 1 and subject number 2. Along with the 2 subjects, he will also study a subject that is multidisciplinary. Multidisciplinary means जिस डिसिप्लिन में उसने एडमिशन लिया है उसके अलावा किसी और डिसिप्लिन से एक सब्जेक्ट पढ़ना है. So in total there will be 3 subjects, and in all the 3 subjects initially he will be studying 1 course each. In first 1 course means 6 credits or 4 credits. 4 credits means 4 hours की क्लास एक सब्जेक्ट में होगी. तो और अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो उसमें 5 हो जाएगा, क्योंकि एक जो क्रेडिट प्रैक्टिकल का है दैट विल बी काउंटेड एज 2 credit 2 hours in कॉन्टैक्ट प्रोग्राम. सो अगर थ्योरी का सब्जेक्ट है तो उसमें 4 घंटे की क्लास एक सब्जेक्ट में होगी, 4 घंटे की क्लास दूसरे सब्जेक्ट की पर वीक, और 3 घंटे की क्लास तीसरे सब्जेक्ट की होगी जो उसके अपने डिसिप्लिन से अलग होगा. से आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी उन्होंने लिया हुआ है, तो तीसरा सब्जेक्ट वो अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से
अकाउंट्स ले सकते हैं, मैनेजमेंट ले सकते हैं, या और तीसरा सब्जेक्ट जो उन्हें अपनी नॉलेज एनहांस करने के लिए जरूरत है उसका एक पेपर उसका पढ़ेंगे। ये वो पार्ट है जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जबकि जो ये दूसरा पार्ट है आपका एबिलिटी इनहांसमेंट, स्किल इनहांसमेंट, वैल्यू एडेड, ये तीनों कंपोनेंट्स सभी स्टूडेंट्स ने पढ़ने हैं, वेदर दे आर फॉर बीएससी, बीए और बीकॉम और बीसीए, किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं। तो ये एबिलिटी इनहांसमेंट के लैंग्वेज कम्युनिकेशन के चार पेपर्स मीन्स 2 credit hours each. So in this, it may be 2 papers in English and 2 from any other subject, any other, maybe Hindi, it may be English, it may be Hindi, Sanskrit, Punjabi, or some other language which is being offered by the institute. So 4 semesters में 2-2 credit means 2 घंटे की क्लास हर हफ्ते उसकी इन लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में होगी, जिनका मेन फोकस कम्युनिकेशन पे रहेगा। नेक्स्ट कैटेगरी आएगी स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज की, जिसमें आपके वुमेन वैल्यूज, कंप्यूटर, दिस वुमेन वैल्यू इज आल्सो नाउ शिफ्टेड टू वैल्यू एडेड कोर्सेज. These will be for personality development, computer science, then it can be digital knowledge, it can be any other skill which the pool of the courses will be given. 15, 20, 25 कोर्सेज की लिस्ट आपके पास आएगी, उनमें से कोई 4 कोर्स हमने बच्चे को करवाने हैं शुरू के, 3 कोर्स करवाने हैं शुरू के 3 सेमेस्टर्स के अंदर, और वैल्यू एडेड कोर्सेज होंगे 2-2 क्रेडिट के. These will be mainly based on you can say the human values and ethics, constitutional ethics, business ethics, or personality development, or any value added course which you want to, painting और फाइन आर्ट्स के कोर्सेज हो सकते हैं, न्यूट्रिशनल के कोर्स हो सकते हैं, हेल्थ, हैप्पीनेस, एनसीसी, एनएसएस, कम्युनिटी एंगेजमेंट, all these will be clubbed into value added courses. But human values and ethics और environmental science, ये 2 कोर्सेज बच्चे ने फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स के अंदर ये करने उसके जरूरी हैं. तो यूजीसी जो टेम्पलेट देती है उसके अकॉर्डिंग पहला सेमेस्टर 20 क्रेडिट का होगा, दूसरा 20 क्रेडिट का होगा, और अभी ये हमारी यूनिवर्सिटीज की कमेटी के लेवल पर पूरे हरियाणा के लिए यूनिफॉर्मली डिसाइड होना है वेदर वी विल गो फॉर 20 और 24. सो दिस इज अंडर कंसिडरेशन येट, बट ब्रॉडली कैटेगरीज यही रहेंगी: सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज, स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज एंड वैल्यू एडेड कोर्सेज. इन फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स करने के बाद अगर वो बच्चा एग्जिट चाहता है और वो नहीं चाहता और आगे पढ़ाई कंटिन्यू करना, मे बी ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस, तो उसे 4 क्रेडिट आवर्स का इंटर्नशिप करना होगा. सुबह भी हम इस बारे में बात कर रहे थे कि इंटर्नशिप को कैसे इंप्लीमेंट करें. तो इंटर्नशिप विल नॉट बी दैट स्टूडेंट अपने आप जाए और कहीं से इंटर्नशिप कर लाए. इसके लिए होगा कि मेंटोर्ड एंड मॉनिटर्ड. स्टूडेंट अपने सेकेंड सेमेस्टर में ही अपनी इंटर्नशिप का प्रपोजल सबमिट करेगा अपने इंस्टीट्यूट के अंदर, अपने कॉलेज के अंदर. जो आप फॉर एग्जांपल अगर आप आधे बच्चों को इंटर्नशिप सेकेंड सेमेस्टर के बाद प्लान कर रहे हैं और आधे बच्चों का 4th सेमेस्टर के बाद कर रहे हैं, तो आप आधे बच्चों को स्टाफ के अंदर डिवाइड करेंगे. से 10 से 15 बच्चे एक स्टाफ मेंबर के पास आएंगे और वो स्टाफ मेंबर उनकी इंटर्नशिप के प्रपोजल्स कलेक्ट करेगा. You will see where the student is going, what is he planning to do there. ऐसा नहीं कि वो आके कोई भी रिपोर्ट दे देगा, वो अपनी सिनॉप्सिस सबमिट करेगा कि वो इंटर्नशिप के दौरान क्या देखना चाहता है. वो एक ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग स्टडी करना चाहता है, या वो अकाउंट्स का कुछ काम वहां पर सीखेगा, वो क्या करेगा इन 4 हफ्ते या 6 हफ्ते के दौरान. तो उस सिनॉप्सिस के बाद वो बच्चा जो आपका एग्जाम का ब्रेक आता है उसके दौरान वो अपनी इंटर्नशिप पे जाएगा और वापस आने के बाद अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करेगा. दैट along with synopsis the mentor will evaluate as an examiner कि क्या उसने जो सिनॉप्सिस में प्रपोज किया है क्या वो उसे पूरा कर पाया, नंबर 1. नंबर 2, whether he has learned report writing. रिपोर्ट राइटिंग इसका एक ऑब्जेक्टिव है. नंबर 3, कम्युनिकेशन. आप उसका वाइवा कोर्स कर सकते हैं और उससे उसके बारे में, उस ऑर्गेनाइजेशन में उसने क्या सीखा है,
उस नॉलेज को वो कैसे इंप्लीमेंट करने वाला है, कैसे उसको हम आगे यूज कर सकते हैं, इस तरह की बातें आप वाइवा बोर्ड्स में उसके साथ डिस्कस कर सकते हैं. Only then the report will be record of these credits will be sent to the university. In level in semester 3 and 4 again he will continue with both these subjects. लेकिन यहाँ पर ये जो यहाँ आपको दिखाया है इसमें हमने पहले प्रपोज किया था कि वो तीसरे सब्जेक्ट को भी चारों सेमेस्टर्स तक पढ़ेगा, लेकिन अब यूजीसी के डॉक्यूमेंट में ये आया है कि ये जो तीसरा सब्जेक्ट है इसको हम 3 सेमेस्टर्स में ही खत्म कर देंगे और चौथे सेमेस्टर में ये जो क्रेडिट आर उसके बचेंगे दे विल बी गिवन टू मेन सब्जेक्ट्स. तो मेन सब्जेक्ट के क्रेडिट आवर्स थर्ड सेमेस्टर के बाद बढ़ते चले जाएंगे, जबकि मल्टीडिसिप्लिनरी आपका 3 सेमेस्टर के बाद खत्म हो जाएगा, स्किल एनहांसमेंट भी 3 सेमेस्टर्स के बाद खत्म हो जाएगा, लैंग्वेज के कोर्सेज 4 सेमेस्टर के बाद खत्म हो जाएंगे. सो ऑल दीज 3 वैल्यू एडेड भी खत्म हो जाएंगे. तो ये सारे जो क्रेडिट आवर्स अभी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है ये सभी क्रेडिट आवर्स आपके सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 के अंदर आ जाएंगे. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. फोर्थ सेमेस्टर के बाद बच्चे के पास ये ऑप्शन होगी कि क्या वो एक मेजर और एक माइनर के साथ अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता है या वो दोनों ही सब्जेक्ट्स को बराबर बराबर पढ़ना चाहता है. तो हर सेमेस्टर में आगे 20 क्रेडिट आवर्स होंगे. तो अगर उसे दोनों ही सब्जेक्ट बराबर पढ़ने हैं तो वो क्रेडिट आवर्स इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. अदरवाइज एक के अंदर 4 क्रेडिट पढ़कर दूसरे के अंदर 16 क्रेडिट पढ़ेगा. और ये पूरे इस तरह से अगर आप ध्यान से देखें इस स्कीम को तो पहले 2-3 सेमेस्टर्स के अंदर तो क्रेडिट्स जो है वो बिखरे हुए हैं. कैटेगरीज 6 हैं और 6 कैटेगरीज में वो डिस्ट्रीब्यूटेड है. लेकिन जैसे जैसे बच्चा आगे प्रोग्रेस करेगा, एक तो जो सब्जेक्ट वाले कोर्सेज हैं वो एडवांस कोर्स होते जाएंगे, इन डेप्थ नॉलेज के लिए होते जाएंगे, और दूसरा स्किल इनहांसमेंट, एबिलिटी इनहांसमेंट और वैल्यू एडेड कोर्सेज वहां खत्म होते जाएंगे. एज ए रिजल्ट उसके क्रेडिट आवर्स, नंबर ऑफ पेपर्स, नंबर ऑफ कोर्सेज इन द सब्जेक्ट्स दैट विल गो ऑन इंक्रीजिंग. सो पहले 2 स्कीम को देखकर हमें शुरू में ये लग सकता है कि पहले 2 सेमेस्टर्स में या पहले 3 सेमेस्टर्स में हमारा वर्कलोड कहीं कम हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे प्रोग्रेस करेंगे तो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सेमेस्टर में, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर में ये हमारा कोर्स वर्क आगे, हमारा जो सब्जेक्ट का वर्कलोड है वो आगे काफी बढ़ जाता है. 1-2 साल के बाद हम शायद इस सिस्टम से एक्वेटाइज हो जाएंगे और ये हमारे लिए रूटीन का मैटर हो जाएगा एंड इट विल बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड ऑल टुगेदर. लेकिन जो स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज हैं और जो आपके वैल्यू एडेड कोर्सेज हैं उनका वर्कलोड भी हमारे सभी टीचर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कोर्सेज द कॉलेज हैज selected to offer. इसी तरह से जो बच्चे ये 6 सेमेस्टर पूरे कर लेंगे उनके पास आगे ऑप्शन रहेगा कि वो 7th सेमेस्टर भी कंटिन्यू करना चाहें तो ऑनर्स की पढ़ाई कर सकते हैं. ऑनर्स वाले बच्चे के पास 2 ऑप्शंस हैं, सिंपल ऑनर्स थ्योरेटिकल पेपर करने के साथ या ऑनर्स विद रिसर्च करना. तो जो बच्चा ऑनर्स सेलेक्ट कर रहा है वो ये 20 क्रेडिट आवर्स 7वें और 8वें सेमेस्टर के अपने मेन सब्जेक्ट में पूरे करेगा. सो दिस विल बी द वर्कलोड ऑफ द सब्जेक्ट ओनली. सो दे विल, अगर वो ये सारे पेपर कंप्लीट करता है देन इट विल बी ग्रेजुएशन विद ऑनर्स, और अगर वो ऑनर्स विद रिसर्च करना चाहता है तो 3 पेपर उसके कम हो जाएंगे और 12 क्रेडिट आवर का एक प्रोजेक्ट आप उसे देंगे एंड दैट प्रोजेक्ट विल बी बेस्ड ऑन रिसर्च. सो लाइक रिसर्च ही विल बी सबमिटिंग हिज सिनॉप्सिस, he will do that work, he will submit his dissertation and then he will be evaluated based on that along with 2 theory papers and that will be honors with research. तो इस तरह से ये जो प्लानिंग है वो है कि आपके शुरू में बच्चे को हम along with subject दूसरी चीजें like skill enhancement, value courses और ability enhancement courses उसे करवा रहे हैं और धीरे धीरे ये सभी इंट्रोडक्टरी पार्ट पूरे हो जाएंगे. बाय द टाइम बच्चे के स्टूडेंट के अपने जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, जो उसके बेसिक कोर्सेज हैं अपने सब्जेक्ट में, वो भी पूरे हो जाएंगे. और जैसे जैसे हम आगे एडवांस जाएंगे उसका इन डेप्थ नॉलेज के लिए क्रेडिट आवर्स इन द सब्जेक्ट्स बढ़ते जाएंगे एंड देन एंटायरली इन 5th एंड
in 7th and 8th semester he will be focusing on the subject only. जो बच्चे 4 साल की ग्रेजुएशन करेंगे वो उसके बाद फर्स्ट ईयर स्किप करेंगे मास्टर्स का और सेकंड ईयर मास्टर्स में डायरेक्टली जा सकते हैं, और जो स्टूडेंट्स ऑनर्स विद रिसर्च करेंगे वो डायरेक्टली पीएचडी के लिए अपने टीचर्स के साथ एनरोल कर सकते हैं. So this is something which is being planned according to the UGC guidelines, and one major development is that now in Haryana under all the universities same scheme and same template will be implemented, so that अगर बच्चे की mobility within Haryana कहीं होती है तो उसे किसी equivalence या deficiencies या अलग system को कहीं भी face ना करना पड़े. Thank you. Over to you, Dr. Anuradha. Thank you, Anita ma'am. You have clarified all doubts related to the implementation of NEP in institutions. Now I, Dr. Monica, take this opportunity to present the report of the seminar. The one-day national seminar on national education policy opened with the lamp lighting ceremony. Dr. Ujjwal from Department of Music started the inaugural session with the singing of Saraswati Vandana. Convener of the seminar, Dr. Anuradha, proposed the welcome address. Dr. Kiran Angra, principal of the college, presented the concept note of the seminar and also introduced Dr. Manjula Chaudhary. In her deliberation, Dr. Manjula presented a roadmap for the proper implementation of national education policy. Having discussed various challenges involved in its implementation, especially for small institutions, she also pondered over various possible solutions for problems involved in implementation of a new policy. Dr. Monica, organizing secretary of the seminar, gave brief introduction to the first resource person, Dr. Anita Dua. Dr. Dua stressed the importance of Indian value system and regional languages for the growth and development of students' personality. She reflected on the implementation of equitable system of education for all and lifelong learning. And she also provided certain templates for the proper implementation of this policy in universities across Haryana and other colleges. Dr. Krishnakant, in his illuminating presentation, discussed education as all-round drawing out of the best in human beings, bringing about equilibrium of body, mind, and spirit. He stressed the importance of integrated and holistic learning of students and experiential learning. He maintained that through education, world peace could be sought as ethics and morality forms an integral part of education. He asserted that education is not end in itself, but it is life-building, man-making, character-making assimilation of ideas, and the most powerful weapon which creates person of genuine character. Dr. Anuradha introduced the resource person of the valedictory session, Dr. Pavan K. Sharma, and in his deliberation, Dr. Sharma stressed on critical thinking and creativity to boost logical decision-making and innovation in institutions. Overall, 40 abstracts and research papers were received for discussion and deliberation across the country. Dr. Vinita Gupta chaired the session and gave insightful comments on various paper presentations. Now, I announce the closure of this seminar, and we will share the feedback form. It has been shared in the chat box. Now I invite Ms. Achal to propose the vote of thanks. Thank you, Monica ma'am. I deem it a great honor to propose the vote of thanks on this one-day national seminar on role and responsibilities of higher education in
I think there is some internet problem, connectivity problem. Yes, Monica ma'am, You are not audible, Achal. am I audible? Yes, you are audible now. I also thank Dr. Anuradha, the convener, Dr. Monica King, the organizing secretary who have turned no stone unturned in organizing today's event. We are also thankful to all the participants who have turned up in such great numbers. Once again, I thank all of you for your cordial cooperation. Thank you everyone and have a nice day ahead. The meeting will continue to open for another 15-20 minutes so that you can fill the feedback form given in the chat box. मिसको बोलिया क्या बोलिया बोले आज 1 o'clock मुझे दे देनी मैं भी ट्राई करता हूँ कुछ से मैं नको करो वो बना तो नहीं से नहीं रहा मार्क्स के वास्ते किसे कॉल करें मैं ट्राई करता हूँ बोली किसके मार्क्स कैसे हैं तेरा मार्क्स Shabina, please unmute yourself. Shabina, please unmute yourself. सॉरी मैम